So good afternoon, नमस्कार. Nagdevi Sports Group Jinharsh Timken Ador Cup 2023 टाइटल स्पॉन्सर जिनहर्ष सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं. कुछ ही क्षणों में आज के दिन का पहला मुकाबला यहाँ पर शुरू होने जा रहा है. हमारे दोनों ही मैच ऑफिशियल्स इस वक्त मैदान के अंदर और सभी दर्शकों का फिर एक बार तहे दिल से स्वागत.
द मैच इज बिटवीन द टू टीम्स. दोनों ही टीमें तैयार हैं और आज के दिन का ये पहला मुकाबला. दोपहर का सत्र, विकेट पूरी तरह से खिली हुई और गेंदबाजी यहाँ पर करने के लिए गेंदबाज तैयार. हमारे दोनों ही मैच ऑफिशियल्स, पार्कर सर और दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर आते हुए. नागदेवी स्पोर्ट्स ग्रुप जिनहर्ष टिमकेन एडोर कप 2023 सीजन 4 टाइटल स्पॉन्सर्स जिनहर्ष सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड. मैच होना चाहिए. जिनहर्ष टिमकेन एडोर कप 2023 में सभी दर्शकों का फिर एक बार तहे दिल से स्वागत. मुकाबला यहां पर चलता हुआ HMS हार्ड हिटर्स बनाम विप्सा वॉरियर्स, इन दो टीमों के बीच. पहली गेंद अच्छी गेंद थी. यहां पर इस गेंद को सम्मान के साथ खेला. सिंगल यहां पर स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ. हालांकि ये ओवर की दूसरी गेंद थी. दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर. विपुल सिंघवी और ZBF. पहले ओवर का खेल यहां पर चलता हुआ. दर्शन सहित गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए. लेफ्ट आर्मर गेंदबाज. इस बार अच्छी गेंद थी. मिड ऑन की दिशा में इस गेंद को खेल दिया. हालांकि लॉफ्ट ड्राइव करना चाहते थे ZBF योगेश भाई और विपुल सिंह भी. ये तो सलामी बल्लेबाज, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होगी इन दोनों ही बल्लेबाजों के पास कि पहले 6 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर कार्ड के ऊपर अगर लगाते रहेंगे. 3 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है, 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं और किसी भी तरह का आक्रामक बल्लेबाजी का यहाँ पर अभी तक सम्मान के साथ खेले. फिर एक बार कवच की दिशा में इस गेंद को खेला. वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है और सराहना यहाँ पर ज़रूर की जा रही है खिलाड़ी की, क्योंकि पहला ओवर यहाँ पर अच्छा चलता हुआ. चार गेंदों की समाप्ति पर 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दोनों ही बल्लेबाज आपस में वार्तालाप करते हुए यहाँ पर, क्योंकि पहले सत्र की 6 ओवरें काफ़ी अहम होगी. यदि आपको एक डिसेंट टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर लगाना है तो ज़रूर यहाँ पर शुरुआत अच्छी दिलानी होगी. इस बार फ्लाइटेड गेंद थी. कलाइयों के सहारे खेल दिया इस गेंद को. काफ़ी तेज़ी से गेंद बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा को चीरती हुई ये आता हुआ. KDC क्रिएशंस बाउंड्री, 4 रन. के फुल टॉस गेंद थी.
हालांकि क्रिकेट की परिभाषा में इसे गिफ्ट कहा जाता है। इस गिफ्ट को दोनों हाथों से स्वीकारा दोनों ही बल्लेबाजों में। इससे पहले एक चर्चा हुई थी कि थोड़ा सा एग्रेशन ज़रूर पहले 6 ओवरों में दिखाना होगा। बतौर सलामी बल्लेबाज यदि आप मैदान के अंदर आते हैं तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, पहले 6 ओवरों में ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने का प्रयास दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के माध्यम से होता हुआ। यहाँ पर 4 रन से स्कोर मूव्स ऑन टू 7 रन। पारी का पहला ओवर यहाँ पर चलता हुआ, लेकिन अच्छी वापसी। देखिए डॉक्टर दर्शन इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, क्या बेहतरीन कमबैक। ये होता है क्रिकेट। इससे पहले वाली गेंद हल्के से फुल टॉस गेंद थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, उसका पूरा फायदा उठाया था बल्लेबाज ने। और उसके पश्चात अगर देखा जाए तो एक अच्छी गेंद के साथ वापसी करते हुए पहले ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। रनों की अगर बात करें तो 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, जिसमें विपुल सिंह भी खेल रहे एक चौके की मदद से अपने निजी 5 रनों पर, जबकि ZBF योगेश भाई जो कि खेल रहे अपने निजी 2 रनों पर। दर्शन सेठ का पहला, देखिए दर्शन सेठ की गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो एक विकेट टेकिंग एबिलिटी इस गेंदबाज के पास पिछले मुकाबले में हमने देखा था, काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा किया था। और शुरुआती समय में विकेटें लेना ये खासियत है इस गेंदबाज की। लेकिन सराहना करनी होगी दोनों ही सलामी बल्लेबाजों की, जिन्होंने पहले विकेट में 7 रन जरूर अर्जित किए। हालांकि रन गति की अगर बात करें तो थोड़ा स्लो स्टार्ट है, स्टडी है, लेकिन यहाँ से आने वाली 5 ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रन जुटाने की कोशिश इन दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के पास। हालांकि वो काबिलियत है, वो क्षमता है, तो दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस वक्त समय लेते हुए मैदान के ऊपर। नए ओवर की शुरुआत करेंगे जिनेश शाह। ओ ये आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, ड्राइव लगाना चाहते थे कवर और मिड ऑफ के बीच में से। पिच होने के बाद हल्का सा काटा बदला गेंद ने, आउट स्विंग इस गेंद में देखने मिला। और शायद यही कारण है कि अब एक और अतिरिक्त खिलाड़ी वहाँ पर तैनात किया जा रहा है। तो अच्छी गेंदबाजी पहले सत्र में, विकेट पूरी तरह से खेली हुई। दोपहर का ये सत्र, आज के दिन का पहला मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ। जिनेश शाह जो कि गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए। एक और मीडियम पेसर, ये अच्छी गेंद थी, पूरे सम्मान के साथ खेला। देखिए वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए। हालांकि धीमी गति से इस गेंद को किया था, पेस वेरिएशन देखने मिल रहा है। और सुबह के सत्र में ये लाजमी होगा, क्योंकि गेंदबाजों को लगातार अपनी गेंदबाजी में विविधता, वेरिएशंस दिखाने होंगे यदि बल्लेबाजों को रोके रखना है। इस बार अच्छी गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, स्क्वायर कट करना चाहते थे, डीप पॉइंट में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। जब तक आए गेंद को उठाए, दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय एक सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ। 1.3 ओवर का खेल यानी 9 गेंदों का खेल हो चुका है, 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। थोड़ी सी धीमी शुरुआत जरूर है, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि जहां पर तूफान आता है वहां पर कुछ समय के लिए शांतता होती है। तो शायद ये तूफान से पहले की शांतता यहाँ पर जरूर होगी। शांति यहाँ पर दिख रहे, दोनों ही बल्लेबाज समय ले रहे हैं। और इस विकेट की यही खासियत है कि अगर कोई बल्लेबाज इस विकेट के ऊपर समय बिताता है तो आने वाले समय में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान जरूर दे सकता है। आप देख रहे हैं जिनहर्ष टिमकिन एडोर कप 2023 का ये शानदार पर्व यहाँ पर चलता हुआ। सीजन 4 टाइटल स्पॉन्सर जिनहर्ष सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इनके माध्यम से ये प्रतियोगिता यहाँ पर चलती हुई। गेंदबाज जिनेश शाह, अपने ओवर की अगली गेंद। ये देखिए ये गेंद अंदर की तरफ आती हुई, पिच होने के बाद लाउड अपील जरूर, लेकिन जो कॉन्टैक्ट पॉइंट था वो शायद थाई पैड के ऊपर ये गेंद लगी है। ये पिच होने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई। बल्लेबाज शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गेंद बाहर की तरफ जाएगी, लेकिन ये गेंद पिच होकर अंदर की तरफ आई। तो काफ़ी अच्छा वेरिएशन अपनी गेंदबाजी में दिखाते हुए गेंदबाज जिनेश इस वक्त मैदान के अंदर। स्टांस अगर देखे बल्लेबाज का तो आउटसाइड द पॉपिंग क्रीज, तो आक्रामक रूप जरूर अपनाना चाहते हैं। इस बार लॉफ्ट किया है गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। स्वीपर कवर हालांकि तैनात कर चुके हैं वहां पर, जानते हैं कि ये स्ट्रांग जोन है इस बल्लेबाज का, और इसी स्ट्रांग जोन में एक खिलाड़ी मौजूद का यहाँ पर जरूर दिखता हुआ। इस 1 रन के साथ टीम का टोटल 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पारी का दूसरा ओवर यहाँ पर चलता हुआ। विपुल सिंह भी और योगेश भाई, ये 2 खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर बल्लेबाजी करते हुए। विप्सा वॉरियर्स बनाम HMS हार्ड हिटर्स, इन दोनों ही टीम के बीच चलता हुआ आज के दिन का पहला मुकाबला।
इस बार लॉब किया है, मिड ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे खिलाड़ी वहां पर, और ये विकेट यहां से आता हुआ, देखिए उत्साह जल्लोष, एक्सल विकेट, वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये विकेट यहां पर आता हुआ। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाज के माइंड को रीड किया, लॉफ्टेड ड्राइव करना चाहते थे, मिस टाइमिंग हुआ, और उसी की बदौलत ये पहली सफलता यहां पर मिलती हुई गेंदबाज, और उतना ही बेहतरीन कैच वहां पर, एज ऑफ द सर्कल खड़े थे खिलाड़ी, और क्या बेहतरीन कैच लेते हुए, एक्सेल विकेट, एक्सेल वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज विकेट यहां पर आता हुआ, जिसकी तलाश थी पहले सत्र में। अब नए खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर आते हुए, जिन्हें शाह को मिलती हुई पहली सफलता। नए बल्लेबाजी नेट नंबर 3, देखिए विपुल सिंह भी अभी भी मैदान के अंदर डटे हुए हैं, वो जानते हैं भलेभांति अपनी विकेट की अहमियत को। हालांकि एक्सेलेरेट करने का प्रयास ज़रूर वहाँ पर किया था योगेश भाई ने, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद थी, शायद वहाँ पर रिस्क लेना चाहते थे, और उसी के बदौलत हमने देखा कि एक महत्वपूर्ण विकेट यहाँ से खोते हुए 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। गेंदबाजी में तब्दीली, नए बल्लेबाज साहिल पारेख इस वक्त मैदान के अंदर आते हुए, और इस वक्त स्ट्राइकिंग एंड पर अगर देखा जाए तो विपुल सिंह भी। गेंदबाजी के बाद करें तो दर्शन अपनी निजी दूसरी, देखिए दर्शन जिनके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी है, तो शायद यही सोच होगी कप्तान की कि यहाँ से अगर एक आध विकेट और आता है, पहले 6 ओवरों में अगर 2 विकेट अर्जित कर लेते हैं तो आने वाले समय में थोड़ा दबाव ज़रूर बना सकते हैं अपने गेंदबाजी के माध्यम से खिलाड़ियों के ऊपर, यानी बल्लेबाजों के ऊपर। तो शायद यही कोशिश यहाँ पर होती हुई दर्शन सहित, डॉक्टर दर्शन सहित के हाथ में इस वक्त गेंदबाजी की भागदौड़, और पहली बार स्ट्राइक करेंगे साहिल पारेख। यूनिट नंबर 3, देखिए पूरा समय लेते हुए यहाँ पर फील्ड का मुआयना करते हुए, लेकिन थोड़ा समय ज़रूर बिताना होगा। इस बार पैड लाइन पर गेंद थी, खराब गेंद, लेकिन खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद है। देखिए जिस तरह की फील्ड सेट की गई है उसी तरह का गेंदबाजी में भी बदलाव करते हुए, मैंने शुरू में ही कहा था कि दर्शन सहित विकेट टेकिंग एबिलिटी है इस गेंदबाज के पास, और शायद विकेटों की तलाश है यहाँ पर। पहला विकेट जल्दी खोया है विप्सा वॉरियर्स टीम ने, तो थोड़ा संभल कर यहाँ से खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि एक पार्टनरशिप होना ज़रूरी है। और पहली 6 ओवरों की अगर बात करें तो पहली 6 ओवरों में एक्सेलरेट करने का प्रयास ज़रूर है ये दोनों खिलाड़ी के साथ। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, अच्छा फील्डिंग का वहाँ पर मुजाहरा करते हुए, तो कम से कम 1 रन ज़रूर रोका है अपने टीम के लिए, क्योंकि ये गेंद वहाँ से अगर स्किड होती तो शायद 2 रन भी हो सकते थे। सिंगल यहाँ से आता हुआ, तो अभी तक कोई बाउंड्री नहीं, कोई बड़ा हिट नहीं, केवल सिंगल्स में डील्स करते हुए दोनों ही खिलाड़ी। रनों की अगर बात करें तो 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पर पारी का तीसरा ओवर यहाँ पर चलता हुआ। दर्शन सेठ फिर एक बार गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए 1.3 यानी अपने निजी स्पेल का दूसरा ओवर यहाँ पर करते हुए, मीडियम पेस गेंदबाज है। इस बार डाइव लगाकर इस गेंद को रोकने का प्रयास किया, हालांकि काफ़ी अच्छा प्रयास था, लेकिन सिंगल यहाँ पर नहीं रोक पाएंगे। सिंगल यहाँ से आता हुआ, तो देखिए दोनों ही बल्लेबाज अब सिंगल्स में डील करते हुए, तो ये एक अच्छी रणनीति है। लगातार अगर स्कोर कार्ड के ऊपर रन आते और आपके सलामी जो गेंदबाज है, यानी जो स्ट्राइक गेंदबाज है, उन गेंदबाजों के ऊपर अगर आप प्रति गेंद 1 रन भी निकालते हैं, तो जो प्रेशर होता है वो गेंदबाज के ऊपर, क्योंकि विकेटों की तलाश होती है पहले सत्र में, और शायद इस तरह से सिंगल्स अगर स्कोर कार्ड के ऊपर आते रहे तो जो दबाव है वो फिर एक बार हमें गेंदबाजी के ऊपर जरूर दिखता हुआ। पहला विकेट जल्दी खोया था, और यही कारण है कि दोनों ही बल्लेबाज शांत और संयमी बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए ड्राइव लगाना चाहते थे। इस बार गेंद को बल्ले से थोड़ा सा दूर गेंद रही, सीधी निकली इस बार, और इस डॉट गेंद के साथ स्कोर वहीं पर रुका हुआ। पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ। नागदेवी स्पोर्ट्स ग्रुप सीजन 4 आयोजित जिनहर्ष टिमकेन एडोर कप 2023
का शानदार मंजर यहाँ पर चलता हुआ। ये गेंद पिच होने के बाद अंदर की तरफ आई, खिलाड़ियों के सहारे खेल दिया शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को सिंगल। एक और यहाँ पर स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। देखिए ये स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर योगेश भाई जो कि एकमात्र बल्लेबाज आउट होकर पेवेलियन लौट चुके हैं, 3 रनों का उन्होंने योगदान दिया। और साथ ही साथ देखें तो साहिल पारेख जो कि खेल रहे हैं नीचे अपने 2 रनों पर, और बल्लेबाज विपुल सिंह भी जो कि खेल रहे हैं 10 गेंदों का सामना करते हुए अपने निजी 9 रनों पर। तो ये थे हमारे कुछ स्पॉन्सर्स जिनके एड्स अपने ड्यूरिंग ब्रेक देखा। इस बार बड़ा हिट लगाना चाहते थे, पहली ही गेंद पर सफलता मिलती हुई, एक और विकेट का पतन, एक्सल वाइपर ड्राइव विकेट यहां से आता हुआ। देखिए धीमी गति की गेंद की थी, लॉफ्टेड ड्राइव लगाना चाहते थे, यही प्रयास पहले सत्र में भी हमने देखा था, योगेश भाई ने भी यही प्रयास किया था लॉफ्टेड ड्राइव लगाने का। इस बार स्कोर को एक्सेलेट करने का प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज और अपना महत्वपूर्ण विकेट यहां से खोते हुए नए बल्लेबाज वत्सल दोषी इस वक्त मैदान के अंदर। एक युवा खिलाड़ी वत्सल जिनको कि मौका मिला इस टीम में इन एट नंबर 4, और यहां से अब जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा इन दोनों ही खिलाड़ियों को। लेकिन सराहना करनी होगी जिन्हें शाह की, जिन्होंने ये दूसरा विकेट अर्जित किया। देखिए धीमी गति की गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, लालसा यहाँ पर लॉफ्टेड ड्राइव करने का प्रयास किया, इनवाइट किया था, पॉपिंग क्रीज के बाहर खींचने का प्रयास था, और वहाँ से अगर दिखा था तो मिस टाइमिंग हुआ, और खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने बहुत ही शानदार कैच लेते हुए ये दूसरे विकेट का पतन। 2 विकेट फॉर द लॉस, 14 रन ऑन द स्कोर कार्ड, 4th ओवर, पारी का 4था ओवर यहाँ पर चलता हुआ। तो सफल गेंदबाज जिनैश शाह पहली गेंद के ऊपर सफलता लेते हुए एक बड़ा विकेट इस वक्त मैदान से बाहर जाता हुआ। अब प्रेशर होगा बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन अपना स्वाभाविक खेल अगर मैदान के ऊपर करते हैं, थोड़ा समय बिताते हैं, तो आने वाले समय में ज़रूर अपनी टीम के लिए अच्छा स्कोर बना सकते हैं। नए बल्लेबाज वत्सल इस वक्त स्ट्राइकिंग एंड पर है। देखिए फील्ड का मुआयना यहाँ पर करते हुए एक युवा खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर, और प्रतिभा से भरे हुए ये सभी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता के माध्यम से। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, कंधे का इस्तेमाल करने का प्रयास किया और दिशा से भटके, अंपायर का वाइड का इशारा यहाँ पर आता हुआ। देखिए लगातार कोशिशें हो रही है। जिनैश शाह जो कि सलामी गेंदबाज है, काबिलियत रखते हैं अपने गेंदबाजी में, विकेट टेकिंग एबिलिटी है दोनों ही सलामी गेंदबाजों के पास। डॉक्टर दर्शन की भी गेंदबाजी हमने देखे, काफ़ी इकोनॉमिकली गेंदबाजी की है उन्होंने, और पूरी तरह से सलामी बल्लेबाजों को कंट्रोल में रखा था। किसी भी तरह के बड़े हिट यहाँ पर नहीं देखने मिले थे। इस बार डिफेंसिवली खेला इस गेंद को, पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई, हालांकि रिस्की सिंगल था, डेंजर एंड की तरफ थे खिलाड़ी, सिंगल यहाँ से स्कोर कार्ड पर आता हुआ। पारी का 4था ओवर, 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। साहिल पारेख, वत्सल दोषी ये 2 खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर, और जिनैश शाह एकमात्र सफल गेंदबाज, काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी, 1.2 ओवर्स, 4 रन, 2 विकेट्स। HMS हार्ड हीटर्स बनाम विप्स वॉरियर के बीच चलता हुआ आज के दिन का ये पहला मुकाबला। अब यहाँ से संभल कर खेलना होगा दोनों ही खिलाड़ियों को। कम से कम आने वाली 8 से 10 ओवरों तक यदि ये दोनों ही खिलाड़ी मैदान के ऊपर डटे रहते हैं तो एक अच्छी पार्टनरशिप ज़रूर बना सकते हैं, क्योंकि एक युवा खिलाड़ी विपुल वत्सल इस वक्त मैदान के अंदर है और उनके साथ है साहिल पारेख। देखिए लगातार कोशिशें यहाँ पर करते हुए गेंदबाज, उनके माइंड में हमेशा यही चलता है कि खिलाड़ियों को किस तरह से आउट किया जाए। इस वक्त अच्छी गेंद थी, वेल लेफ्ट, किसी भी तरह की छेड़खानी करने का प्रयास नहीं इस गेंद के साथ में। देखा गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप है,
इस गेंद को पूरे सम्मान के साथ छोड़ दिया विकेट कीपर के पास। तो यही होता है, यदि आप समय बिताते हैं मैदान के ऊपर तो एक अच्छी इनिंग बिल्डअप कर सकते हैं। एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है यहाँ से। विप्सा वॉरियर टीम एक बार और आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी। इस गेंद के साथ कोई छेड़खानी नहीं, जाने दिया इस गेंद को। वो भले बातें जानते हैं कि एक स्लिप वहाँ पर मौजूद है और शायद यही कारण है कि लगातार 2 गेंदें आउटसाइड द ऑफ स्टंप, यानी अगर वहाँ से एज लगता है तो स्लिप में ये गेंद जरूर जा सकती है। तो काफ़ी सोची समझी रणनीति के साथ गेंदबाजी करते हुए जीना शाह 2 विकेटें अब तक अर्जित कर चुके हैं अपने 1.5 ओवर में। इस बार थोड़ा सा दिशा से भटक गए, थोड़ा अतिरिक्त स्विंग देखने मिला तो ये वाइड आता हुआ। इस ओवर का ये दूसरा वाइड बॉल। इस वाइड के साथ अतिरिक्त रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। विप्सा वॉरियर्स बनाम HMS हार्ड हिटर, इन 2 टीमों के बीच चलता हुआ आज के दिन का ये पहला मुकाबला, पहला T20 मुकाबला। एक और अच्छी गेंद, वेल लेफ्ट। मैं कहूँगा कि अब यहाँ से पेशेंस दिखा रहे दोनों ही बल्लेबाज और यही ज़रूरत है। 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सो वेलकम बैक। ये थे हमारे कुछ स्पॉन्सर्स जिनके बदौलत हम इस प्रतियोगिता को एक सफलतम आयोजन में ज़रूर आप सब लोग देख रहे हैं। तो आए हुए सभी दर्शकों का हम फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करते हैं। कुल रन संख्या की बात करें तो 4 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है, 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो जो प्लानिंग था पहले 6 ओवरों में कम से कम 2 विकेट अर्जित करने का, यहाँ पर जिनेश शाह की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत 2 विकेटें अर्जित कर चुके हैं। दोनों ही सलामी बल्लेबाज पैवेलियन लौट चुके हैं और इस वक्त वत्सल दोषी और साहिल पारेख ये 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर पारी को संभालते हुए अपनी टीम के पारी को संभालने का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन दोनों ही खिलाड़ियों के ऊपर होगी। एक पार्टनरशिप यहाँ से बिल्डअप करने का प्रयास। अब नए गेंदबाज राकेश को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी दर्शन सेठ की अगर बात करें तो उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है। राकेश यहाँ पर अपनी निजी पहली और टीम की ओर से 5 ओवर लेकर सम्मान के साथ दोनों ही खिलाड़ी यहाँ पर समय लेना चाहते हैं क्योंकि 2 विकेटें जल्दी खोई है विप्सा वॉरियर्स टीम ने। विप्सा वॉरियर्स बनाम HMS हार्ड हिटर्स, इन 2 टीमों के बीच चलता हुआ आज के दिन का ये पहला मुकाबला जिनहर्ष टिमकिन एडोर कप 2023 सीजन 4। इस बार एक और अच्छी गेंद, हालांकि इस अपील में उत्साह ज़्यादा, आत्मविश्वास की कमी। सेलिब्रेट यहाँ पर ज़रूर कर रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी और वो यूँ भी जानते हैं कि आउटसाइड द ऑप्शन ये गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन दोनों ही अंपायर्स हमारे इंटरनेशनल अंपायर्स इस वक्त मैदान के अंदर। वत्सल है स्ट्राइकिंग एंड पर और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर साहिल पारेख। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी इन दोनों ही खिलाड़ियों के ऊपर और काबिलियत है। ऐसे नहीं कि शुरुआती समय में 2 विकेटें अगर खोए तो इन दोनों खिलाड़ियों के पास वो काबिलियत है। इस बार लॉफ्ट किया है, बल्ले का ऊपरी किनारा और शायद वहां पर अंपायर का इशारा आता भाई ये गेंद सीमा रेखा को चीरते हुए 4 रनों के लिए KDC क्रिएशंस 4 रन। पहला आत्मविश्वासपूर्ण शॉट्स यहाँ पर आता हुआ। देखिए हल्का सा ओवर पिच की थी, गेंद को देखा और उसके बाद ये लॉफ्टेड ड्राइव लगा, इनफील्ड को क्लियर किया। भली बात ही जानते थे कि वहाँ पर उस क्षेत्र में कोई खिलाड़ी नहीं है और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए इन 4 रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो कुछ इस तरह के शॉट्स अगर लगातार आते रहे। इस बार देखिए आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, गेंदबाज के पेस का इस्तेमाल किया, आखिरी समय पर बल्ले का मूव फेस ओपन करते हुए ये सिंगल यहां से स्कोर कार्ड पर आता हुआ। तो अब ये कॉन्फिडेंस बल्लेबाजी में दिखता हुआ दोनों ही खिलाड़ियों के पास समय बिता चुके हैं
विकेट के ऊपर, और ये ज़रूरी भी है। इन दो खिलाड़ियों के बीच में यदि पार्टनरशिप होती है तो आने वाले समय में आखिरी ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए एक सम्मानजनक स्कोर जरूर स्कोर कार्ड के ऊपर खड़े कर सकते हैं। राकेश जो कि अब तक एक चौके के साथ 7 रन खर्च कर चुके हैं अपने इस ओवर में। हालांकि इस ओवर की अभी भी आखिरी गेंद शेष। इस बार फिर पॉइंट और गली के बीच में से इस गेंद को निकालने का प्रयास था। हालांकि आखिरी गेंद थी, फुल वत्सल यहाँ पर जानते थे कि ये खतरनाक हो सकता है, तो उन्होंने मना किया। आखिरी गेंद यहाँ से डॉट आती हुई, और रन संख्या की अगर बात करें तो 24 रन 2 विकेट के नुकसान। तो इस छोर से गेंदबाजी में कोई तब्दीली नहीं है, यानी जिनेश शाह अपने पारी का, अपने स्पेल का तीसरा ओवर यहाँ पर। उनकी फिगर्स अगर देखें तो 2 ओवर 5 रन 2 विकेट, बेहतरीन स्पेल यहाँ पर। तो शायद यही कारण है कि कप्तान भरोसा जताते हैं कि यदि एक आध विकेट यहाँ से मिल जाए तो जो शुरुआती प्रेशर की हम लगातार बात कर रहे हैं वो शुरुआती प्रेशर ज़रूर बनाया जा सकता है। हालांकि 2 विकेट खो चुके हैं, थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर है इन दोनों ही खिलाड़ियों के अंदर। देखा जाए तो काबिलियत भी है, यहाँ से भी अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ ले जा सकते हैं। इस बार देखिए जिस विकेट के लिए जाल बिछाया था, बड़ी मछली इस वक्त जाल में फंसती हुई, खिलाड़ी मैदान से बाहर। एक्सल वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज एक्सल विकेट यहां से आता हुआ। देखिए सोची समझी रणनीति के साथ में काफी बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए एकमात्र सफल गेंदबाज, ये तीसरी विकेट यहां पर मिलती हुई। और यही कारण था कि गेंदबाजी में कोई तब्दीली नहीं की, क्योंकि भली बात ही जानते हैं अच्छे लय में गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार विकेटें अर्जित कर रहे हैं। तो नए बल्लेबाज इस वक्त प्रियेश शाह मैदान के अंदर आते हुए। चौबीस रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तो नए बल्लेबाज प्रयेश इस वक्त मैदान के अंदर आते हुए। देखिए साहिल पारेख 8 गेंदों का सामना किया है, 3 रन। और वत्सल जिन्होंने कि अपना विकेट खोया, यहाँ पर संयम के साथ बल्लेबाजी करना होगा। देखिए टेम्परामेंट के साथ आपको बल्लेबाजी करनी होगी। अगर आप शुरुआती 3 विकेटें यहाँ पर खोते हैं और महज 6ठे ओवर का स्कोर अगर चल रहा है, तो आपको थोड़े संयम के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करनी होगी। और शायद वही साहिल पारेख करते हुए। क्या प्रयेश यहाँ से पार्टनरशिप, देखिए ड्राइव करने का प्रयास था, लेकिन सराहना करनी होगी जिनेश शाह की, जो भरोसा जताया था कप्तान ने, उस भरोसे के ऊपर खरे उतरते हुए बेहतरीन स्पेल यहाँ पर। आज के दिन का ये पहला मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, और क्या ज़बरदस्त फिगर जिनेश शाह गेंदबाजी में। 2.2 ओवर 5 रन 3 विकेटें अर्जित कर चुके हैं। और यही कारण था कि कप्तान ने भरोसा जताया, लगातार तीसरा ओवर इस गेंदबाज को देते हुए। इस बार पिच होने के बाद अंदर की तरफ आई, हल्के हाथों से खेला, सिलिमिडॉन रीजन में गेंद जब तक जाए, सिंगल यहां से स्कोर कार्ड पर ऊपर आता हुआ। हालांकि शुरुआती 3 विकेटें खो चुकी है विप्सा वॉरियर्स टीम। थोड़ा सा खेल पहले 6 ओवर में विपरीत दिशा में जाता हुआ, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में हर समय
आपको लगातार संघर्ष करना होता है मैदान के अंदर, और वही संघर्ष इस वक्त दिखता हुआ विप्सा वॉरियर्स टीम के बल्लेबाजों के माध्यम से। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, अच्छा प्रयास था, फुटवर्क के सहारे इस गेंद को रोकना चाहते थे, लेकिन गेंद सी मारे को कचेरती हुई केडी क्रिएशंस बाउंड्रीज यहां पर आती हुई। देखिए बाउंड्रीज और सिक्स स्पॉन्सर्स केडीसी यानी केडी क्रिएशंस, इनके माध्यम से तो ये एक और 4 रन। बल्लेबाज के पेस का इस्तेमाल किया लास्ट समय पर बैट का फेस ओपन करते हुए। हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, काफ़ी दूर से आए थे इस गेंद को रोकने के लिए, लेकिन जो मोमेंटम था वो मोमेंटम के साथ गेंद बाहर निकलते हुए। इस बार अच्छी वापसी, खिलाड़ियों के सारे इस गेंद को भी मोड़ दिया है। हालांकि डीप में गेंद जाते हुए खिलाड़ी वहां पर आते हुए जब तक आए गेंद को उठाए, दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था। रन संख्या की अगर बात करें तो इस 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 6वां ओवर रहा, यानी पावर प्ले का ये 6वां ओवर यहां से चलता हुआ। जिनेश शाह अपने निजी स्पेल का 3रा ओवर करते हुए 12 रन 3 विकेट। क्या बेहतरीन स्पेल है, मैं कहूँगा कि किसी भी गेंदबाज के लिए ये ड्रीम स्पेल हो सकता है, और उतनी ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अब दोनों ही बल्लेबाज सिंगल्स के ऊपर डील्स करते हुए। दर्शन सेठ 2 ओवर किए थे, 3 डॉट 12 रन। जिनेश शाह 3 ओवर, बेहतरीन फिगर्स, 11 डॉट गेंदे 13 रन और 3 विकेटें। और एकमात्र ओवर हमने देखा था राकेश के माध्यम से। तो पहले सत्र के 6 ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। तो पहले पारी के 6 ओवर है, यानी पावर प्ले का खेल यहाँ पर समाप्त होता। महज 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, और इस 32 रनों के लिए सलामी 3 बल्लेबाज पैवेलियन लौट चुके हैं। एक पार्टनरशिप बनाने का प्रयास यहाँ पर साहिल पारेख जो कि खेल रहे हैं अपने नीचे की 10 रनों पर, 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया, और प्रेश जो कि नेट नंबर 5 बल्लेबाजी इस वक्त मैदान के अंदर है, 2 रनों का सामना करते हुए अपने नीचे 2 गेंदों का सामना करते हुए अपने नीचे 1 रनों पर। राकेश के हाथ में फिर से एक बार गेंद को थमाया गया है। राकेश करेंगे अपने निजी स्पेल का 2रा ओवर। एक मीडियम पेसर गेंदबाज और अच्छी रिदम के साथ गेंदबाजी करते हुए, एक रिदमिक गेंद यहां पर गेंदबाजी की करते हुए राकेश, हालांकि खासे एक्सपीरियंस गेंदबाज है, कई मुकाबले खेल चुके हैं अपनी टीम के लिए, और वही काबिलियत भी है इस गेंदबाज के साथ। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा स्पेल सभी तीनों ही गेंदबाजों के माध्यम से देखने मिला कि ये रिदेवी का रनअप है इस खिलाड़ी का। रिलीज पॉइंट को भी देखे तो हाई आर्म एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर, और पूरी सम्मान के साथ दोनों ही खिलाड़ी। आप जानते हैं कि ये 7वां ओवर है, यानी पावर प्ले का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। फील्ड अब खुल चुकी है, तो सिंगल्स आसानी से बटोरे जा सकते हैं, और वही करते हुए आने वाले 3 से 4 ओवर है आपको लगातार स्कोर कार्ड को चलाते रहना होगा, सिंगल डबल्स के ऊपर कंसंट्रेट करना होगा, और वही करते हुए दोनों ही खिलाड़ी। इस बार पैड लाइन पर गेंद जरूर थी, कलाइयों के सहारे इस गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेला। हालांकि डायरेक्ट हिट करना चाहते ना ऑन साइड के गेंद पर खिलाड़ी आते हुए, तो ये लगातार होते रहते हैं। देखिए आते ही जैसे ये गेंद उनके ग्लव्स पर लगी, तो ये होता है क्रिकेट। देखिए क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन्स कहा जाता है, और यहां से अगर देखें तो
अगर ज़रूरत हो वहाँ पर तो मेडिकल का ट्रीटमेंट भी दी जा सकती है, क्योंकि डायरेक्ट आकर ये गेंद लगी थी उनके ग्लव्स पर। तो एवरीथिंग इज़ फाइन, खिलाड़ी फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार है। तो ये अच्छी मैं कहूँगा कि वार्ता मैदान के अंदर से आते हुए खिलाड़ी खेलने के लिए तैयार है, और फील्ड फिर एक बार फैलती हुई। गेंदबाज को कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देते हुए साथी खिलाड़ी, और ये होना भी चाहिए जब आप एक निर्णय लेते, एक रणनीति के साथ मैदान के अंदर उतरते हैं, तो कुछ इस तरह की वार्तालाप लगातार होना ज़रूरी होता है। और अपने गेंदबाजों का हौसला बनाए रखना, ये भी कप्तान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस बार अच्छी गेंद थी। देखिए थोड़ी सी हड़बड़ाहट ज़रूर दिख रही है दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में, लेकिन समय बिताना होगा। मैं कहूँगा कि आप किसी भी तरह से प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं देना है। आप संयम के साथ, धीरज के साथ और अपनी जो काबिलियत है उस काबिलियत के साथ अगर मैदान के ऊपर खेल करते हैं, तो यहाँ से भी अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ ज़रूर लेकर जा सकते हैं। लेकिन सराहना करनी होगी राकेश, एक और अच्छी गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, केवल गाइड किया, एक जेंटल टच दिया, सिंगल यहाँ से आता हुआ। तो किसी भी तरह की अब यहाँ से सोच नहीं, रणनीति नहीं है बड़े हिट लगाने की, क्योंकि जानते हैं फील्ड अब खुल चुकी है। सिंगल्स यहाँ पर इजीली लिया जा सकता है, और वही करते हुए एक पार्टनरशिप बिल्डअप करने का प्रयास दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में। रन गति की बात करें तो इस वक्त 5.27 की औसत से अगर रन बनाते हैं तो 105 रन 20 ओवरों में स्कोर कार्ड के ऊपर प्रोजेक्टेड स्कोर ज़रूर आ सकता है। लेकिन अगर ये दो खिलाड़ी 10 से 12 ओवर तक स्कोर कार्ड को चलाते रहे लगातार, तो आने वाले समय में आखिरी ओवरों में अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए ज़रूर एक सम्मानजनक स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर ला सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ स्पॉन्सर जिनके बदौलत हम इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में कामयाब रहे, और एक सफलतम आयोजन हम ज़रूर देख रहे हैं। जिनहर्ष टिमकिन एडोर कप 2023 सीज़न 4 का ये शानदार मंजर यहाँ पर चलता हुआ। 7 ओवरों की समाप्ति हो चुके हैं, 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 विकेटों के नुकसान पर। और नए गेंदबाज इस वक्त योगेश शाह, जो कि स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, और 7 ओवर के बाद अब स्पिन को इंट्रोड्यूस किया गया है। पहली गेंद सम्मान के साथ में खेला, हालांकि विकेट कीपर काफ़ी तेज़ी से आए थे वहाँ पर, लेकिन क्लीन पिकअप शायद नहीं कर पाए। इसी बदौलत ये सिंगल यहाँ पर स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। इस सिंगल के साथ 37 पारी का 8वां ओवर यहाँ पर चलता हुआ। 7.1। तो सराहना करनी होगी इन दोनों ही बल्लेबाजों की समय लेते हुए अपना, और खास करके साहिल पारेख की अगर बात करें तो 14 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 12 रनों का योगदान दिया। और बल्लेबाज प्रयेश शाह जिन्होंने 6 गेंदों का सामना करते हुए 4 रनों का योगदान। इस बार फुल टॉस गेंद थी, कलाइयों के सहारे मोड़ना चाहते थे खिलाड़ी, वहां पर देखिए अच्छा प्रयास, सही समय पर सही डाइव लगाते हुए इस गेंद को रोका। तो सराहना करनी होगी। देखिए आप अपना सब कुछ समर्पित करते हुए इस मुकाबले में, और यही होना चाहिए जब आप इस खेल के प्रति भावना रखते हैं अपने मन में, तो अपना सब कुछ समर्पित करने का प्रयास ज़रूर खिलाड़ियों के माध्यम से होता है। यहाँ पर योगेश शाह धीमी गेंदों का इस्तेमाल करते हुए फ्लाइटेड कर रहे हैं। बल्लेबाज के मन में एक संभ्रम पैदा करने वाली ये गेंदबाजी होती है, क्योंकि आइदर आई लीव इट द बॉल और हिट द बॉल। इस बार उठाकर खेल दिया, वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं, जिस शॉट की तलाश थी, मच नीडेड बाउंड्री, ये आता हुआ केडी क्रिएशंस, बाउंड्री, 4 रन। तो क्या बेहतरीन शॉट लगाया था इससे पहले वाले गेंद के ऊपर। कॉन्फिडेंस ज़रूर देखकर जाया होगा, और इस तरह के कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि
लगातार आपके बल्ले से अगर इस तरह के शॉट्स आते हैं तो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है एक अलग ऊंचाई पर होता है, और जब आप मिडल ऑफ द बैट किसी भी गेंद को लेते हैं तो जो आत्मविश्वास है एक अलग ऊंचाई पर जरूर देखने मिलता है। इस बार पैड लाइन पर यह गेंद करने का प्रयास था, शफल अक्रॉस द लाइन इस गेंद को खेलना चाहते थे, लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का यहाँ से आता हुआ। तो ये एक अच्छा ओवर घटता हुआ यहाँ पर विप्सा वॉरियर्स बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। गेंदबाज योगेश शाह, इस बार अच्छी गेंद थी, मिडल रन ऑफ पर पिच होकर बाहर की तरफ ये गेंद निकल रही थी। हालांकि देखिए खिलाड़ी वहां पर भावीन, जब तक आए गेंद को उठाए, सिंगल यहां से आता हुआ। 8 ओवरों की समाप्ति हो चुके। रन गति की बात करें तो 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेटों के नुकसान पर। सो वेलकम बैक। 8 ओवर का यहाँ पर खेल समाप्त होता हुआ 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेटों के नुकसान पर। एक अच्छी साझेदारी यहाँ पर पनपती हुई दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में, और मैं कहूँगा कि ज़रूरत थी। विप्सा वॉरियर टीम शुरुआती समय में 3 झटके लगे, बहुत ही बेहतरीन स्पेल जिन्हें गेंदबाज के माध्यम से, जिन्होंने 3 ओवरों का स्पेल किया, 13 रन देकर 3 विकेटें अर्जित की, और उसके बाद जो शुरुआती दबाव था, इस दबाव से उभरती हुई विप्सा वॉरियर्स टीम, एचएमएस हार्ड हिटर्स बनाम विप्सा वॉरियर्स, इन दो टीमों के बीच चलता हुआ ये आज के दिन का पहला मुकाबला। 9वां ओवर पारी का, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद थी, ड्राइव लगाना चाहते थे, थोड़ा जल्दी खेल गए इस शॉट्स को, गेंद थोड़ा सा रुक कर आई। ये गति परिवर्तन है, ये पेस वेरिएशन है। राकेश इस वक्त गेंदबाजी अपनी निजी स्पेल का तीसरा ओवर यहाँ पर करते हुए, इससे पहले हमने देखा जिन्हें ने अपने स्पेल का 3 ओवर कंप्लीट किया, 13 रन देकर 3 विकेट, बेस्ट फिगर उनका इस मुकाबले में। इस बार फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव लगाना चाहते थे, हालांकि बल्ले से सही कनेक्ट नहीं हुई, लेकिन सिंगल यहाँ पर स्कोर कार्ड के ऊपर आसानी से आता हुआ। इस सिंगल के साथ 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, क्लोज टू 50। देखिए, जब भी आप एक पार्टनरशिप बिल्डअप करते हैं, आपके अंदर वो आत्मविश्वास ज़रूर पैदा होता है, और इसी की ज़रूरत है इस वक्त विप्सा वॉरियर्स टीम के लिए। इस बार थोड़ा सा आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद रखा था, उस गेंद को थ्रू द कवर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। तो सराहना करनी होगी गेंदबाजों की भी, काफ़ी बेहतरीन स्पेल यहाँ पर करते हुए। देखिए फिगर्स अगर देखें तो 2.4 ओवर 12 रन, हालांकि कोई सफलता अर्जित नहीं कर पाए, लेकिन इकोनॉमिकली अगर बात करें तो गेंदबाजी बेहतरीन स्पेल यहाँ पर करते हुए। एक मीडियम पेसर है, रिदम एक रनअप है उनका, और रिलीज पॉइंट अगर देखें तो हाई आर्म एक्शन के साथ में गेंदबाजी करते हुए, तो बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। यहाँ पर एक और डॉट गेंद आती हुई, जितनी डॉट गेंदें आप डालोगे उतना प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर होगा, लेकिन ये ऐसा समय है कि जहाँ पर आप पार्टनरशिप बिल्डअप करने का प्रयास करेंगे, और सराहना करनी होगी इन दोनों ही खिलाड़ियों की, काफ़ी संयम के साथ इस वक्त मैदान के अंदर खेलते हुए साहिल पारेख और प्रयश शाह। ये अच्छी गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। भली बात ही जानते हैं कि गेंदबाज के पास उतना पेस नहीं है, तो एक खिलाड़ी वहां पर ऑलरेडी तैनात कर चुके हैं। तो इस सिंगल के साथ में 9वें ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, टीम की टोटल की बात करें तो 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर।
सो वेलकम बैक। ड्यूरिंग ओवर ब्रेक आपने देखा हमारी पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिनके मेहनत के बदौलत इस प्रतियोगिता को हम सफल बना सके। गेंदबाजी की अगर बात करें तो किनिल किनल शाह इस वक्त गेंदबाजी में इंट्रोड्यूस किए गए। एक और गेंदबाज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है अपने स्पेल का पहला ओवर करते हुए। हालांकि एक प्लेटफॉर्म बना चुका है सलामी गेंदबाजों की अगर बात करें तो शुरुआती 3 विकेटें अर्जित कर चुके हैं और जो दबाव है उस दबाव में का उभरने का प्रयास यहाँ पर इस वक्त करते हुए विप्सा वॉरियर्स टीम के प्रियश शाह और साहिल पारेख इस वक्त मैदान के अंदर। तो मैं कहूँगा कि यही एक अच्छा समय था अपने एक और गेंदबाज को इंट्रोड्यूस करने का। तो एक सोची समझी रणनीति के साथ HMS हार्ड हीटर्स टीम मैदान के अंदर अब तक का खेल करते हुए देखिए पेस इस गेंदबाज के पास अच्छी गति के साथ में गेंदबाजी करते हैं और लगातार गुड लेन स्पॉट या विकेट के अंतिम चरणों में जिसको यॉर्कर लेन कहा जा सकता है कि इस तरह की गेंदें लगातार करते हुए 47 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। पारी का ये 10वां ओवर यहां पर चलता हुआ विकेट। इस बार आउटसाइड द गेम थी, स्क्वायर कट करना चाहते थे लेकिन पहुंच से बाहर थी। तो अंपायर का वाइड का इशारा यहां से आता हुआ एक अतिरिक्त रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। देखिए रन आने ज़रूरी है, वो शायद किसी भी फॉर्म में आए लेकिन स्कोर कार्ड के ऊपर लगातार रन आना ज़रूरी है और वही यहाँ पर होता हुआ 48 स्कोर कार्ड के ऊपर। किनिल शाह गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए देखिए तेज गेंदबाज है, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे इस बार, यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट। एक और विकेट आता हुआ यहाँ पर, एक्सल वाइपर ड्राइव विकेट। एक्सल वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज विकेट यहां से आता हुआ। देखिए एक अच्छी पारी यहां पर खेली थी दोनों ही खिलाड़ियों ने लेकिन संयम जिसके हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि संयम के साथ बल्लेबाजी करना होगा। एक पेस गेंदबाज को आप आड़े बल्ले से अगर इस तरह के शॉट्स खेलने का प्रयास करेंगे तो यकीनन यहां पर आपकी विकेट भी जा सकते हैं और वही होता हुआ यहां पर तेज गति की गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे और बल्लेबाज यहां पर अपना विकेट खोते हुए नए बल्लेबाज रोमिल इस वक्त मैदान के अंदर आते हुए 48 फॉर 4।
सो वेलकम बैक आफ्टर ड्रिंक्स ब्रेक। और नए खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर साहिल पारिक के साथ देने के लिए रोमिल। रोमिल इनेट नंबर 6 इस वक्त मैदान के अंदर किनल शाह को मिलती हुई यहां पर एक सफलता। हालांकि 4 गेंदें अब तक अपनी ओवर की कर चुके हैं। 10वां ओवर पारी का यहां से चलता हुआ 48 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। फील्डिंग में तब्दीली होती हुई रोबिल होंगे स्ट्राइकिंग एंड पर। और गेंदबाज कीनेल इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद। अंपायर का इशारा वाइड आता हुआ इस ओवर की ये दूसरी वाइड गेंद है। 49। एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप जरूर की थी दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में, लेकिन एक बड़ा माइटी हिट लगाने का प्रयास जरूर किया था। संयम के साथ हम लगातार कह रहे हैं कि संयम के साथ आपको बल्लेबाजी करनी होगी इस मैदान के ऊपर। यदि आप समय बिताते हैं तो एक अच्छा टारगेट जरूर सेट कर सकते हैं। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी। अंपायर का एक और वाइड का इशारा यहां से आता हुआ। तो इस ओवर की ये तीसरी वाइड गेंद है। थोड़ा सा अनुशासन से भटके गेंदबाज। देखिए तेज गेंदबाज के लिए यही होता है कि आपको अनुशासन भरी गेंदबाजी करनी होती है। तो यहाँ से लगातार विकेटों की कोशिश होती हुई, और यही कारण है कि इस पारी का ये तीसरा वाइड गेंद आता हुआ, इस ओवर का ये तीसरा वाइड गेंद आता हुआ। इस बार एक और वाइड। तो ये लगातार तीसरा वाइड, यानी इस ओवर का ये चौथा वाइड। अगर देखा जाए तो 10 गेंदों का अब ये ओवर हो चुका है, क्योंकि 4 ऑलरेडी वाइड इसके अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ से बची हुई 2 लीगल डिलीवरीज आती है, तो ये 10 गेंदों का सबसे बड़ा ओवर जरूर यहाँ पर हो सकता है। लेकिन प्रयास देखिए, लगातार प्रयास हो रहा है कि बल्लेबाज को दुविधा मनस्थिति में लाया जाए, क्योंकि 4 विकेटें खो चुके हैं। 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। रनों की अगर बात करें तो 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पहला माइलस्टोन यहां से अचीव करते हुए, लेकिन उसके लिए 4 विकेटें खोई है। ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि विप्सा वॉरियर्स टीम के लिए इस बार अच्छी गेंद शायद नहीं, क्योंकि अंपायर वाइड। इस ओवर का एक और वाइड यहां से आता हुआ। देखिए काफी लंबा ओवर हो चुका है अब, लेकिन एक सराहना करनी होगी कि एक विकेट, देखिए विकेट की तलाश थी। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए थर्ड मैन रीजन में गेंद जाते हुए 10 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। रन संख्या की अगर बात करें तो 52 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 5.20 की औसत से अब तक रन बना चुके हैं। और इसी रन गति से अगर रन बनते हैं तो 104 रन, लेकिन एक्सेलरेट करना होगा। देखिए अभी भी 4 विकेट खो चुके हैं, यानी 6 विकेटें हैं हाथ में। यदि आने वाले समय में थोड़ा संयम के साथ एक पार्टनरशिप को यहाँ पर बिल्टअप करते हैं तो आने वाली 4 से 5 ओवरों में, आखिर के 4 से 5 ओवरों में स्कोर कार्ड को एक्सेलरेट जरूर किया जा सकता है। 10 ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ 52 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। रोमिल इस वक्त मैदान के अंदर है और साहिल पारेख की सराहना करनी होगी। मैं कहूँगा कि एक तरफ से अपनी टीम की जो जिम्मेदारी है अपने कंधों पर उठाते हुए एक संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे साहिल पारेख। गेंदबाजी की अगर बात करें तो दर्शन, जिनय, राकेश, योगेश शाह और कीनिल, इन गेंदबाजों को यहां पर अब तक इस्तेमाल किया गया है। कुल 10 ओवरों का स्कोर, 10 ओवरों के पश्चात टीम का टोटल की अगर बात करें तो 52 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी अब दूर वाली छोर से गेंदबाजी के बागडोर संभालते हुए गेंदबाज
देखिए फील्ड में यहाँ पर तब्दीली करते हुए, फील्ड पोजीशन में यहाँ पर तब्दीली करते हुए, और स्ट्राइकिंग एंड पर है बल्लेबाज रोमिल। इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, लाइन को मिस कर गए और राकेश को यहां पर मिलती हुई पहली सफलता। ये 5वां विकेट मैदान से बाहर आता हुआ। एक्सेल वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज एक्सेल विकेट यहां से आता हुआ। ये 5वां विकेट खोया है 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, और पहली गेंद के ऊपर सफलता मिलती हुई गेंदबाज राकेश को। So new batsman in is दर्शक सलौत इन एट नंबर 7, 7वें नंबर के बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर। और क्या बेहतरीन स्पेल। देखिए राकेश की अगर बात करें तो 3 ओवर कर चुके थे, अपने स्पेल का चौथा और आखिरी ओवर यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर सफलता। हालांकि लाइन को पढ़ नहीं पाए, बड़ा हिट लगाना चाहते थे बल्लेबाज रोमिल। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, वेल लेफ्ट। इस गेंद को छोड़ने का प्रयास था और सही निर्णय मैं कहूँगा, क्योंकि अभी भी 10 ओवरों का खेल बाकी है। आपको ये सोच मन में लानी होगी कि 20 ओवरों तक डटे रहे मैदान के ऊपर, और सराहना करनी होगी साहिल पारेख की। मैं कहूँगा कि एक संयम के साथ इस वक्त मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए, हालांकि क्षमता है उस खिलाड़ी के पास भी बड़े माइटे हिट लगाने की, लेकिन इस वक्त संयम के साथ खेलते हुए देखिए अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद। मैं कहूँगा कि बेहतरीन स्पेल यहाँ पर राकेश जो कि अपने निजी स्पेल का चौथा ओवर यहाँ पर करते हुए। एक अच्छा रिदमिक एक्शन है गेंदबाज का, और एक रिदम के साथ गेंदबाजी यहां पर करते हुए काफी लयबद्ध तरीके से। इस बार देखिए फ्लाइट किया था, बल्लेबाज को न्योता दिया था और उस न्योते को स्वीकार किया, और खिलाड़ी के सर के ऊपर से यह आता हुआ केडी क्रिएशंस चौकार, 4 रन। देखिए फ्लाइटेड गेंद की थी, बल्लेबाज को ललचाने का प्रयास था, और मैं कहूँगा न्योता दिया था बल्लेबाज को, और इसको दोनों हाथों से कबूला। बेटा उनके सर के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो कुछ इस तरह के शॉट्स लगातार आपको आपके बल्ले से लगाने होंगे, क्योंकि कुछ इस तरह के शॉट्स है जो आपको कॉन्फिडेंस देकर जाते हैं। तो खिलाड़ी अब संयम के साथ यहां पर खेलते हुए 4 गेंदों का सामना किया है दर्शक सलौत ने। 4 रनों का योगदान एक चौके की मदद से। टीम के टोटल की बात करें तो 56 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। इस बार अच्छी गेंद थी, काफी तेजी के साथ की, और एक अच्छा डिसीजन मैं कहूंगा नॉन स्ट्राइकिंग एंड के खिलाड़ी का, क्योंकि यहां से रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। तो ये 11वां ओवर यहां पर पारी का समाप्त होता। रन गति की बात करें तो 56 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 5.09 की औसत से करंट रन रेट यहां पर चलता हुआ। बल्लेबाजी की बात करें तो दर्शक सलौत खेल रहे 5 गेंदों का सामना करते हुए नीचे अपने 4 रनों पर, और सराहना करनी होगी साहिल पारेख की। 19 गेंदों का उन्होंने सामने किया, 15 रनों का योगदान रहा है। और आखिरी ओवर की बात करें तो राकेश ने अपना स्पेल कंप्लीट किया है। राकेश की गेंदबाजी का विश्लेषण अगर कहा जाए तो 4 ओवर 17 रन 1 विकेट। अब नए गेंदबाज योगेश शाह को शायद यहां पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि अपने निजी स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। गेंदबाजी की स्पेल की शुरुआत की थी दर्शन शाह, और जीनय ने काफी बेहतरीन स्पेल रहा जीनय का, जिन्होंने 2 ओवर 13 रन 3 विकेट अर्जित किए। और दर्शन हालांकि 2 ओवर कर चुके हैं, लेकिन कोई सफलता उनको नहीं मिली, और यही कारण है कि अब योगेश शाह को गेंदबाजी की बागडोर संभालने के लिए दूर वाले छोर से इस वक्त गेंदबाजी चलती हुई। फील्डिंग में बदलाव चाहते हैं,
और अपने फील्ड के हिसाब से देखिए, स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं योगेश, सबसे एक्सपीरियंस कैंपेनर है गेंदबाजी के माध्यम से अगर देखा जाए तो सबसे एक्सपीरियंस कैंपेनर है, और अपना अनुभव यहां पर अपने युवा खिलाड़ियों के साथ साझा करते हुए। लेफ्ट आर्मर गेंदबाज, एक बात आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, कवर के सहारे खेला, हालांकि वहां पे डेंजर एंड था खिलाड़ी के लिए। सिंगल को नकारा, शायद किसी भी तरह की रन नहीं यहां पर। गेंदबाज फिर एक बार अच्छी गेंद, इस बार पूरे सम्मान के साथ में खेला। पहली 2 गेंदें इस बार फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद, उसका पूरा फायदा उठाया, इस बार खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेखा को चिरते हुए केडी क्रिएशंस, एक और बेहतरीन 4 रन चौका। केडीसी बाउंड्री यहां पर आती हुई, मच नीडेड बाउंड्री। फुल टॉस गेंद थी, ये फ्लाइट करने का प्रयास था, कंट्रोल में नहीं रख पाए गेंद को, और कुछ इस तरह की गेंदें बल्लेबाज हमेशा चाहते हैं कि कुछ इस तरह की गेंदें गेंदबाज लगातार करे, तो हम भी थोड़ा हमारा इकोनॉमी जो है, हमारा स्ट्राइक रेट जो है उसमें तब्दीली कर सकते हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, सम्मान के साथ में खेला पॉइंट की दिशा में। और रनों की अगर बात करें तो इस सिंगल के साथ में एक और सिंगल स्कोर कार्ड पर ऐड होता हुआ। इस बार अच्छी गेंद की, कलाइयों के सहारे खेल दिया, देखिए खिलाड़ी वहां पर है, लेकिन क्या गेंद को रोक पाएंगे? गेंद जाती हुई सीमा रेखा को चीरती हुई केडी क्रिएशंस, एक और बाउंड्रीज यहां पर आती हुई। देखिए ये अच्छा ओवर चलता हुआ, हालांकि विकेट जरूर खोया है, लेकिन कुछ इस तरह के शॉट्स आने जरूरी है। अब इस पहले सत्र के आखिरी दौर में हम एंटर कर चुके हैं, हाफवे मार्क जरूर है, लेकिन कुछ इस तरह के शॉट्स अगर लगातार आते रहे तो आने वाले समय में और इसमें तब्दीली जरूर की जा सकती है। इस बार गेंदबाज के ठीक बाजू से इस गेंद को निकाला अलोंग द कारपेट, और इसी सिंगल के साथ एक और तब्दीली स्कोर कार्ड पर होती हुई। देखिए दोनों ही खिलाड़ी आपस में चर्चा करते हुए, कई बार हमने देखा है कि जब भी आपकी टीम मुश्किलों में होती है तो लगातार एक दूसरे के साथ बात करने से वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है, वो कॉन्फिडेंस ज़रूर हासिल करते हैं दोनों ही खिलाड़ी, क्योंकि एक दूसरे का हौसला अफजाई करते हैं, लगातार अगली रणनीति के बारे में सोच विचार वहाँ पर होता है। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको लगातार आपके पार्टनर के साथ में कम्युनिकेट करते रहना चाहिए, जिससे कि जो वो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस बूस्टर आपको मिलता रहे। तो यही करते हुए, क्योंकि साहिल पारेख पहली गेंद से मैदान के ऊपर खेल रहे, डटे हुए हैं, और मानो एक तरफ से एक अच्छा टक्कर देते हुए सभी गेंदबाजों को, क्योंकि संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, और यही होता है कि एक एंकर शीट अदा करना जरूरी होता है, एक खिलाड़ी को लगातार डटे रहना होता है। हालांकि शुरुआती समय में ऐसे खिलाड़ी थोड़ा समय जरूर लेते हैं, लेकिन जब एक बार आई साइड सेट हो जाती है तो फिर ये बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी भी मैदान के अंदर कर सकते हैं। गेंदबाज और देखिए इस बार लाइन को मिस कर गए और विकेट आता हुआ यहां से। गेंदबाज यहां पर सफलता मिलती हुई, देखिए ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि सरप्राइज डिलीवरी थी, गेंद अंदर की तरफ आई, शायद समझ नहीं पाए बल्लेबाज, और एक और वाइपर इंडस्ट्रीज प्रेजेंट्स एक्सल विकेट यहां पर आता हुआ। मिस्टर प्रतीक शाह, मिस्टर राहुल शाह, वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज एक्सल विकेट। तो ये छठा विकेट यहां से गिरता हुआ, 68 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट।
गेंदबाज विकी को यहां पर सफलता मिलती हुई। दर्शक सहलोत और साहिल पारेख, ये दो खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर है। पारी का 13वां ओवर यहां पर चलता हुआ और रन गति की अगर बात करें तो 68। थोड़ा सा दबाव में जरूर है आने वाले बल्लेबाज, लेकिन अब यहां से संयम के साथ अगर खेलते हैं, साहिल पारेख की सराहना करनी होगी। अभी भी डटे हुए मैदान के अंदर, इस बार सम्मान के साथ खेला। भली बात ही जानते हैं विकी एक और ऐसे गेंदबाज है जो कि विकेट टेकिंग एबिलिटी रखते हैं। लगातार विकेटों के लिए इस गेंदबाज को भी जाना जाता है। और रनों की अगर बात करें तो साहिल पारेख नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, इस बार अपील, और इस अपील को अंपायर ने दिया। अंपायर की उंगली यहां पर आसमान की तरफ, और एक और वाइपर डाइव इंडस्ट्रीज प्रेजेंट्स एक्सेल विकेट यहां पर आता हुआ। यस, साहिल पारेख की अगर बात करें तो पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं, तो ये कॉन्फिडेंस जरूर उनके अंदर होगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में 50+ उनके बल्ले से आए थे। देखिए पूरे कल के परसों के दिन की अगर हम बात करें तो एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी इस पूरी प्रतियोगिता में, तो वही साहिल पारेख इस वक्त अभी भी मैदान के ऊपर डटे हुए हैं। तो सफलता यहां पर मिलती हुई इस ओवर की ये दूसरी सफलता है गेंदबाज विकी को। जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि विकेट टेकिंग एबिलिटी है गेंदबाज विकी के पास, तो ऐसे गेंदबाजों को आपको सम्मान के साथ खेलना होता है। यहां पर लाइन को मिस कर गए, गेंद अंदर की तरफ आई, मिडिल स्टंप के सामने पाए गए, और लेग बिफोर विकेट एक और विकेट, यानी 7वां विकेट यहां से आता हुआ। अब ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक साहिल पारेख के पास अगर हो तो ये टीम के लिए मैं कहूँगा कि एक प्लस पॉइंट ज़रूर होगा, क्योंकि अब लोअर मिडल ऑर्डर के या लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज अब मैदान के अंदर आ चुके हैं। हालांकि जिनको ज़्यादा बल्लेबाजी का मौका नहीं मिलता है, और ऐसे समय पर अगर साहिल ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे तो आने वाले समय में, क्योंकि अभी भी इस ओवर के बाद 7 ओवरों का खेल बचा हुआ, यानी कुल 42 गेंदें, अगर 42 गेंदों में से कम 32 गेंदें साहिल पारेख अगर स्ट्राइक करते हैं तो अच्छा स्कोर अपने टीम के लिए, एक सम्मानजनक स्कोर जरूर खड़ा कर सकते हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, सम्मान के साथ खेला, इस गेंद को पॉइंट की दिशा में धकेला शॉर्ट पॉइंट पर, और इसी के साथ ये 13वां ओवर पारी का समाप्त होता हुआ। 68 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। तो 14वां ओवर यहाँ पर चलता हुआ, और फिर एक बार दर्शन इनके हाथों में गेंद, जिन्होंने अपने स्पेल की शुरुआत की थी इस मुकाबले के पहली ओवर जिन्होंने फेंका था, पहले 2 ओवरों में 12 रन, हालांकि विकेट अर्जित नहीं कर पाए थे। अब यहां से विकेटों की तलाश होती हुई, देखिए पाइड लाइन पर गेंद थी, कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ दिया खिलाड़ी, वहां पर जब तक आए गेंद को उठाए दोनों बल्लेबाजों के पास, पर्याप्त समय था। 69 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। पारी का 14वां ओवर यहां पर चलता हुआ। सराहना करनी होगी बल्लेबाज साहिल पारेख की भी, 24 गेंदों में 23 रन, संयम यहां पर दिखाते हुए। और पिछले मुकाबले की अगर बात करें तो एकमात्र बल्लेबाज है जिन्होंने 50+ रन किए थे इस प्रतियोगिता में। इस बार फुल टॉस गेंद थी, डीप एक्स्ट्रा कवर या स्वीपर कवर में इस गेंद को खेला,
तो ये काफ़ी कुछ कॉन्फिडेंस देकर जाएगा दोनों ही खिलाड़ियों की। अगर बात करें तो काबिलियत है, नो डाउट। इतनी बड़ी टीम के अंदर जब आपका चयन होता है, आपका सिलेक्शन होता है, तो वो काबिलियत आपके अंदर होती है। महज ज़रूरी है कि थोड़ा समय इस वक्त अगर क्रीज के ऊपर बिताए तो आने वाले समय में अपनी टीम के लिए एक अच्छा टारगेट जरूर सेट कर सकते हैं। इस बार वेल लेफ्ट, देखिए बाहर जाती हुई गेंदों के साथ छिड़काने नहीं। और ये हमारे कैमरामैन देखिए इंडिगो फ्लाइट को आपके स्क्रीन पर दिखाते हुए, लेकिन सराहना करनी होगी दर्शन गेंदबाज अपनी स्पेल का तीसरा ओवर यहां पर करते हुए। ये अच्छी गेंद थी, ये अच्छी गेंद यहां पर पिच होने के बाद गेंद हल्की सी बाहर निकली, टर्न देखने मिला और स्विंग के लिए जाने जाते। विकेट टेकिंग एबिलिटी जरूर है। पहले मुकाबले में हमने देखा था शुरुआती स्पेल में अपने टीम के लिए 3 महत्वपूर्ण विकेट अर्जित करके दिए थे। और आज अगर देखा जाए तो हालांकि तीसरा ओवर अपने स्पेल का कर रहे, इकोनॉमिकली काफी अच्छी गेंदबाजी रही है। इस बार डायरेक्ट हिट का प्रयास, एक हल्की सी अपील है जरूर वहां पर होती हुई, लेकिन शायद खिलाड़ी पहुंच चुके हैं कॉन्फिडेंसली। $71 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। पारी का 14वां ओवर यहां पर चलता हुआ। हेमन और साहिल इस वक्त मैदान के अंदर है। 7 विकेट हो चुकी है विप्सा वॉरियर्स टीम। और HMS हार्ड हिटर्स टीम की सराहना करनी होगी सभी गेंदबाजों की। बहुत ही बेहतरीन स्पेल यहां पर करते हुए। इस बार अच्छी गेंद थी, देखिए पेस और गति के साथ इस गेंद को किया था। तो 14 ओवर की समाप्ति होती हुई 71 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 7 विकेटों के नुकसान पर। सो वेलकम बैक। आखिरी का 6 ओवरों का खेल अभी यहां से आना बाकी। और एक मैं कहूंगा कि प्लस पॉइंट जरूर होगा क्योंकि साहिल पारेख अभी भी मैदान के ऊपर डटे हुए। गेंदबाजी की अगर बात करें तो 1 ओवर 1 रन 2 विकेट अर्जित करने वाली विकी के हाथों में फिर एक बार गेंद को थमाया गया है। बेहतरीन स्पेल रहा है, किसी भी गेंदबाज के लिए ये ड्रीम स्पेल हो सकता है क्योंकि मैच 1 ओवर किया, 2 विकेट अर्जित किए और 1 रन कर दिया था। अब ये अपने स्पेल का दूसरा ओवर यहां से करते हुए, हालांकि इस बार ऑन द नीज आए थे खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद, लेकिन सिंगल यहां से स्कोर कार्ड पर। तो पहली 2 गेंदों में 2 सिंगल यहां से आते हुए। देखिए आखिरी 6 ओवरों का खेल अब यहां से चलता हुआ। अब गियर शिफ्ट करने होंगे, यहां से एक्सेलरेट करना होगा यदि एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ आपको जाना है। अपने गेंदबाजों के लिए कुछ डिसेंट टोटल अगर आपको स्कोर कार्ड के ऊपर चाहिए तो यहां से एक्सेलरेट करना होगा। और इस एक्सेलरेशन के पूरी जिम्मेदारी अगर किस खिलाड़ी के ऊपर होगी तो वो है बल्लेबाज साहिल पारेख। हेमन भी अच्छा साथ यहां से निभाते हुए। और रनिंग बिटवीन द विकेट की अगर बात करें तो बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट इस वक्त मैदान के अंदर होते हुए। विकी अपने निजी स्पेल का दूसरा ओवर यहां पर करते हुए। रन संख्या की अगर बात करें तो 76 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में थोड़ा संयम जरूर, थोड़ा सा बल्ले के साथ शायद कुछ बदलाव चाहते हैं अंपायर से वार्तालाप यहां पर करते हुए। खिलाड़ी भी वहां पर, देखिए एक अच्छा माहौल होता है, सारे खिलाड़ी एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे के साथ काफी अच्छा एक बिहेवियर होता है सभी खिलाड़ियों का। मैदान के अंदर जरूर मुकाबला चल रहा है क्योंकि एक टीम जीत की तरफ अग्रसर होगी, एक टीम को इस मुकाबले में हार का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है इस प्रतियोगिता के माध्यम से। इस बार देखिए अच्छी गेंद थी,
और उतनी ही अच्छी फील्डिंग यहां पर सराहना करनी होगी सभी खिलाड़ियों की। एक एक्स्ट्रा एनर्जी सभी खिलाड़ियों के अंदर दिख रही है क्योंकि गेम को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा है पहले फेज में। लेकिन इस बार देखिए पैडलाइन पर गेंद थी, खराब गेंद, और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए गेंद जा रही है सीमा रेखा को चीरती हुई। केटीसी क्रिएशंस बाउंड्री, चौकार यहां पर आता हुआ, 4 रन। देखिए ये काबिलियत है इन बल्लेबाजों की। मैंने शुरू में ही कहा था कि यदि आप समय बिताते हैं विकेटों के ऊपर तो आपके बल्ले से बड़े हिट आना बेहद लाजमी है, क्योंकि ये एक बैटिंग पैराडाइज विकेट मानी जाती है, एक हाई स्कोरिंग वेन्यू माना जाता है इस विकेट को। यदि आप समय बिताते हैं तो आपके बल्ले से रन जरूर देखे जा सकते हैं। यही करते हुए इस वक्त अगर बात करें तो स्ट्राइकिंग एंड पर है हेमन, इन एट नंबर 8 बल्लेबाज मैदान के अंदर। 7 गेंदों में 1 चौकों की मदद से 6 रन बना चुके अपनी टीम के लिए। और साथ ही साथ साहिल पारिक की भी सराहना करनी होगी, 29 गेंदें खरीदे हैं स्क्रीज के ऊपर और 28 रनों का योगदान दिया है। इस बार अच्छी गेंद थी, अच्छी वापसी, क्या यहां से यस, एक और विकेट आता हुआ बड़ी मछली जाल में। बल्लेबाज हेमन बैक टू द पेवेलियन, वाइपर ड्राइव्स इंडस्ट्रीज प्रेजेंट्स, एक्सल विकेट यहां से आता हुआ प्रतीक भाई शाह और राहुल भाई शाह के माध्यम से। देखिए ड्राइव लगाना चाहते थे, इससे पहले वाली गेंद के ऊपर 4 रन आए थे तो करारा जवाब दिया गेंदबाजी के माध्यम से। गेंदबाज ने भी टिट फॉर टैट। चौके के बाद विकेट यहां से आते हुए देखिए अंपायर की उंगली भी आसमान की तरफ, यानी विकेट का पता नहीं यहां पर हो चुका है। विकी को मिलती हुई ये तीसरी सफलता, हालांकि महज 2 ओवरों में 10 रन 3 विकेट। तो ये थी हमारी पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपकी स्क्रीन के ऊपर। बैक टू द लाइव एक्शन। देखिए दर्शन सेठ गेंदबाजी में अपने स्पेल का आखिरी ओवर यहां पर करते हुए, हालांकि स्पेल में विकेटलेस रहे हैं लेकिन इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। शैलेश साहिल पारिक अभी भी मैदान के अंदर। जय, देखिए जय पैड लाइन पर गेंद थी, खिलाड़ी वहां पर आते हुए बैकवर्ड्स करने की दिशा में इस गेंद को खेला था। महज सिंगल स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ दर्शन सेठ, जिनके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी है, लेकिन आज के स्पेल में अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकली बहुत ही बेहतरीन स्पेल उनका रहा है। 3.2 ओवर 16 रन, हालांकि विकेट अर्जित नहीं कर पाए लेकिन जो रन गति थी उस रन गति को एक सीमित रोका है। इस बार इट्स अ नो बॉल, अंपायर का नो बॉल का इशारा आता हुआ, शायद ओवर स्टेप कर गए और अंपायर का नो बॉल का इशारा आता हुआ। तो स्ट्राइकिंग एंड पर है बल्लेबाज जय, इन एट नंबर 9 इस वक्त मैदान के अंदर है और अपने खिलाड़ी के साथ, साथी खिलाड़ी के साथ यहां पर कुछ सलाह मशवरा करते हुए, और ये बेहद ज़रूरी भी है क्योंकि लगातार हमने शुरू में भी कहा था कि लगातार आप आपके साथी खिलाड़ी के साथ अगर वार्तालाप करते हैं तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो एक अलग ऊंचाई पर होता है। इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास, क्योंकि ये फ्री हिट की गेंद थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में वहां पर गेंद को रोका गया। डॉट गेंद की हुई समाप्ति, 82 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट। पारी का 16वां ओवर यहां से चलता हुआ इस बार उठाकर खेल दिया है। देखिए कवर और मिड ऑफ के बीच में से इस गेंद को ढकेलना चाहते थे, हालांकि अच्छी फील्डिंग वहां पर, फील्डर काफी तेजी से आए थे, काफी चुस्ती और स्फूर्ति दिखाई थी इस गेंद को रोकने में। जब बल्लेबाजी जानते हैं कि ये गेंद पहुंच से बाहर है तो अपने फुटवर्क का भी इस्तेमाल किया, यानी क्रिकेट के अंदर फुटबॉल का नजारा भी हमने देखा। इस गेंद को रोका, 2 रन इसी बीच दोनों ही बल्लेबाज पूरे करते हुए। इस बार
बॉलर्स बैक ड्राइव, लेकिन मिड ऑफ की जाने वो एक खिलाड़ी वहां पर मौजूद। सिंगल यहां से स्कोर कार्ड पर आता हुआ, सिंगल के साथ स्कोर मूव्स ऑन टू 85। पारी का 16वां ओवर यहां पर चलता हुआ। अब साहिल है स्ट्राइकिंग एंड पर। क्या साहिल सिंगल के साथ स्ट्राइक आखिरी 4 ओवरों में अपने पास रखना चाहेंगे, या इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाकर? ये देखिए, ये अच्छी गेंद थी, पूरे सम्मान के साथ में खेला। इरादा तो वही था, सिंगल के साथ में स्ट्राइक अपने पास रखे। 16वां ओवर पारी का समाप्त होता हुआ 85 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट। सो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नागदेवी स्पोर्ट्स ग्रुप जिनहर्ष टिमकिन एडोर कप 2023 सीजन 4, टाइटल स्पॉन्सर जिनहर्ष सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जो था, हाइट फैक्टर, ये बात जरूर यहां पर हो सकती है, इसीलिए अब मैंने इस अपील को नकारा। ऊंचे कद के खिलाड़ी है जय, इस वक्त मैदान के अंदर है। 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 3 रनों का योगदान दिया है। 17th ओवर, 17वां ओवर पारी का यहां से चलता हुआ। गेंदबाज विकी अपने स्पेल का 3रा ओवर यहां से करते हुए। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे खिलाड़ी, उनके पहुंच से बाहर रही है गेंद। अंपायर का इशारा वाइड का यहां से आता हुआ। देखिए, रन आने जरूरी है। यदि आप एक डिसेंट टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर प्लेस करते हैं तो आने वाले समय में आपके गेंदबाजों के लिए भी एक बूस्टर होगा। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा। थर्ड मैन रीजन में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, जब तक आए गेंद को उठाए। अब सिंगल यहां से स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। देखिए, स्ट्राइकिंग एंड पर है साहिल पारेख। अब साहिल को लगातार आक्रामक बल्लेबाजी मैदान के ऊपर करनी होगी। काफी संयम के साथ खेला है, इस विकेटों के ऊपर समय बिताया है। और इस प्रतियोगिता की बात करें तो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिनके बल्ले से 50+ रन निकले, यानी अर्धशतकीय पारी खेल चुके हैं पिछले मुकाबले में। तो यही अगर यहां पर इस मुकाबले में भी करते, क्योंकि अभी भी 3.5 ओवर इस इनिंग में बची हुई, यहां पर रन गति को बढ़ाने का प्रयास जरूर होगा। स्ट्राइकिंग एंड पर जय, देखिए काफी अच्छी हाइट है, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी है, और शायद मौके कम मिलते होंगे उन्हें बल्लेबाजी की, लेकिन जब भी बल्लेबाजी मिलती है तब टीम दुविधा में होती है। इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन प्रॉपर टाइम नहीं कर पाए इस गेंद को, और यही कारण था कि खिलाड़ियों के पहुंच से बाहर रही है गेंद। काफी अच्छा प्रयास था, 2 खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद थे, और इस सिंगल के बदौलत 94 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट। 18 ओवर यहां पर चलता हुआ। इस बार पैड लाइन पर गेंद थी, कलैयों के सहारे मोड़ दिया खिलाड़ी, वहां पर भापी नाते हुए गेंद को उठाए। ये आज फील्डिंग में काफी अच्छा मैं कहूंगा कि स्टैंडर्ड रहा है फील्डिंग का, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, और उतनी ही सराहना करनी होगी गेंदबाजों की भी। सभी गेंदबाजों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, विकेट टेकिंग एबिलिटी हर गेंदबाज ने दिखाई है, और जब भी स्पेल के लिए आए हर एक गेंदबाज ने विकेट लिया है। हालांकि दर्शन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली विकेट नहीं ले पाए, लेकिन गेंदबाजी इकोनॉमिकली किया है। इस बार देखिए, फुल टॉस गेंद थी, मिस कर गए। आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे जय, थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना चाहते थे अपने बल्ले में, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। ये आता हुआ वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज प्रेजेंट्स एक्सल विकेट यहां से आता हुआ। देखिए, रिप्लाई में भी आप देख सकते हैं, डांसिंग डाउन द विकेट, कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, और इस लाइन को पूरी तरह से, क्योंकि अगर जगह से खेलते तो शायद ये फुल टॉस में तब्दील भी हो सकती थी, बड़ा हिट आ सकता था, लेकिन सोच अलग थी बल्लेबाज की, और सराहना करनी होगी गेंदबाज केनिल शाह की भी। 1.5 ओवर 8 रन और 2 विकेट अर्जित कर चुके इस स्पेल में।
अब नए खिलाड़ी अवित दोषी इस वक्त मैदान के अंदर आते हुए, अवित रहेंगे स्ट्राइकिंग एंड पर और साहिल पारेख। अब सभी की निगाह होगी साहिल के ऊपर, क्योंकि आखिरी 12 गेंदों का खेल बचा हुआ। 120 विल बी द डिसेंट टोटल। देखिए अब पहली सोच हो गई कि कम से कम 120 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए। ये वाइड गेंद लेग स्टंप को छोड़कर जाते हुए अंपायर का वाइड गेंद का इशारा यहां से आता हुआ। किनिल अपने स्पेल का दूसरा ओवर यहां पर करते हुए, इस बार अच्छी गेंद और शायद ये विकेट देकर गई है। यस, हल्का सा जेंटल टच लगा आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, उसे ड्राइव लगाना चाहते थे, दिशा को पढ़ नहीं पाए और एक और विकेट यहां से मिलता हुआ। वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज प्रेजेंट्स एक्सल विकेट यहां से आता हुआ। देखिए अच्छी गेंद थी और स्विंग भी देखने मिला इस गेंद में, तो एक और विकेट यहां से आता हुआ। 96 फॉर द लॉस ऑफ 10 विकेट्स। हर इनिंग में हर टीम में 12 खिलाड़ी शामिल किए गए, यानी 11 खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा, तो ये एक अच्छी सोच है। साहिल अभी भी मैदान के ऊपर डटे हुए, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी इस पूरे प्रतियोगिता के जिनके बल्ले से 50 प्लस रन आए हैं, लेकिन उतने मौके आज उन्हें नहीं मिले, क्योंकि ज्यादातर समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ही इस खिलाड़ी को देखा गया। और जब भी एक आक्रामक सोच के साथ स्ट्राइकिंग एंड पर आते हैं तो दूसरी छोर पर विकेटें लगातार गिरती रही है। तो यही कारण है कि एग्रेशन नहीं दिखा पाए अपने बल्लेबाजी में, लेकिन अब आखिरी 12 गेंदों का खेल बाकी है। तो क्या इन आखिरी 12 गेंदों में आक्रामक बल्लेबाजी यहां पर कर सकते हैं? स्ट्राइकिंग एंड पर है साहिल, तो अब यहां से लगातार आपको आक्रामक सोच रखनी होगी। इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, सिंगल यहां से आता हुआ, क्या दूसरे के लिए आना चाहेंगे खिलाड़ी? वहां पर सोच जरूर थी, साहिल स्ट्राइक रखना चाहते थे अपने पास, लेकिन अच्छा फील्डिंग वहां पर होता हुआ महज सिंगल। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो इस वक्त गेंदबाज विके अपने स्पेल का आखिरी ओवर यहां पर करते हुए, इनका फिगर देखा जाए तो 3.1 ओवर 17 रन और 3 महत्वपूर्ण विकेट अर्जित किए। इस बार 9 फुटवर्क जगह से इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, अच्छी गेंद है। इस बार गति में मिश्रण किया था, तेज गति से क्विकर वन गेंद की थी। जानते हैं कि ये लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज है, तो शायद इनको उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं बल्लेबाजी का, और यही कारण था कि काफी तेज गति से इस गेंद को किया था, क्विकर वन था। एक और अच्छी गेंद यहां से आती हुई, देखिए लाउड अपील जरूर है स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ, और ये शायद विकेट यहां से एक और आता हुआ, क्योंकि पॉपिंग क्रीज के बाहर खड़े थे, थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना चाहते थे। तो वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज प्रेजेंट्स एक्सल विकेट यहां से आता हुआ। देखिए अच्छी गेंद थी, जैसे ही गेंद हाथ में आई विकेट कीपर ने लाइटनिंग फास्ट स्पीड देखा और बेल्स को डिसलॉन्च किया, जबकि खिलाड़ी पॉपिंग क्रीज के बाहर थे। एक और विकेट यहां से आता हुआ, तो 11 विकेटें खो चुकी है 97 स्कोर कार्ड के ऊपर, और अभी भी साहिल पारेख नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जो कि खेल रहे अपने निजी 33 रनों पर। नए बल्लेबाज जयेंद्र पारेख इस वक्त मैदान के अंदर। .3 यानी 18.3 ओवर, पारी का 19वां ओवर यहां पर चलता हुआ, और 97 फॉर द लॉस ऑफ 11 विकेट। ये एक अच्छी सोच है मैं कहूंगा, क्योंकि आपकी टीम के अंदर कुल 12 खिलाड़ियों का चयन किया गया है 12th मैन के साथ, तो बल्लेबाजी में यदि अगर ऐसा मौका आता है तो आपको 12 के 12 खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा। ये एक अच्छी सोच है, क्योंकि आपके टीम में जिन खिलाड़ियों को आपने शामिल किया है उन सभी को मौका इससे मिल सकता है, तो एक अच्छी सोच। कल हमने यूट्यूब पर एक मैच देखा था, उसमें 4 विकेट्स लगाए गए थे। ज़्यादातर पर हम क्रिकेट में 3 विकेट्स देखते हैं, उन्होंने 4 विकेट लगाए थे। तो
ये हर एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का एक अलग अलग रूल होता है, तो कुछ यही यहाँ पर हमें भी दिखता हुआ। तो ये शायद ये नए बल्लेबाज जयेंद्र पारेख है, लेफ्ट आर्मर। इस बार देखिए विकेट कीपर से भी ये गेंद छूटती हुई और आता हुआ ये बोनस यानी वाइट +4 केडी क्रिएशंस प्रेजेंट्स। बाउंड्री यहां पर आती हुई 4 रन चौकार। केडी कॉर्पोरेशन तो मच नीडेड बाउंड्री, जरूरत थी। देखिए रन आना जरूरी है। इस बार दिशा से भटके थे, लेफ्ट स्टंप को छोड़कर जाती हुई गेंद, हालांकि खिलाड़ी वहां पर थे, बरजोर कोशिश उन्होंने जरूर की, लेकिन आखिरी समय पर गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रनों के लिए। तो 5 वाइड यहां से आते हुए और इस डॉट गेंद के साथ स्कोर वहीं पर रुका हुआ 102, 102 रन। गेंदबाज वी की अपने स्पेल का आखिरी ओवर यहां पर करते हुए 4 विकेट। क्या बेहतरीन फिगर है, 22 रन देकर 4 विकेट अब तक अर्जित कर चुके हैं। करंट रन रेट की बात करें तो 5.42 ये करंट रन रेट इस वक्त। विप्सा वॉरियर्स टीम, अच्छी गेंद थी, पूरे सम्मान के साथ में इस गेंद को खेला। 19th ओवर पारी का समाप्त होता हुआ। रनों की बात करें तो 102 रन 11 विकेटों के नुकसान पर। तो पहले सत्र का आखिरी ओवर यानी आखिरी 6 गेंदों का खेल यहां से बचता हुआ और स्ट्राइकिंग एंड पर है बल्लेबाज साहिल पारेख। देखिए शुरुआती समय से मैदान के ऊपर डटे हुए हैं, लेकिन जब भी उन्होंने आक्रामक रूप इख्तियार करने की कोशिश की, दूसरे छोर पर विकेटें लगातार गिरती गई और यही प्रेशर को हैंडल करते हुए देखिए इस बार आखिरी 6 गेंदे अपने पास स्ट्राइक रखना चाहेंगे। पहली गेंद काफी तेजी से ली, लेकिन क्या दूसरे रन की संभावना यहां पर होगी? जी नहीं, महज सिंगल यहां से आता हुआ। सिंगल के साथ टीम के टोटल की अगर बात करें तो 103 रन। जयेंद्र पारेख और साहिल पारेख ये 2 खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर और आखिरी ओवर अपने स्पेल को कंप्लीट शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2.1 ओवर में 21 रन दिए। विकेटलेस रहे गेंदबाज योगेश। ये सबसे अनुभवी गेंदबाज है और इकोनॉमिकली गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और विकेट टेकिंग एबिलिटी भी है। लेकिन आज 2 ऐसे हमने गेंदबाज देखे जो कि जाने जाते हैं विकेट टेकिंग एबिलिटी के लिए। डॉक्टर दर्शन जो विकेटलेस रहे हैं, और उसके बाद अगर देखा जाए तो योगेश शाह, जिनका विकेट का कॉलम अभी भी खाली होता हुआ, यानी 0। 2.2 ओवर 22 रन, कोई विकेट नहीं। लेकिन साहिल अब स्ट्राइकिंग एंड पर आते हुए क्या बची हुई 4 गेंदों में अपनी टीम को 120 के करीब लेकर जा सकते हैं, क्योंकि अगर एक 120 टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आता है, 120 गेंदे 120 रन, तो एक एडवांटेज जरूर होता है सामने वाली टीम के ऊपर। आप प्रेशर जरूर बना सकते हैं। तो क्या 4 गेंदों में ये 16 रन बल्लेबाज स्कोर कार्ड के ऊपर, क्योंकि चैलेंज होगा, क्योंकि योगेश शाह धीमी गति के गेंदबाज है, स्पिन के लिए जाने जाते हैं, गेंदों को दोनों तरफ लहराने में सक्षम है गेंदबाज। हालांकि आज उनके स्पेल विकेटलेस जरूर रहा है, लेकिन लगातार अगर हम देखें तो योगेश बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। कुछ पॉसिबिलिटीज यहां पर चेक करते हुए अंपायर्स। देखिए दोनों ही इंटरनेशनल अनुभव है दोनों ही अंपायर्स के पास।
रनों की अगर बात करें तो 104 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। सराहना करनी होगी साहिल पारी की। मैं कहूँगा कि मेहनत की है इस कड़ी धूप में, क्योंकि लगातार 20 ओवर विकेटों के ऊपर खड़ा रहना, और वो भी एक दोपहर के सत्र में ये चलता हुआ मुकाबला जहां पर कड़ी धूप खिली हुई। सो वेलकम बैक। आखिरी 4 गेंदों का खेल यहाँ पर शेष, और स्ट्राइकिंग एंड पर है बल्लेबाज साहिल पारेख। 104 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए क्या यहाँ से आक्रामक बल्लेबाजी होगी? देखिए, फील्डिंग में तब्दीली होते हुए थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर हमने देखा बदलाव यहाँ पर करते हुए अपनी गेंदबाजी में। गेंदबाज योगेश शाह अपने स्पेल का तीसरा ओवर यहाँ पर करते हुए, और इस पारी का आखिरी ओवर। देखिए, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, काफ़ी तेज बल्ला ज़रूर घुमाया था, लेकिन किसी भी तरह के रन लेने का प्रयास यहाँ से नहीं है। तो आखिरी 3 गेंदें यहाँ पर बची हुई। क्या 3 गेंदों में 2 बड़े हिट बल्लेबाज के बल्ले से आएंगे? 2 मैक्सिमम। यहाँ पर एक और अच्छा प्रयास था, सिंगल यहाँ से आता हुआ। क्या दूसरे के लिए आना चाहेंगे? और यहाँ पर मिस्टेक होती हुई खिलाड़ी से, हालांकि काफ़ी दूर से आए थे गेंद के ऊपर, गेंद को जज नहीं कर पाए थे, और दूसरे रन का मौका यहाँ पर बनता हुआ। इन 2 रनों के साथ रन ही नहीं लिया। देखिए, ये शायद एक अलग सोच साहिल की, किसी भी तरह की रन नहीं, तो लगातार दूसरी डॉट गेंद यहां पर आते हुए इस बार रन क्यों नहीं लिया था उसका यहां पर उदाहरण देते हुए कि यह कारण था कि मैंने रन नहीं लिया था। यह था वाकेडी कॉर्पोरेशन प्रेजेंट सिक्सर, 6 रन। देखिए, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, और शायद अगर विकेटें नहीं खोते तो साहिल एक बड़ी पारी जरूर अपनी टीम के लिए खेल सकते थे। इसके पहले वाली गेंद के ऊपर हालांकि जरूर मौका था वहां पर 2 रन लेने का, लेकिन साहिल ने नकारा। जानते थे कि आखिरी ओवर चल रहा है, आखिरी कुछ गेंदें बची है, तो ऐसे समय में एक आध 2 बड़े हिट अगर आते हैं तो टीम का जो टोटल है एक सम्मानजनक टोटल की तरफ जरूर जा सकता है। इस बार ये गेंद देखिए, प्रेशर प्रेशर अब दिखता हुआ गेंदबाज के ऊपर, आउटसाइड द लेग स्टंप गेंद, क्योंकि गेंदबाज भी बचना चाहेंगे। हालांकि योगेश शाह जो कि मोस्ट एक्सपीरियंस गेंदबाज है, उनका फिगर आज कुछ थोड़ा सा उनके खेल के विपरीत होता हुआ। इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, टो एंड पर लगी बल्ले के, सिंगल यहां से मैच आता हुआ। क्या दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे? जी नहीं। तो 20 ओवरों का खेल यहां से समाप्त होता हुआ। स्कोर कार्ड को अगर देखें तो एक नेल्सन फिगर यहां पर आता हुआ, एक और विकेट, वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज प्रेजेंट्स एक्सेल विकेट यहां से आता हुआ। तो टीम की टोटल 111 पर 12, ये टोटल यहां से अब 111 रन बना चुके हैं, यानी जीत के लिए लक्ष्य होगा 112 रनों का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और जैसे ही सेकेंड इनिंग की होगी शुरुआत, आपके साथ जुड़ेंगे हमारे गुरुवर संतोष जी मितबावकर सर।
Yes. Hello. With some Warriors need 113 runs to win in the stipulated 120 overs. Watson starts off with a wide. If they want to have any chance of winning this one or getting close to this one, they have to get a few wickets. Courtesy this man on your screen, Vatsal Doshi. He was sensational yesterday. He took 3 4 wickets and all of them clean bowls. So it would be up to him, Vatsal, to get them those initial wickets. Samir Shah and Vicky are the two opening batters. Oh, that's slashed and slashed hard straight to the fielder. That was wide. That was so pitched. Not the ideal ball to be bowling in that first few overs. His strength, his power is to bowl within the stumps, and that's his forte. He should be concentrating on all. Yesterday we saw a lot of balls moving away, a few coming back in, and few hitting the stumps directly. That kind of bowling it was for him yesterday. He was absolutely spot on with his line and length. He has good pace, he has good, nice, strong action. But yesterday was special because he got everything right. Pace, the length, the line, the rhythm, everything was perfect. Today, two bad balls to start off. Yeah, that's how what he was bowling yesterday. Today, you will not see that kind of swing for him. Yesterday, the ball was moving, almost he was talking. It was moving both ways. And more importantly, he was bowling into that channel just outside that off stump. In fact, he was getting very close to the stumps. So it was becoming very difficult. Few balls went away, and the another one just jacked back to take the leg stump, the first wicket which he got. So the score is 2. It's Vicky on strike now. Samir Shah has got a single. That's very wide. There is some swing on offer. With that wide, the score will move on to 3. So 3 runs on the scorecard, 2 wides and a single. Samir Shah getting off the mark, getting that single. Vicky is yet to open his account. He's faced a ball. No, he completely squared up. Absolutely no clue Vicky had for the ball where it went. That's good bowling now. They need this man to get a few wickets. Vatsal Doshi has to be the key bowler. Yesterday Mayank bowled well. There are a few good bowlers in this team. In fact, 2 3 of them. But this man has to do the majority of the wickets in the first few overs. No idea at all. Bowling right into that channel, making the batter chase the ball. First 4 balls, we saw a couple of wides, we saw a single being slashed, and we saw a play and miss. So everything in this first over except for a boundary or a wicket. So let's see the next 2 balls bring in some joy for the batters, or it would be Vatsal who would be celebrating and getting his first wicket. A couple of balls remaining in the opening encounters of the 5th of Jan. It is HMS Hardy Tours. Yeah, strongly blocking it. Instead of hanging back on the back foot, he was there on the front foot to meet the ball. Well, that's good courageous cricket after being beaten neck and crop, coming right into the line of the ball and playing it prudently. The score's 3 now. We are in the first over. Vatsal Doshi, he might just get a wicket in his first spell, maybe in his first over even. That's beautifully played. Playing with soft hands and taking a single. That is nice, nice batting. Don't bother about getting boundaries. You'll get few singles and get through those first 6 overs without losing a wicket and maybe scoring 35 40 runs. You'll be through. It's a very smallish target to chase down. 113 to win.
The score is 4. Vipul Sanghvi is the most experienced player in that lineup. He's a pretty handy tennis player as well. He hits a lot of boundaries and sixes. He's a specialist in that kind of cricket. He wasn't ready. Vicky wasn't ready. And that was well bowled. And today, Vipul wasn't that up to the mark. He bowled a few not so good deliveries when he started off. It is the other way around. Vatsal started off few wide ones, but Vipul is bowling it nicely. Yesterday, Vipul was the one who was taken for a few runs, but today he has got it absolutely right. That's what his experience, putting the ball in the right areas and let the new ball do the talking. This is how you work in pairs. Yesterday, Vatsal was almost unplayable. Today he's being handled well by Vicky and Samir. They played him with soft hand. They played and missed him once or twice, but they've handled him fairly all right. But this man is creating some problems now. Vipul Sanghvi, with all his experience, probably one of the icons of this kind of cricket. He has been very, very pivotal in all the cricketing and entertainment. He's considered as a match winner on his own. Tennis ball cricket, he's a master. And even in leather cricket, he's making full use of the new ball, floating that ball over there. But this is beautifully done. The ball is racing towards a long on boundary. That would be the. In fact, he has tried to stop it, but that's stuff, super stuff. That's super stuff. That was boundary written on it all over, and he has managed to keep it down to just one. That is brilliance. It was a certain boundary up until the fielder at wideish long on decided to go over there, put his foot down, and stop it from going over for a boundary. So HMS Hard Hitters in pursuit of 113 have started off well. So let's see, HMS Hard Hitters will sail through, or it will be Vipul Sanghvi's experience which will come in and get them their first wicket. Vatsal and Vipul, two very good bowlers to start off the innings. It was going down leg, clearly going down leg. So this has been a better over than Vatsal, I would say. Vatsal was one of the best bowlers of, if not the best, yesterday. But today Vipul trying to put the ball in the right areas and hasn't bowled a bad ball as it. And he's conceded a single. He might pick a wicket as well. But that was again floating down the leg side. Today he has put the pace down and tried to put that ball into that good length area. The score at the end of round number 2 is 5 without loss. 1 run in this Vipul Sanghvi over. Yes, so the score is 5, 2 overs and 5 runs. Oh, that is beautifully played. What a shot that is on the rise. But good fielding, good stuff over there. It will be a definite couple. They might run the third one. They could have done a little better when it comes to running. Vicky bowled so very well. He is a very good player and a very smart one, Vicky. Just love the way he approaches his game. He bowled so very well with his 4 overs. I think he's got 3-4 wickets on his own. Any team would love to have a player like him. And he seems to be very smart, very cheeky. And he's not going for his all big shots. He's not going for that big booming cover drive or a big pull shot or a straight hit down the ground. He's trying to just wait for his opportunities. Wait for that ball which is loose outside the off stump and then slash over it. So that's good prudent batting.
This would be a test for him even. Vatsal has looked good in this tournament. Oh, that's beautifully bowled. We came into the position well. We couldn't shuffle that quickly because as you get to the other side of 40, your reflexes are not as great as you used to have in those early 20s or 30s. They say the batsman when he approaches the age between 29 to 32, that is his best time to bat. 33, 34, he is at his best. So there is where even Virat Kohli is, and that is the time you get a lot of runs. Oh, that's beautifully played. This is super bowling, but that's what Vatsal is doing all throughout the tournament. But to play Vatsal with that kind of confidence, he understands who the threat is. But just trying to play him away, he's taking it for the team. He is trying to face maximum balls by Vatsal so that Vatsal's overs are eaten up. And he understands it's a run chase where you have to score 5.5 runs per over. So no point is being a hero and giving his wicket away. He wants to stay there. Oh, I know that was very difficult. That was a jaffer. The ball just bounced profusely. So the score is 7, 2.4 overs and 7 runs. शो अभी वापस बतलाओगे थोड़ा सा. Oh, that's beautifully turned. What a shot! This is racing away towards the fine leg region for a fabulously flaked boundary. Smart guy, this man. And getting any runs against this bowler, it's a fantastic KD Corporation boundary coming in at the right time. KD Corporation is known for its timing. KD Corporation is known for its excellence, and this shot was pure excellence and pure timing. And it was flaked beautifully. See, outside the off stump and just turned it round the corner. What a good shot that was. And he's making a good ball into a bad ball. That is smart, that is brave cricket from Vicky. Oh, what a shot that is. Again, getting on the top of the ball and gliding it smoothly. Has it gone all the way? No, good work. Some footwork over there with that single. Why am I going gaga over this batsman? These are not easy balls to face. The new ball moving both ways. That too against a bowler who is in top form. A youngster who has been bowling well. This is good batting by the opening batter. He has got 9 of 15. Yes. Hello. What a shot that is. Fantastic. KD Corporation boundary. They need to minimize this, the bowling team, but the batting teams would be welcoming this with both hands. 16 without loss. That's beautifully turned away. He is so smart. Some misfield, but the way it was deflected and directed into that point region was superb. He is sighting the ball very well. He's in good form, has given some very good performances right from yesterday, and he has got a 4 of a very good bowler. He has been very economical. Last over he just gave away a single, and of the very second ball of this over he has got a boundary. There was misfield, but that's fine. And will it go?
No, that's some good work over there. With that single, the score will move on to 17. Samir Shah will come on strike. He's on 1. Vicky is raced away to 14 runs. Remember, they just need 5.5 runs per over, so they are going along smoothly. In fact, they are going at a rapid pace, and they might just win this one convincingly. Unless Vipul and Vatsal create some magic. There are a few other bowlers who are also superb. Almost the first wicket. Jinharsh Timken Ador Cup 2023 Season 4. This has been a tournament where we have seen the ball dominate the bat more. As last year we saw a lot of boundaries, lot of sixes, lot of half centuries being hit. Well, that's beautiful. Then what a shot that is. That's a cracking shot straight to the fielder. There are only two fielders protecting outside the 30-yard circle. One is there in the square leg, the another one in the sweeper cover region, and it found him to the nicety. But what good connection. It made a sweet sound as it flew off the bat. And this is where Vipul Sanghvi's experience is going to come into play. He needs to pick a wicket quickly. Oh, that's very smart from Vicky. Absolutely not giving any chance of a wicket to the opposition, and making sure that they get through these initial overs smoothly without any loss. The score is 18 now. We are into the fifth over. HMS Hard Hitters, the score is 18 and the target is 113. So 18 runs on the scorecard. They are closing in on the victory. They just need 105 runs. And it is Dharmesh. The name is actually misspelled. It is Dharmesh Salot. He is a crucial player. Came in little late to bat, but he is a very good bowler. He bowled very well yesterday, and I just love his bowling action. He just bowls like Ravichandran Ashwin. He just stops, starts and delivers. See, a very different, unique action. See, beautifully flighted. But that's nice. That's beautifully hit. These pictures are brought to you live by Bhavi Impex, Mr. Chitresh Udani, NK Trading, Mr. Master and Sri Sham Impex, Mr. Ajay Agarwal. Broadcasting team of GFSC, bringing you those live pictures from these beautiful grounds of Fatima. And this man, Dharmesh, has bowled well from yesterday. That's beautifully bowled and equally well played straight to the fielder. Some good quality stuff being on display, some good bowling and some very prudent batting by this man. He has not tried to beat the leather out of the ball, just tried to play some proper prudent cricket, where he understands the required 100 is just 105.5, which is 113 to get in 20 overs. So he's motoring along nicely, and he has got the majority of the runs. In fact, 70% of the runs which of the team has scored, they have been through Vicky's bat. Oh, that's a little harsh. That's outside the off stump, but the batter had just shuffled. But that's fine. So far as the umpires remain consistent, that's fine. The score is 20 now. But some great bowling by Dharmesh Shalot. He's flighting the ball, inviting the batsman to go for those big shot, just enticing them to give her the wicket. That's a quicker one, a shorter one. That is dispatched disdainfully into that region, into that backward point. Vicky has been super smart, street smart player. These kind of guys are very smart in their personal lives. Even these guys can get through any problem, just like KD Corporation. It's a fantastic KD Corporation boundary. What a shot that was. KD Corporation, 4 runs. Now Dharmesh, again all 3 good bowlers today have been handled very well by this team. There wasn't much swing in offer for Vatsal today. Vatsal was superb. In fact, every ball of Vatsal seemed to be like the one which would take a wicket away. But today he wasn't that effective because he was handled well by Vicky. If they get Vicky, they can have some dents in that team. Also they have Darshan Seth, who was fabulous yesterday. And just as Darshan was about to open the shoulders, he was out in 40s.
That's Vatsal. That's the superstar of this tournament. And don't just think about these youngsters who are 20-year-old or 19, 18 years old, 22, 23 years old. Understand these guys who are, some of them are in their 50s and they still bowl so very well. Also, they run splendidly big wickets. And the man on your screen, Deepak, even he has been the one. Sahil Parekh, the star, he has got a 50. Also, he got some 30, 35, 36 runs today. So he has been the one who is the highest scorer. Has been the lone ranger, and he was not out yesterday. He is not out today. So his average would be in somewhere in 90s. Easily, he is the best batsman on show in this tournament. But this man has been super smart. The man at the non-striking end. The score is 25. We are into the 5th over. Jinharsh Timken Ador Cup 2023 has been dominated mostly by bowling. Batsmanship has been good, far and few in between, but things can change. That's beautiful bowled, very well bowled. But easily negotiated. The run rate is 6.25 runs per over. The score at the end of 4 number 4 is 25 without loss. Ipsa Warriors, it is Viral, Pradeep and Sanjay Doshi. Ipsa Bearings Private Limited, also one of our premium sponsors. Of course, the sponsor of Ipsa Warriors team. Ipsa Warriors, they need a lot of help. They were superb yesterday. They need Vatsal to create some magic. They need Vipul Sangvi to give them the breakthroughs. Also, Dharmesh Salot, he has to be perfect online. Let's see whether this team in orange will prevail over the team in green. Also, we have an umpire in red hot form, the man from Oman. These two umpires. So the score is 25 now. 25 without loss. In fact, 5 overs. It is so exactly 5 runs per over, and the required run rate is 5.87. It would be Vicky on strike. That's a full toss, not handled that well. It should have been dispatched into that square leg region. Full toss probably is the only ball. If you play it with straight bat, you won't get that many runs. You have to use the cross bat or vertical bat, and in fact the horizontal bat, if you want to get a few runs, because cross batted shots are the best shots on full toss, and that may keep the ball safe even. That's beautifully bowled. What a good ball that is. Nicely flighted. This is how you should be bowling when you have a smallish target. Throw the bait. Doesn't matter even if you are hit for a boundary or a sixer. Create those chances. Get all those 12 wickets. That's the only way you're going to win this one. Try and create pressure. That's very well bowled, and he's handled all good bowling very well. Vicky is simply very, very good player, and he understands the game well. Not only technique, not only timing, not only talent. It has to be your temperament, which is crucial in chases like this in smallish totals. You need to bowl well and also bat with a mindset that you do not give any chance to the opposition. Oh, that's beautifully bowled again, but very well handled. That was a perfect ball he bowled. Nice, smooth left armer, giving it a rip, and the ball is moving. The best part about this pitch is it has helped the fast paceman and also the spinners. It has been a slightly slow wicket, but that's fine, because in this kind of tournaments, amateur tournaments, we don't want the ball to be bouncing too high so that it may injure some players. It is good that to have a which is true, and this is very good bowling. In fact, he hasn't conceded a run, and first 5 balls, every ball he has looked like creating some trouble against that batter. Vicky, who has handled him really well. He has taken majority of the strike. Out of 35 balls, 27 balls are bowled by this man. That's just as I was going gaga over this man, appreciating his good effort. He just spoiled his good over by bowling those 2 wides. The score is 27 now. 27 without loss. Last ball of the power play coming up. What a good over this was. Just spoiled by 1 ball which was drifting down the leg side. Scores 27. Required run rate is just above 6 now, 6.07, and the current run rate has dropped just below 5, 4.77 to be precise, 4.63 in fact.
That's a very good over coming to an end. The score at the end of over number 6 is 27. Two wides in this over, no runs of the bat. Very good over comes to an end. Viper Drive Industries, authorized dealers, Continent, Weapon Y1 Industries, Viper Drive Industries, attachment roller chain coupling, Lovejoy RB coupling. सात बॉल डाल. So the score is 27 now. It's going to be Dharmesh again. Dharmesh Salot. So 27 is what they have managed in the power play, and most importantly haven't lost a wicket. Vicky is smart and Samir has given him some great company. Almost gave his wicket away. Just I was saying he's very smart and prudent. He almost gave his wicket away. Shakleen Mushtaq started with this top start bowling. Then Ravichandran Ashwin also did the same. And Shoaib Malik of Pakistan bowls it that this kind of action, and so does Asif. He bowls with this kind of action. Sairaj Bhautali used to bowl leg spinners like this kind of bowling attack. Dharmesh, it's such one of the best bowling attacks of the tournament. They are not able to get through because of some very smart batting by Vicky and Samir. Vicky has been really smart. That's very well bowled, pulled from outside the off stump straight to the fielder at cow corner. Dragged it from outside the off stump. Oh, that will race away towards the boundary. Will it be stopped? Yes, some good footwork, back flick, just like Cristiano Ronaldo. A couple of runs added, just into that right corner for the Portugal team. The umpire just got saved. Wicketkeeper just apologizing. Man has come from Oman. He would have been sent to Oman packing back. Score is 31 now. Dharmesh Salot. He is into his second over. He is also a very handy bowler, a very effective one. Oh, how did that miss? That was very well dug out by Samir. In fact, Vicky it was. Samir comes on strike. The scoring has been kept under control. If they happen to have at least 70 runs in bank when they go into the last 10 overs, they will have something to fight.
even if they don't pick up wickets. That's very high. That will fall short of the fielder over there, Vatsal. The scoring, which was around 6, has dropped down to 5 and has come down to 4.5 now. So the score at the end of over number 7 is 33 without loss. They exactly need 80 runs in the next 78 balls, 6 runs per over and shade above it. So score is 33, and that's a no ball. There's going to be a free hit. Australia, they call it bucket ball now, just to add some new nomenclature to it. You can't be out on a no ball. Only way you can be out is on a free hit. All the rules which are applicable for a no ball. So you can be out, run out, handling the ball, purposefully coming into the way of the ball, those kind of things. That is distraction of field or obstruction of field, I would say. Handling the ball, and another way of getting out would be run out. Nothing other than that. So run out is basically the only way, or the obstruction to the ball, only way to get out on a no ball or a free hit. Some very good bowlers these guys have. Heman is good. You have Vatsal, then you have Vipul. You have possibly the best 4 opening bowlers in your side, but they don't have much in the bank. But still, I strongly feel this team might make a match out of this. Only thing is they need to get Vicky out, and for hard hitters, Vicky needs to prolong his innings. If he stays there for next 5-6 overs, Vicky will make sure that they are going to win this very comfortably. They need to get this man in the next 2-3 overs. The Vipsa Warriors. That's down the leg, so that has to be a wide. The score moves on to 36. What a shot that is. KD Corporation, humongous 6. What a shot. That's the reason I said he is dangerous, and he is just opening up and showing his complete repertoire of shots. What a shot that is. See, just smacked, opened his arms and deposited over long on. There was a very good fielder, challenged him and got him over that. Fantastic KD Corporation sixer. He wants to go again, he wants to be greedy, and he's got 30 out of 42 and few more extras. Samir won't mind it. It's not how many individual scores you have, or how many runs you make in partnership. Remember when Virat Kohli and Suryakumar Yadav plays, Suryakumar Yadav's run rate and scoring runs and number of runs is far greater than Virat Kohli's. He doesn't mind being the all-time great, one of the greatest of all times. Virat Kohli does not take it as on its ego. When he understands Suryakumar is going well, he safely negotiates the other end, and when he departs Suryakumar Yadav, and if Virat Kohli is there on streak, he takes the responsibility later on. So that kind of attitude is more important. It's never about I, it's always about we when you talk of a cricketing match. So a team's effort, the team's result, the team cause is more important than any other thing. So let's see. 44 for loss, no loss. He smacks it down the ground. That's going racing towards the boundary. This will be boundary. KD Corporation, cracking shot down the ground, straight down the ground into that long on region for a KD Corporation chokka. Jinay was superb. Kenil was superb, picking wickets after wickets in the first match, and so was this man. 4 wickets.
So the score is 48-48 at the end of it, exactly 6 runs per over, and the target is looking easier now for them. 65 runs needed from here on. That's a cracking shot down the ground. Even Samir is getting some more confidence, and that's good by these two good opening batters. They are just giving each other some fantastic company, and we might just see a second half story coming up of this tournament. First one was of course from Sahil Parekh. We might see a second one from Vicky as well. That's nicely bowled, equally well played. Score is 49 now. We are into the 9th over. He's a good bowler. Almost got his man, and he's out. Fantastic work by the wicketkeeper. What a great start by this man. And he has got almost 30% of the runs which were required. In fact, 25% of the runs which were required. Of the 113, he got 34. And he's got his team to a very strong position from where they can win this one. Let's see what the others do. Vicky has done the job, and in fact very well. Very street smart batting against some top quality bowling of this tournament. He has handled the pressure really well. Dharmesh coming once again. Oh, that's a very good ball. Oh my god, that was so very close. Only the height saving him. That was absolutely on the back foot. It had been little low, maybe a few inches, a couple of inches, maybe a few centimeters. Batsman would have been in danger. What a good ball that was. It was pinned onto the back foot. Only thing saving him was the height of the ball. That is good bowling. Vipul is a very good fielder, but even he can't stop them from going over for that single. What a good over this has been, a couple of runs, and he's got the important breakthrough of the batsman who was going really crazy. And they have this small opening now. They have that small chink in the armor which they need to make use of. They need to exploit and get their way back into this contest. The Bipsa Warriors. It's the last ball of a very good over by this man. Dharmesh, salute. What a good shot on the back foot, straight to the fielder though, but he's timing the ball well, trying to take responsibility after the departure of the opening batter Vicky, who looked really special. Score at the end of over number 9 is 50 for the loss of 1 wicket. Yes, live back now. The score is 50 for 1. They need exactly 64 runs to win this one from here on. They have just got that small opening. They've got the important wicket of the opening batter Vicky. Not before Vicky had taken them to a place of slight assurance, maybe more of that, and they might just win this one. But let's see, stranger things have happened.
One brings two, they say two brings three. Darshan Seth, he is probably one of the superstars of the tournament. Fantastic bowler, great fielder, and absolute wonderful with the bat in the hand. So batting, bowling, fielding, leading the team. He was the captain of a team last year. So this man is a very, very smart cricketer. He opened the inning in the last match, and he gets a gift to start with, and beautifully done. But there is some fielder, he should have gone for a big one actually. Smashed it, tried to place it. It was a full toss, nice height, nice loopy, slow full toss. Could have deposited it for a six as well. So the score is 53 for 1. 3 runs in this over so far, and Heyman is trying his heart out to get a wicket. The danger man is out, so he can view his magic. And that's some good fortune. Getting a leg by, he absolutely had no clue where the ball went. Score moves on to 54. They've got a single of every ball, 3 singles of the bat, 1 of the extras. But this is what HMS Hardy does would want. They would not like to go for big runs and lose wickets in heap, and then lose a match which they are most probably going to win. Why to give a chance to the opposition? Why give them a chance to make a comeback when you're already there to taste victory? Do not be merciful or sympathetic or complacent. Almost more than 3 feet away and also outside the off stump. So the score is 54 for 1. The last 2 balls of this over. That's nicely turned away. The ball is racing towards that wideish long on region for a single. He has looked very assured, very safe, this man, Darshan Seth. They have to pick this one of these 2 batsmen quickly. If not, if they want to win this one, they need to pick both of them. If not these 2, at least one.
तो नमस्कार और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। 10 ओवरों का खेल यहाँ पर हो चुका है। रन गति की बात करें तो 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 5.5 की औसत से अभी भी जीत के समीकरण की बात करें तो आने वाली 10 ओवरों में 5.80 की औसत से 58 रन की ज़रूरत, यानी आने वाली 60 गेंदें 58 रन क्या यहाँ से मुकाबले में वापसी दिला सकते हैं गेंदबाजी के माध्यम से। HMS हार्ड हिटर्स बनाम विप्सा वॉरियर्स, इन दो टीमों के बीच चलता हुआ ये मुकाबला। समीर शाह मैदान के अंदर डटे हुए है डॉक्टर दर्शन सेठ। दो मंजिले हुए खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर है। और HMS हार्ड हिटर की अगर बात करें तो मैं कहूँगा इस वक्त ऑन अ ड्राइविंग सीट, क्योंकि 55 रन आ चुके हैं 5.50 की औसत से। 10 ओवरों का खेल यहाँ से अभी भी आना बाकी और 58 रनों की ज़रूरत। मुकाबला पूरी तरह से आगोश में लेने का प्रयास होगा इन दो खिलाड़ियों के बीच। यदि पार्टनरशिप यहाँ से होती है तो ज़रूर यहाँ से इस मुकाबले में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अपने आप को पाएंगे, लेकिन यही समय है यहाँ से अगर विकेट अर्जित करते हैं, क्योंकि ड्रिंक्स ब्रेक यहाँ से होता हुआ, ड्रिंक्स ब्रेक में कप्तान अपने खिलाड़ियों के साथ ज़रूर यहाँ पर वार्तालाप करते हुए और आने वाली 10 ओवरों में यहाँ से किस तरह की रणनीति होगी। देखिए इस बार अच्छी गेंद थी, बॉलर्स बैक ड्राइव करने का प्रयास, सीधी गेंद पिच होने के बाद काफ़ी तेज़ी से अंदर की तरफ गेंद आई, सीधे बल्ले से इसे खेला। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी सक्षम है, टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग साउंड करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और किसी भी तरह का अतिरिक्त प्रयास नहीं है। जिस तरह की गेंदें हैं, गेंदों को मेरिट के हिसाब से खेलना, ये सबसे बड़ी मैं कहूँगा कि प्लस पॉइंट होगा इन दोनों खिलाड़ियों के लिए। तेज गेंद थी, इस बार मिस कर गए, शायद पिचिंग आउटसाइड द लेग स्टंप थी ये गेंद। ड्राइव लगाना चाहते थे दर्शन सेठ, हालांकि लेग स्टंप पर पिच होती हुई ये गेंद थी। गेंदबाजी की अगर बात करें तो वत्सल अपने निजी स्पेल का तीसरा ओवर यहाँ से करते हुए, उनका फिगर अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकली अच्छी गेंदबाजी हुई है। 2.1 ओवर 11 रन। हालांकि विकेट का कॉलम अभी भी खाली है, इस विकेट के कॉलम में 1 या 2 विकेट अर्जित करना चाहेंगे बची हुई गेंदों में। और अगर इस ओवर में वापसी दिलाना चाहते हैं तो एक आध दो विकेट अगर अर्जित करते हैं। इस बार देखिए अच्छी गेंद, जैसे हमने कहा कि इस ओवर में विकेट आना जरूरी है, ड्राइव लगाना चाहते थे, मिस कर गए लाइन को, और ये बड़ा विकेट यहां से आता हुआ, एक्सल वाइपर ड्राइव विकेट। देखिए विकेट यहां से आता हुआ बेहद लाजमी, वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज प्रेजेंट्स एक्सल विकेट, मच नीडेड विकेट, क्योंकि यहां से अगर वापसी दिलानी है अपनी टीम को तो विकेट आना बेहद लाजमी होगा। और यही किया गेंदबाज ने, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का ये रिवॉर्ड उन्हें मिला है, क्योंकि लगातार विकेटों के बीच गेंदबाजी कर रहे थे। और यही सोच थी मन में कि यदि यहां से लाइन को मिस कर जाते हैं बल्लेबाज तो एक अवसर, एक सुनहरा अवसर जरूर बन सकता है विकेट लेने का। नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर समीर शाह। इन एट नंबर 4 समीर शाह, निगम शाह, सॉरी, वत्सल को यहां से विकेट आता हुआ। जैसे हमने कहा कि विकेट का कॉलम भरना चाहेंगे यहां पर, क्योंकि इससे पहले 0 था, अब 1 विकेट उसमें आती हुई। अभी भी इस ओवर की गेंदें बची हुई और प्रयास होगा, भरसोर प्रयास होगा, क्योंकि विकेट लेकर ही आप इस मुकाबले में वापसी दिला सकते हैं अपनी टीम को। अभी भी आने वाली 3 गेंदें, अब फील्डिंग में तब्दीली होती हुई, फील्डिंग में बदलाव होता हुआ। 57 गेंदें 57 रन, अब लगभग 6 के औसत से रनों का पीछा करना होगा। 5.33 करंट रन रेट। और ये फ्लाइट देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, गुड जॉब कैमरा वर्क। JFSC लाइव के माध्यम से आप इस प्रतियोगिता को YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इस बार अच्छा गेंद था, सम्मान के साथ खेला इस गेंद को। सिंगल्स भी लगातार स्कोर कार्ड के ऊपर यदि आते रहे तो यहां से भी जीत का जो समीकरण है, देखिए 56 for 2। दूसरा विकेट पिछली गेंद पर खोया था और उसके बाद पूरे सम्मान के साथ इस गेंद को खेला। दर्शन सेठ अभी भी डटे हुए मैदान के अंदर। पहले पारी में हमने देखा साहिल पारेख ने काफ़ी चुनौती भरी पारी खेली थी, हालांकि लगातार विकेटें खो रहे थे
विप्सा वॉरियर्स, लेकिन एक तरफ से डटे हुए थे साहिल मैदान के अंदर। इस बार अच्छी गेंद सम्मान के साथ में खेला। देखिए सीधे बल्ले से आप जितना बल्लेबाजी करेंगे अपने टीम के लिए ये काफ़ी, क्योंकि फॉरवर्ड डिफेंसिव यहाँ पर देखने मिला। देखा गेंद की लाइन और लेंथ को लगातार विकेटों के बीच में प्रयास कर रहे हैं, विकेटों को हिट करने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है, और एक अच्छा फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक यहाँ से दिखता हुआ। निगम शाह इस वक्त मैदान के अंदर है, स्ट्राइकिंग एंड पर दर्शन सहित नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और वत्सल दोषी अपने पूरे स्पीड के साथ। इस बार थोड़ा सा रनअप में बदलाव करते हुए देखिए थोड़ा सा दिक्कतें ज़रूर उन्हें पैदा हुई थी, और शायद यही है एक अच्छी बात होती है, जब आप आपके रिदम से संतुष्ट नहीं है तो आप रुक दीजिए अपने आप को। वही किया, अपने आप को रोका, और फिर एक बार उसी तेजी के साथ उसी उत्साह के साथ। इस बार फुलर लेन की गेंद थी, बेहतरीन गेंद, और क्या कहना गेंदबाजी का। देखिए अपना सर पकड़ के वहां पर बैठ गए कि ये गेंद कैसे छूटी, क्योंकि ये शायद विकेटों से टकराना चाहती थी। कुछ ज़्यादा स्विंग वहां पर देखने मिला, तो अच्छा प्रयास है। लगातार विकेटों के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं, और रन गति की अगर बात करें तो 56 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। अब जो जीत का समीकरण है धीरे धीरे बदलता हुआ, अब आने वाली 55 गेंदें और जीत के लिए 57 रनों का लक्ष्य। हर ओवर में ये प्रेशर अगर यदि आप क्रिएट करते हैं तो ज़रूर यहाँ से मुकाबले में अपने टीम को वापसी दिला सकते हैं। अब यहाँ से स्पिन को इंट्रोड्यूस करते हुए जयेंद्र गेंदबाजी के लिए आए हैं। स्पिन के माहिर गेंदबाज माने जाते हैं, खासा एक्सपीरियंस है इनके पास, और स्पिन का जो जाल है वो बिछाने का प्रयास अब यहाँ से होगा, क्योंकि धीमी गति की जितनी गेंदें आएगी बल्लेबाजों को उतनी ही दिक्कतें होगी। दोपहर का सत्र यहाँ पर चलता हुआ, विकेट पूरी तरह से खिली हुई, और गेंदबाजी में ये तब्दीली है। लेकिन इस तरह की गेंदें आपको ज़रूर नुकसान पहुंचा सकती है। आपको लाइन और लेन के साथ, कंसिस्टेंट लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करनी होगी। देखिए यहाँ से जैसे ही मौका मिला, पहला रन का भी तेजी से लिया था, और यही कारण है कि दूसरा रन यहाँ पर मुकम्मल होता हुआ। इन 2 रनों के साथ टीम के टोटल की अगर बात करें तो तब्दीली यहाँ पर जरूर होती हुई आने वाली। अभी भी पहले गेंद के ऊपर 2 रन आए, 58 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब स्ट्राइकिंग एंड पर है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। देखिए इस बार अच्छी गेंद थी, फ्लाइट जरूर दिया था, ललचाने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है। बल्लेबाज को पॉपिंग क्रीज के बाहर खींचने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि विकेट कीपर विकेट से काफ़ी सटे हुए खड़े हैं वहाँ पर, और कोई भी चांस बनता है अगर बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के बाहर निकालने में कामयाब रहते हैं तो शायद वहाँ पर एक मौका बन सकता है। तो लगातार विकेटों के लिए कोशिश अब होती हुई, एक लेफ्ट हैंडेड एक राइट हैंडेड 2 बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर है, तो खासी मशक्कत करनी पड़ रही है गेंदबाज को भी। लेकिन स्पिन गेंदबाजी का जो जाल है यहाँ पर जरूर बिछाना चाहेंगे स्पिन गेंदबाजी के साथ। रन गति जो है, इस रन गति को, ये देखिए एक और अच्छी गेंद, और शायद यहां से विकेट आता हुआ, विकेट लगातार गिरते हुए यहां से। ये वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज प्रेजेंट एक्सेल विकेट है यहां से आता हुआ, मच नीडेड विकेट। क्योंकि विकेटें लेकर, मैंने शुरू में ही कहा था कि विकेटें लेकर ही आप अपनी टीम को इस मुकाबले में वापसी दिला सकते हैं। अगर गेम में आपको वापस आना है तो लगातार इंटरवल पर आपको विकेटें लेनी होगी, और यही काम बखूबी करते हुए गेंदबाज जयेंद्र को मिलती हुई सफलता अपने स्पेल के तीसरी गेंद के ऊपर पेविलियन की ओर आते हुए बल्लेबाज। तो तीसरा विकेट यहां पर खोया है हार्ड हिटर्स, एचएमएस हार्ड हिटर्स टीम का। और रनों की अगर बात करें तो 59 रन ऑन अ स्कोर कार्ड। न्यू बैट्समैन इन, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर होते हुए ये देखिए इक्वेशन आने वाली। अभी भी 51 गेंदे और 54 रन की जरूरत है इस मुकाबले में। दर्शन आने वाले हर एक खिलाड़ी को यही समझाते हुए कि आपको केवल यहां पर विकेटों के ऊपर खड़ा रहना है, क्योंकि रन
आएंगे, जब आप विकेटों के ऊपर खड़े रहेंगे तो रन आएंगे। नए बल्लेबाज राकेश सिंघवी इस वक्त मैदान के अंदर, एक और जेन्युइन ऑलराउंडर, लेकिन स्पिन का जो जाल बिठाया था शायद अब उसमें खिलाड़ी फंसते हुए, और एक अच्छा मूव था स्पिनर को इंट्रोड्यूस करने का जो फैसला यहां पर किया गया था। तो ये मैं कहूंगा विकेट अर्जित की है गेंदबाज जयेंद्र ने। तो एक अच्छा मूव, क्योंकि जितनी धीमी गति से गेंदें आएंगे बल्लेबाजों को उसके ऊपर प्रहार करना उतना ही मुश्किल होगा, और खास करके ऐसे समय पर जहां पर आपने लगातार 2 विकेटें खोई है, तो ऐसे समय पर कोई भी बल्लेबाज आक्रामक रुख नहीं अपनाएगा, और इसका फायदा जरूर जितने ओवर्स आप यहां से निकालेंगे तो ये एक मैं कहूंगा कि जीत की ओर ले जाने में काफी अहम रोल अदा करेंगे यही गेंदबाज। इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास, बॉलर्स बैक ड्राइव, गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला और गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रनों के लिए। यह आता हुआ, सॉरी ये खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे तो मैच सिंगल आता हुआ। देखिए अब पहले सत्र में अगर हम देखा पहले 10 ओवरों में तो इस तरह की गेंदें बाउंड्री पार हो सकती थी, लेकिन अब जो खिलाड़ियों के अंदर जोश है, अब जो एक अलग एनर्जी लेवल है, खिलाड़ी काफी दूर से आए थे, उस गेंद को रोका था। और रनों की बात करें तो 59 रन। ये आउट ऑफ रीच थी, अवे फ्रॉम द बॉडी, पिच होने के बाद गेंद सीधी निकली। शायद बल्लेबाज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये गेंद शरीर की तरफ आएगी, लेकिन पिच होने के बाद ये गेंद सीधा निकली। तो वाइड का इशारा यहां से आता हुआ। ये अच्छी गेंद, सम्मान के साथ में, पूरे सम्मान के साथ में इस गेंद को खेला और हल्के हाथों से इस गेंद को खेला था। बल्लेबाज भली बात ही जानते थे कि यहाँ पे सिंगल है, खिलाड़ी थोड़ा सा डीप में खड़ा है, तो उसका फायदा उठाते हुए सिंगल आखिरी गेंद के ऊपर यहां से आता हुआ। रनों की अगर बात करें तो 12 ओवर का खेल यहां से हो चुका है समाप्त, और कुल स्कोर है 62 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। सो ये हमारे सभी स्पॉन्सर्स आपने देखे जिनके बदौलत इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में हमारे आयोजकों के लिए काफ़ी कुछ अहम योगदान रहा, इन सभी मान्यवर स्पॉन्सर्स का। चलते हैं फिर एक बार मैदान की ओर। 12 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है 62 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए। हालांकि 3 विकेटें ज़रूर खोई है, लेकिन संयम दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर। ये अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ गेंद आई, हल्का सा अपील ज़रूर वहाँ पर हुआ, लेकिन उस अपील में देखिए अंपायर का इशारा लेग बाय का आता हुआ। उस अपील में उत्साह ज़्यादा, आत्मविश्वास की कमी थी। पैड से ज़रूर गेंद टकराई थी, लेकिन इम्पैक्ट अगर देखें तो आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी और विकेटों को मिस कर रही थी। ये भाप लिया अंपायर्स ने, दोनों ही काफ़ी मंझले हुए अंपायर्स हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस अंपायर है। 62 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। इस बार अच्छी गेंद, कट करना चाहते थे इस गेंद को। गेंदबाजी की बागडोर इस वक्त संभालते हुए साहिल पारेख, जिन्होंने बल्ले के माध्यम से काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया, आखिरी समय तक मैदान पर डटे रहे और एक सम्मानजनक स्कोर तक अपनी टीम को जरूर पहुंचाया है। जीत के लक्ष्य की अगर बात करें तो 113 रनों का लक्ष्य हासिल करना है। 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, अभी भी 50 रनों की जरूरत आने वाली 47 गेंदों में। ये आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद लगातार, एक देखिए एक गेंदबाज है जो लगातार विकेटों के बीच गेंदबाजी करते हैं, विकेट लेने का प्रयास होता है, और एक गेंदबाज है जो कि लगातार डॉट गेंदें करने में ज़्यादा विश्वास दर्शाता है। तो ये सेफ जोन में गेंदबाजी करते हुए चौथे या 5वें स्टंप के ऊपर गेंदबाजी हो रही, जहां से बल्लेबाज को किसी भी तरह का हाथ खुले करने का मौका नहीं देते हुए, जितनी डॉट गेंदें आएंगी उतना प्रेशर बिल्डअप होगा, और जब प्रेशर बिल्डअप होगा तो विकेट
लेने का जरूर। यहां पर देखिए पहली दो गेंदे वाइड आउटसाइड द ऑप्शन और उसके बाद गेंद अंदर की तरफ आती हुई लाइन को मिस कर गए। एक और विकेट यहां से आता हुआ। वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज प्रेजेंट्स एक्सल विकेट नंबर 4 आउट फ्रॉम द ग्राउंड। ये देखिए OUT आउट, विकेट यहां से खोया। क्लीन बोल्ड, बेहतरीन, मैं कहूंगा बेहतरीन गेंदबाजी। पहले दो गेंद जाल बुना था पहली दो गेंदों पर और शायद यही सोच रहे थे कि ये भी गेंद आउट स्विंग होकर बाहर की तरफ जाएगी, लेकिन ये गेंद पिच होने के बाद अंदर की तरफ आई और एक विकेट अर्जित कर दी। तो बेहतरीन स्पेल यहां से साहिल अपने पहले ही ओवर में विकेट अर्जित करते हुए। अब नए बल्लेबाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर योगेश शाह इस वक्त मैदान के अंदर। देखिए हालांकि गेंदबाजी में कुछ खास असर नहीं कर पाए, विकेट टेकिंग एबिलिटी जरूर है, लेकिन आज उनका कॉलम विकेट का खाली रहा। थोड़े से इकोनॉमिकली महंगे भी साबित हुए, लेकिन अब बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूट करना होगा। और ऐसे समय पर एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी अगर आपका मैदान के अंदर हो तो इस सिचुएशन को हैंडल जरूर किया जा सकता है, क्योंकि रन आएंगे। यदि आप विकेटों के ऊपर खड़े रहेंगे तो रन जरूर आएंगे। और यही कुछ गलतियां बीच वाले समय में हम देखे, 4 विकेटें खोई, एक वेल सेट बैट्समैन आउट हुआ और उसके बाद लगातार 3 विकेटें खोई। और सराहना करनी होगी। देखिए इस तरह की लो स्कोरिंग मैचेस में हमेशा उत्साह बना रहता है। जब भी विकेटें गिरती है तभी वापसी के दरवाजे भी खुले होते हैं और वही करते हुए ये दो गेंदबाज। साहिल इस वक्त फिर एक बार वही जाल बुनने का प्रयास, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद। हालांकि इस गेंद को थोड़ी ऊंचाई दी थी, हवा दी थी इस गेंद को थोड़ी, और तेजी से भी की थी। तो अच्छा मिश्रण अपनी गेंदबाजी में करते हुए 13वां ओवर पारी का यहां पर चलता हुआ 63 स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी जीत की अगर बात करें तो आने वाले 43 गेंदे यानी 43 बॉल्स 50 रन रिक्वायर्ड टू विन। गेंद और रनों में अब 7 का अंतर यहां पर हो चुका है। इस फासले को बढ़ाना चाहेंगे इस बार। देखिए अच्छी गेंद थी, सम्मान के साथ खेला सीधे बल्ले से। तो पारी का ये 13वां ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ 63 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। तो ये थे हमारे कुछ स्पॉन्सर्स जिनके बदौलत हम इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में कामयाब रहे। जिनहर्ष टिमकिन एडोर कप 2023 सीजन 4। अब मुकाबले में रोमांच यहाँ पर बढ़ता हुआ और गेंदबाजी में भी दर्शक सलौत गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए एक विकेट जरूर अर्जित कर चुके हैं अपने स्पेल का। ये शायद आखिरी ओवर यहाँ से करते हुए 3.1 ओवर 16 रन 1 विकेट। क्या यहाँ से विकेट अर्जित करना चाहेंगे? ज़रूर कोशिश होगी और यहाँ से अगर कामयाबी मिलती है गेंदबाज को तो मुकाबले में मज़ा बरकरार रहेगा। दो मोस्ट एक्सपीरियंस खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर हैं और इनके बीच एक पार्टनरशिप होना बेहद लाजमी होगा। यदि इस मुकाबले में जीत की ओर अग्रसर होना है तो यहाँ से आपको एक पार्टनरशिप बिल्डअप करनी होगी। दोनों ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, भली बात ही जानते हैं इस तरह की सिचुएशन में किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है। इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, फ्लाइटेड गेंद थी, थोड़ा सा संयम यहां पर रखना होगा। देखिए यही समझाते हुए नॉन स्ट्राइकिंग एंड से डॉक्टर दर्शन, जो कि इस तरह के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज माने जाते हैं,
इस बार थोड़े दिशा से भटके, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी। देखिए स्माइल है उनके चेहरे पर भी, जानते हैं कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी। वाइड का इशारा यहां से आता हुआ। रनों की अगर बात करें तो 65 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। अभी भी 40 गेंदे 48 रन, अब फासला बढ़कर 8 रनों का हो चुका है। दर्शन से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर है द वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस योगेश शाह इस वक्त मैदान के अंदर। हालांकि अभी भी अपना खाता नहीं खोल चुके हैं, 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, लेकिन इस बार क्या खाता खोलने का प्रयास था। बड़ा हिट लगाना जरूर चाहते थे, लेग स्टंप पर गेंद थी। समय ले रहे पूरा, और लेना भी चाहिए क्योंकि काफी कुछ बचा हुआ अभी भी इस मुकाबले में। जरूर लो स्कोरिंग मैच है अब तक का, देखा जाए तो ये इस श्रृंखला का सबसे लोएस्ट टोटल। इस बार अच्छी गेंद थी और इस सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए पहला रन अर्जित किया है अपने रनों के कॉलम में, और इस 1 रन के साथ एचएमएस हार्ड हिटर्स पहुंच चुके हैं 66 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 7 के ऊपर अब पहुंच चुका है, 7.42 रिक्वायर्ड रन रेट। और करंट रन रेट की बात करें तो 5 से नीचे आता हुआ, यानी 4.83। आने वाले 38 गेंदे, 38 बॉल्स, 47 रन टू विन। और दर्शक चाहेंगे आखिरी 2 गेंदे, 2 गेंदों में 1 विकेट, और ये बड़ा विकेट है क्योंकि अगर दर्शन सेठ का विकेट यहां से लेते हैं तो मुकाबले में मैं कहूंगा कि वापसी का बिगुल जरूर बचा सकते हैं। तो कोशिश होगी आखिरी 2 गेंदों के ऊपर, लेकिन दर्शन सेठ भी मंजिले हुए खिलाड़ी है। देखिए बैकफुट पर गए, बॉडी वेट को ट्रांसफर किया और इस गेंद को केवल गाइड किया बल्लेबाज ने बैट का फेस ओपन करते हुए। 2 खिलाड़ी जरूर वहां पर मौजूद थे, गेंद को रोका गया और इसी बीच 2 महत्वपूर्ण रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए। देखिए एक एक रनों के लिए संघर्ष अब मैदान के अंदर होता हुआ, यही क्रिकेट है। शुरू में ऐसे लगा था कि 113 रनों का जो जिस तरह से ओपनिंग स्टैंड दिया था दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने, ऐसे लग रहा था कि शायद आसानी से इस मुकाबले में जीत हासिल करेंगे, लेकिन वापसी दिलाई गेंदबाजों ने, लगातार विकेटें अर्जित की और उसका रिवॉर्ड मिलता हुआ। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद ड्राइव किया अलॉन्ग द कारपेट डीप मिड ऑन में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। ओवर नंबर म्यूजिक नहीं तो 14 ओवर का खेल यहां से समाप्त होता हुआ 69 रन ऑन द स्कोर कार्ड फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। सो वेलकम बैक। यहां से पारी का 15वां ओवर चलता हुआ, फ्लाइटेड गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे, बेहतरीन शॉट यहां से आता हुआ। देखिए कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं और ये गेंद सीमा रेखा को चीरते हुए आता हुआ। केडी क्रिएशंस 4 रन। केडी कॉरपोरेशन बाउंड्रीज यहां पर आते हुए, मस्ट नीडेड बाउंड्री, क्योंकि दबाव बना लिया था पिछले कुछ ओवरों में, लगातार विकेट हो रहे थे, रन्स नहीं आ रहे थे, तो इसका प्रेशर बिल्डअप हुआ था।
और मैंने जैसे ही शुरुआत में ही कहा कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर ऑफ दिस साइट, HMS हार्ड हीटर्स, और अनुभव पूरी तरह से अपनी टीम को इस विपरीत परिस्थिति में भी संभालने का प्रयास कर रहे हैं, सम्मान के साथ खेल रहे हैं, अच्छी गेंदों को सम्मान दे रहे हैं, खराब गेंदों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो यही करना होगा लगातार मैदान के अंदर और डटे रहना होगा एक साइड से। इस बार अच्छी गेंद थी अंदर की तरफ आती हुई, इन स्विंगिंग यॉर्क की तरह ये गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा। ये देखिए ड्रिल भी कर रहे हैं बल्लेबाज, भली बातें जानते हैं कि एक अच्छा मौका था, फुलर लेन की गेंद थी, इस गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन बैट से ये गेंद टकराई, रनों की संभावना को समाप्त किया। डॉट गेंद और अच्छी वापसी गेंदबाजी के माध्यम से 74 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। अभी भी जीत की अगर बात करें तो करंट रन रेट 5.10। ये अच्छी गेंद थी, यहां से देखिए विकेट आता हुआ, बल्ले का बाहरी किनारा, ड्राइव करना चाहते थे और लाइन को पूरी तरह से मिस कर गए। उतनी ही बेहतरीन विकेट कीपिंग का मुजाहरा। वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज प्रेजेंट एक्सल विकेट यहां से आता हुआ, विकेट नंबर 5 मैदान से बाहर। प्रतीक शाह, मिस्टर राहुल शाह, वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज विकेट, मच नीडेड विकेट। विप्सा वॉरियर की अगर बात करें तो विकेटों की जरूरत थी और वही विकेट। और नए बल्लेबाज इस वक्त सागर मेहता। देखिए एक और अच्छे खिलाड़ी मैदान के अंदर आते हुए, क्योंकि जिनके अंदर क्षमता है, काबिलियत है, और इस तरह के मुकाबलों में आपको संयम के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। उदाहरण आपके सामने है दर्शन सेठ, जो कि आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं लेकिन संयम के साथ मैदान के ऊपर। देखिए काफी काम एंड कूल है, और ऐसे ठंडे दिमाग से इस सिचुएशन को यदि आप हैंडल करते, आने वाली 2 या 3 ओवर मैदान के ऊपर डटे रहते हैं, तो आखिरी ओवरों में जरूर इस जीत के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। 74 ऑन द स्कोर कार्ड फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। अभी भी 7.31 की औसत से रन गति, रिक्वायर्ड रन गति की अगर बात करें तो आने वाली 32 गेंदें और 39 रनों की जरूरत। गेंदबाज साहिल पारेख, बल्लेबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन, अपने पारिक का, अपने स्पेल का ये दूसरा ओवर यहां पर करते हुए, और क्या बेहतरीन स्पेल है। पहले बल्लेबाजी में अपने बल्लेबाजी के जौहर दिखाए, अब गेंदबाजी में अपनी काबिलियत को प्रूव करते हुए यहां पर एक जेन्युइन ऑलराउंडर, और काफी बड़ा योगदान रहा इस मुकाबले में। यदि बात करें तो अभी भी मुकाबला में बहुत कुछ उलटफेर होना बाकी है। एक और अच्छी गेंद, देखिए पूरे सम्मान के साथ में खेला, 2 ओवरों का स्पेल खत्म कर चुके हैं, और ये स्कोर कार्ड आपके सामने। 5 विकेटें खोई है, यानी लगभग आधी टीम पेवेलियन लौट चुकी है। 15 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, और 74 ऑन स्कोर कार्ड। काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला बनते जा रहा है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम नाउ. एक्चुअली द मैच वाज कंप्लीटली लुकिंग वन साइड. They have made a match out of it now. There are few good players. In fact, the best 2 players of the team are right over there, Darshan Seth and Sagar Mehta. Sagar Mehta played brilliantly yesterday, and Darshan Seth was absolutely spot on when it comes to batting and bowling. He is their most important player. Almost looks like Gautam Gambhir. He just stands there and stays focused till the end. Even yesterday he played. Oh, that's a big chance, but it falls in no man's land. That's a calculated shot which he has played, and he has played the shot in that no man's land. And it can be really interesting. Now if it goes for an over in which they give away just 2-3 runs, it's going to be very interesting, because 4 overs and maybe 32 runs, then we can have 3 overs and 27 runs, 2 overs and 20, anything can be possible. The next 2 overs, if they happen to give anything less than 6 runs per over, maybe 10 or 11 runs in the next 2 overs, it's going to be very interesting, because that will make the run rate closing on to 9, then 10, anything can be possible. So next 2 overs are going to be crucial.
in this match. The match may look very simple to you from this point of time, but things can change and change dramatically. Let's see whether Jayendra, that's beautiful bowling. That's beautiful bowling. And Darshan understands the magnanimity of the situation. Now he understands the seriousness of the situation. He understands that if you take this match too lightly, Sagar is a fantastic player, but if he is kept quiet and if he is tied down, things can become very difficult. Sagar is a brilliant batter. He can finish this match in 2 overs, but for that to happen, he need to show some positive intent. Right now, his job is to just rotate strike. Darshan will take care of the faster scoring. That's good. That's good. Oh my God, that's a very big wicket. That's a tremendous wicket. Extremely important XL wicket powered by Viper Drive Industries that has wiped out the best batsman, the most attacking youngster of the opposition. Now it's going to be Darshan Seth and the other partners to do the job. It's a big throw. You have got the man Sagar Mehta, the opposition star player, out without troubling the scorers. That's a huge wicket. That's what happens when you just try and block a few, but you could have done maybe along the carpet, but that was a good choice of shot. Execution wasn't great. That's the wicket, which XL wicket powered by Viper Drive Industries. He is the man who has done a good job with the ball in his hand. Yesterday came down at number 10. That's a good choice of player to have, and his presence would be important. Jinai, he looked very calm yesterday. He was sent at number 10. I don't know what the thinking was behind it, but this is fine. He could have come a place higher maybe, but that's fine. They have some good players to handle the batting, and that first wicket of Vicky was so crucial. 75 for 6 in 15.3, remaining 27 balls. That's what I was talking about a few seconds back. The run rate, which is hovering around maybe 7.9 runs per over, it will shoot up to 8.5, then 9, then 10, and then things can be difficult. That's what our co-commentator Praveen Arjun sir was accentuating, that this can be a match out of this. So 75 for 6 in his predictions for this match are coming absolutely true. Just as they took the back seat, scoring has changed. 75 for 6. Oh, that's another opportunity. Will it be another wicket? Oh yes, it is. Vatsal, it is. Vatsal Doshi for Vipsa Warriors. Vipul, Pradeep, Sanjay Doshi, all would be jumping up and down in their offices with their team's performance. It's another XL wicket sponsored by Viper Drive Industries. 2 big wickets back to back. He is pretty dangerous batsman. He is sent back. Jinai, he also does not trouble the scorers, and all of a sudden this match has turned upside down, and out of nowhere the team in saffron is spanging back and coming back with a bang this time. So XL wicket sponsored by Viper Drive Industries. This is what is life. This is what is cricket. Unexpected things can happen. Out of nowhere they had absolutely zero chance. In the Hindi they say Arsh se farsh par aa jana. It has been a different kind of situation over there. They were right on the top and they have come rocketing down and in deep trouble. The only point of solace is Darshan abhi bhi hai. So Darshan Seth, who is a dentist, he is known for reconstructing your dentures. He has to reconstruct this innings and take his team through. Very cool and calm person to have in this kind of situation. He's a very fiery cricketer, but he remains calm in such situations. 75 for 7, just a run and 2. That's what, he's just gold dust, this man Jayendra. He's on a trick. The senior pro, what a good over. This has been just a couple of runs and he's got 2 wickets. Fabulous work, and his figures look unreal. His figures read 1.5 overs, 3 wickets and just 8 runs conceded. 76 for 7. The equation has become very interesting now. 37 runs in the next 25. The run rate of almost 9 runs per over. 8.88 to be precise. That's what I was talking. It might go to 9, then 10, then 11. So this was the one which has caused all that trouble. The score at the end of over number 16 is 76 for 7. They need exactly 9.25 runs per over needed from here on. 4 overs and 37 runs to win.
Access Technologies, QLS model, quality products for quality users. And this is a big name in this sector. QLS, Linear Motion Technology. Access Technology imported in sockets of all linear motion bearings. Back live, we are. The score is 76 for 7. For 24 balls remaining in which to get these runs. 9.25 runs per over. Can you imagine how things have changed? And Sahil Parekh has been the one who has been instrumental. He has been a player like Bitcoin. Now, right now, we don't talk about Bitcoin because Bitcoin is falling down very badly. But this man is like gold dust. Forget about gold dust. He's just like platinum to his team. He has got runs with the bat in hand. 2 matches. He has got almost 80-85 runs, 90 runs not out in both the innings. Also, he has bowled well in the previous match. He has bowled brilliantly in this match. 2-5. It is not some football scorecard with Argentina 2 and Netherlands 5 or whatever. It's really interesting now. Really interesting. Kenil is a good player. The Kenil and Darshan, Kenil Shah, Darshan Shah, Jinay, all 3 good players. They have a very strong batting lineup, but that can happen. That can happen if you have too many sons, 4-5 sons. You feel one son is going to take care of the other son. All 5 don't take care of the parents at times. So too many also is a trouble at times. So too many batsmen in the team, it's a problem of plenty, and nobody is shouldering the responsibility right now except for that man on your screen, Darshan Said. He is their man savior. He is their man Friday. Let's see whether he gets his team through. Very interesting match this is. 36 needed of the... Oh, this is brilliantly played. Beautiful deft touch. The ball is racing towards the fine leg region for the KD Corporation. Fabulous boundary. KD Corporation boundary coming in at the right time, at the right place. Oh, that's the 4 which the team needed. The equation would be 32 needed now in the next 22. Still with that, even with that boundary, the equation is not that easy. The next 4 balls, even if they concede a run ball, that's what I was talking, 3 overs 28, 3 overs 27, that would make things a little interesting. Let's see the next 4 balls, and I don't think he's going to take a backward seat now. Even if I are getting a boundary, he might look out for one more. So they need 32 of 22. That's beautifully bowled. What a good ball that is. This man just keeps on surprising you. Just keeps on performing ball after ball. He's not that 6.5 feet tall bowler or a batsman. He's not one with strong muscles. He's not the one with super fast balls or skills of leg spinners or off spinners. He's just a bowler who bowls the balls in the right areas, but he's really effective. He has got 2 wickets as Sahil Parekh. Let's see whether he can get one more. That's again very well bowled, but this man has looked special. The man on your screen, Dr. Darshan Seth. The equation reads now they need 31 in the next 20 deliveries. Again a match which will go right down to the last over. Yesterday we saw 2-3 encounters which were completely lopsided, one-sided. We love to see matches which go on to the last over. This will go on to the last over. A low scoring, high voltage drama. This would be a very interesting encounter. That's an opportunity. It will fall in no man's land. They'll take the first one. That's the only run they are going to get. Very interesting. Now it becomes exactly 10 runs per over. Now the equation is going to come. 19 balls in which to get 30 runs, almost 10 runs per over, not exactly 10 runs per over. 1 ball remaining, 9.5 runs per over to be precise, 9.47. 30 runs in the next 19 balls. So 19 balls in which to get the remaining 30 runs. HMS Hard Hitters versus Vipsa Warriors. So as per our predictions, it has been come to 28 runs, 9.33 runs per over. That's what they got in the last 2 overs, 12 runs in 2 overs. So equation says 28 in the next 12 balls. DYZV bearings, leading industry in all such kind of
field switches, naming or bearing, application of bearings. And if you have any doubts, you want to get connected, there are these numbers, and for you, Mumbai, Ahmedabad, Delhi, there are a few numbers on which you can contact. DYZB bearings, those numbers on your screen, you can get into touch and get your required solutions. DYZB bearings. So that's what we deal into, and if you have any queries, please get into touch with us. These are your numbers on your screen: 983385. Let's come back to live action now. There are a lot of queries to be answered by these two batters over here, Kineel and Darshan. Kineel seems to be a smart player. They have a very strong batting line up to 8, 9, 10. Every batsman seems to be good. Let's see. Vatsal can be the game changer. Oh, what a ball that is! Beautiful Yorker! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 people this guy has got clean bowled so far, if I remember. In fact, 6, not 8, but 6 people clean bowled in 2 matches by this young man. And all Yorkers except for that first wicket which he got was of an in-swinging delivery. Another XL wicket powered by Viper Drive Industries. Mr. Pratik Shah and Rahul Shah would be very, very pleased with that kind of bowling. And Vipul, Pradeep and Sanjay Doshi, all three would be jumping up and down in their respective cabins seeing their team perform. Look at that man. Look at the profile photo of that man. He's a rock star. Hardik Shah. He comes into bat. And very, very jovial fellow. And fools around, makes a lot of fun. And such kind of people are very interesting. 17 balls in which to get 28 runs. It's almost 10 runs per over now. That's what I was talking about. Things can go like that: 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, and from 10 to directly to 12 within no time. I think if the over goes well, it would be 12 runs per over in the 2 overs. But so far as they have Darshan, they would have a chance. But why do I strongly feel Hardik would be the man to change this one? It's not Hardik Pandya, it's not Jay Shah, it is Hardik Shah. Jay Shah is the administrator, Hardik Shah is the Indian captain. Combination of their 2 names is Hardik Shah. One big administrator, one Indian team captain, Hardik over here, and a very, very stylish young man. Vatsal he has to face. The Ghatkopar Express. They have the Ghatkopar is not a station from where all big trains go, long distance trains, but the local goes from there. So not even the high speed trains stop over there. But still, this man, he is one of the fastest bowlers of this tournament. 19-20-year-old youngster, Vatsal Doshi. Hardik goes for it. There are no 2 half measures of it. What a big backswing that was. This is so interesting to watch now. 16 balls, 28 runs. They have made a match of it. The hard hitters have just made a mess of it. The Warriors have come back so strongly, courtesy some brilliance by Jayendra in the middle, and also some good bowling by Sahil Parekh. Also some brilliant stuff from Vatsal Doshi. Last 2 overs, 1.2 overs, he has conceded 1 run and has picked up 2 wickets. First spell he was 2 overs 11. Next spell 1.2 overs and 2 wickets for this young man. Oh, that is beautiful bowling. That is fabulous. That is super. That is scintillating. That is sensational stuff from Vatsal Doshi. What good piece of bowling that was. All the balls right on spot. Almost he's bowling a match winning over for this team. And Vipsa Warriors, who were on the verge of a probable loss, are strongly placed to win this one. 2 in a row, courtesy some brilliance from their bowlers Jayendra, and it was Sahil and Vatsal Doshi. He still has one more. In fact, this is his last over. Oh, he has gone very high. Has got the elevation. Has he got the distance? It falls in no man's land, and just a single, which will make things really difficult now. 27 in the next 14. So run rate which is hovering around 8, crept on to 9, crept on to 10, and it is closing on 12 to 13 runs per over. And if they get 3 runs, it would be 12 runs per over in the last 2, which is not going to be easy at all. "86 for 8.
That's beautiful bowling. They have got this chase little wrong. Vicky was so crucial. That's the reason I said Vicky's wicket was going to be crucial, because he's playing it very smartly. He negotiated the toughest part of the innings, the moving ball, the new ball, and he got fairly good runs in the first few overs. But afterwards, they got somewhat stuck over there. They became too defensive, and that's the reason they are in a spot of bother now. Exactly 12 runs per over needed here now. I think Hardik will be the man. Hardik, will he get some hard shots in? Oh, that's a beautiful Yorker. Beautifully dug out. They need 12.5 runs per over from here on to win this one. 25 runs in the next 12 balls. Jinharsh Timken Ador Cup 2023. It's that's not going to help. That's not going to help. So the score is 89 for 8. That's going to help the HMS Hard Hitters, not Vipsa Warriors. But this is what HMS Hard Hitters need. I would love to see Hardik win it for them. Hardik is on 2, one big sixer, and they would be right back into this context. But Sahil Parekh is a very difficult customer to hit sixes. That's brilliant stuff. And this would be a test for the doctor as well. The stage is set up for Darshan Seth to become a hero. He is already one of the best players, one of the most balanced cricketers of this tournament, and this is his moment of truth. This is where Darshan daring part has to come. Will Darshan be in his daring self? Will he dash his way through this contest? Will Darshan be the one who would be the daredevil, the dasher, the demolisher, the man who gets them their victory? Let's see. Next 11 balls, they need 23 runs. Almost 12 runs per over needed. Hardik is on non-striking end. The man who everyone is focused on is Darshan and Sahil. Two big players against each other. A fantastic cover drive. The ball is racing towards the covers region. They have to run for the second one. Hardik gets a little slow. That's the only fault of a handicap, when he cannot go for the quick doubles. Both of them are slightly slow. Not only Hardik, even Darshan is not the one who is too swift. But this is a match of one sixer, and they would be like in parity with the scoring. And it's not that difficult if you hit down the ground. These boundaries are big on the left and right hand side, cow corner, mid wicket, then covers. All these are big boundaries, but down the ground, those 50 meters boundaries, you can cross them. Oh, Darshani has hit a cracking cover drive. Will the ball race away for a boundary? No, in fact, it just goes and trickles down there, but they need a lot of this. Keep hitting them, you never know. 2 good shots in a row, and they might win this one. It's getting very interesting now. 20 needed of the next 9. They need somewhere below 14 in the last over. So if they want to win this one, something below 13, 12 is manageable. If it goes beyond 15, 16, 17, it becomes very difficult. 19, 20 is almost impossible. So you never know. 19th over is when the one India's biggest problem in 19th over. But here the 19th over is being handled very well by Sahil Parekh. The equation is now they need 13.33 runs per over. And the man on strike, Sahil, needs, in fact, Hardik is to need a sixer. Only 1 run.
They have bowled very well to him. They did not give the room to free their arms. That fuller length is not helped them to get that full swing of the bat on. So 8 balls in which to get 19 runs. This is difficult now. This is not easy now. Unless they get a boundary of the next 2 balls, maybe a sixer is fine. But even if they get a boundary, they'll be in that chance. They need a boundary of the next 2 balls. In fact, if they get 2 boundaries, that would be gold dust. They will seal the deal. But 1 boundary will keep in them in the match. 19 of the next 8. Oh, he has got the big man inside edge. Dragged on to the stumps. The big man is back. And that would be the biggest fish netted by the best all-rounder. The best all-rounder getting one of the best all-rounders of the opposition out. Darshan was the man who was hanging on there, clinging on. Jayendra, look at the smile on his face. He is patting him, but he has that cunning smile and he knows that they have got him. And even Vatsal, they understand Darshan Seth's importance. He is a pretty special player, Darshan. But what an unlikely victory. The ball swung late. After pitching, the ball just reversed a bit. Hardik, this is the time for you to shine. He is on the non-striking end. And will it be a fairy tale story? He hits 2 big sixes in the next over and wins it for them. 7 balls, 19 runs to win. Jinharsh Timken Ador Cup HMS Hard Hitters versus Big Sub Warriors. This has gone on to the last over. But unlike all the expectations, it has gone the other way round. It was expected that Hard Hitters would win it right, smoothly, convincingly, without any difficulties. Things have been exactly opposite. There wasn't a struggle all throughout first 7-6 overs after the chase were completely for the Hard Hitters, where Vicky was going along smoothly. After Vicky's departures, there was consistent dip in the scoring rate, lots of wickets falling in clusters after regular intervals, and now look at the numbers. They need 19 runs of the next 7 balls. Can you imagine? They need a boundary of this last ball. There are no 2 ways about it. Sahil Parekh is the bowler. And that's fabulous bowling. But that Hardik, should he keep strike? No. 6 balls, 18 runs to win. Who's the last bowler? Because Vatsal has finished 4. Even I don't know who's going to bowl that last over. So this is the team, Bhavin Vora. These guys have done a fabulous job of getting. One of these members of the committee is here. He is bowling the last over. Vipul Sangvi. Vipul Sangvi versus Jignesh and Hardik. Will Jignesh be the man who is the surprise package? You don't know. Last month was a Christmas month. Maybe the tall Santa in form of Jignesh might give you that gift. Oh, he's bowled it so very well. How did that miss the off stump? How did that miss? It missed the batter, it missed the stumps, and the wicketkeeper missed it too. Equation says 2 big sixes by Hardik and they'll be close. 3 sixes will seal the deal. 2 big sixes by Hardik. Time to test all those muscles. If it comes into his arc, the ball's going to travel. Because he looks determined, this man. And don't bowl in his arc. Keep it little away from him. Bowl a little short. He's very smart, but he has lifted it, but the ball is in that no man's land. And running won't help. Yes, they go for the second one.
I can't be doing all this. They get three. One, two, three. Tough job for Hardik too. Hardik comes on the non-striking end. We wanted him at the striking end, but Jignesh can also do that bit. So 14 needed. You never know, 15 needed. Strange things have happened in the last over. And if they continue to overthrow like this, the match will come closer. So whether only one run, they managed to give away 2 extra runs to the opposition. It's a month of January, so some freebies are given away in the form of New Year gifts. 21 required run rate. RRR. It's not a South Indian movie. That's the required run rate. 99 for 9. Unique numbers. That's not going to help. 100 up on the scorecard. They need 13 more in the next 3. They need Hardik to hit one ball out of this park. Swing that bat as hard as you can, Hardik. You never know. Don't watch the ball. Just close your eyes and swing it hard. That's how you can get it. Oh, Hardik goes for it. He goes big and oh, he has dropped him. How can he do that? Hardik meanwhile finishes his couple of runs. That was a good try, but the match is still on. 1-6 and things would become interesting. 11 runs of the next 2. It's all set for Hardik finish. He needs to gather some. Yeah, that's good. He's taken some time to take his breath back. Even if I was Hardik and if I am tired, I would go to the leg umpire and say, "Mera lace open करके वापस बांध दो आप." I just want some time, some moments back, so I get my breath back. He needs to all that energy. That was in his arc, but the slowness of the ball, he has to put all that weight behind the ball because he will not get that pace to work with. These balls are very difficult to hit, and he's very smart. Vipul, he's bowled brilliantly in the last over, and perhaps his fielders not helping him. There was one, they gave away 3. There was an opportunity of getting a batsman out, they gave away 2. So technically, he has considered just 2 runs in this over, but because of those misfields and those leg buys, the target is getting closer. 11 in the next 2. But that will, oh, that is racing out towards the boundary. What a shot into the covers. 4 runs. 1 ball, 7. Will these be all 3 results? 2 results possible, in fact. Now, HMS Hard Hitter draw. In fact, the draw or a Vipsa Warriors win. 1 ball, 7 runs to win. So, 2 results possible from here on. A Vipsa Warrior win is a certainty, but there is one more chance. If he gets a 6er, it would be the first tie of Jinharsh Timken Ador Cup 2023. Hardik just hit it hard. Will Hardik hit it hard? Will Hardik be the hero? It's stage set all for him. It has ideally gone on to the last over, and this tournament will go berserk. The whole of Ghatkopar would rejoice if it's a 6er. 1 ball, 7 to win. Oh, that's brilliantly bowled. Beautiful slower delivery. And every run is going to be important because the required net run rate is going to be accounted. So they win this one convincingly. They win this one by 6 runs. In fact, by 5 runs. So they managed to get 112, which wasn't sufficient, and they managed to defend it well and defend it convincingly. They win this one by 5 runs. So congratulations, Vipsa Warriors. They register 2 into hard hitters, played 2, won 1, lost 1. Yes, the man who has got those figures, 41 runs of 42 balls, 2 boundaries and a sixer, and bowling he bowled brilliantly. He's taken 3 wickets, ball with an economy of 5.2 I, and he has bowled 1 maiden over as well. Fantastic bowling from that man.
तो नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, दो सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर। पहले ओवर का खेल यहाँ से चलता हुआ, अच्छी गेंद पिच होने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली। देखिए एंगल के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, कोण बनाने की कोशिश यहाँ से हो रही है। और पहले 6 ओवरों में ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने का मन बनाकर ये दोनों ही खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर आते हुए। मुकाबला आज के दिन का दूसरा मुकाबला, शाम का सत्र। और एक अच्छी गेंद इसे पूरे सम्मान के साथ में खेला। इस प्रतियोगिता का आज का ये दूसरा दिन आप देख रहे हैं। जिनहर्श टिमकेन एडोर कप 2023 सीजन 4। टाइटल स्पॉन्सर जिनहर्श सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। और गेंदबाज, ये गेंद दिशा से भटके, थोड़ा सा अनुशासन से भटके, लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई गेंद। अंपायर का वाइड का इशारा यहां से आता हुआ। अतिरिक्त रन संख्या में वृद्धि। टीम के टोटल की अगर बात करें तो पारी का पहला ओवर डीपीएक्स डायनामाइट्स बनाम टीयूवीएक्स तूफानी, इन दोनों टीमों के बीच चलता हुआ ये मुकाबला। इस बार अच्छी गेंद थी, सम्मान के साथ में खेला, हालांकि डेंजर एंड पर थे खिलाड़ी। अली असगर शिकारी और जिगर, ये दो खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर। अलियास डीपीएक्स डायनामाइट्स बनाम टीयूवीएक्स तूफानी। द लास्ट ईयर डिफेंडिंग चैंपियन, लास्ट ईयर चैंपियन, दिस टाइम डिफेंडिंग चैंपियन। 2 runs on the scorecard. मिहिर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। ये अच्छी गेंद थी, पिच होने के बाद सीधा गेंद निकली। देखिए तेज गेंदबाज है। और शुरुआती समय में, क्योंकि ये शाम का सत्र है, यहाँ पर गेंदें लहराते हुए हमने काफ़ी दफ़ा देखे कि शाम के सत्र में गेंदें लहराती हुई। और पिच होने के बाद ये गेंद सीधा निकली। अब स्ट्राइकिंग एंड पर है बल्लेबाज। इस ओवर का ये दूसरा वाइड बॉल यहां से आता हुआ। पहले 3 गेंदें डॉट रही, फिर एक वाइड गेंद आई, उसके पश्चात एक सिंगल भी हमने देखा, फिर एक डॉट गेंद, उसके बाद ये वाइड गेंद आती हुई। गेंदबाज मिहिर इस बार ड्राइव लगाना चाहते थे, हालांकि शॉट एक कवर पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद। पहले ओवर का खेल यहां से समाप्त होता हुआ, महज 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो अच्छी शुरुआत टीयूवीएक्स तूफानी। थोड़ा उसका आवाज कम कर, खड़क वाले आए, चैनल चेंज कर देगा उनका आवाज कम करने के बाद। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर है 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हालांकि दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर, अली असगर शिकारी और जिगर। देखिए बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइकिंग एंड पर है जिगर, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। जिगर दिखाना होगा पहले 6 ओवरों में आक्रामक खेल। यदि पहले 6 ओवरों में होता है तो एक डिसेंट टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। पिछला मुकाबला हमने देखा 112 रन बनाए थे, 113 रनों का टारगेट था और उस मुकाबले को 5 रनों से जीता था। इस बार वाइड लाइन की गेंद थी, विकेट कीपर डाइव लगाकर उस गेंद को रोकना चाहते थे।
हालांकि रन स्कोर कार्ड के ऊपर महज सिंगल स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। पहली गेंद थी, पैडलाइन पर गेंद जरूर रखा था, कलाइयों के सहारे इस गेंद को मोड़ना चाहते थे। गेंदबाज प्रिंस एक बार तैयार। काफी तेज गेंद, देखिए दोनों ही तेज गेंदबाज है। पहले शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो दोनों ही तेज गेंदबाजों के साथ शुरुआत की है। TUVX तूफानी बनाम DPX डायनामाइट्स, इन दो टीमों के बीच चलता हुआ आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, सेकंड मैच और शाम का सत्र। यहां पर विकेट की अगर बात करें, पिछले मुकाबले में 112 रन डिफेंड किए थे, बेहतरीन गेंदबाजी। आखिरी 10 ओवरों में पूरी तरह से मुकाबले में वापसी दिलाई गेंदबाजों ने। तो यही यहाँ पर करना होगा कि पहले 6 ओवर में जितना ज़्यादा रन स्कोर कार्ड के ऊपर आएंगे उतना ही एक डिसेंट टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर ज़रूर रहा। थोड़ा समय लेना चाहते अली असगर शिकारी और जिगर, ये दो खिलाड़ी बतौर सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर आते हुए। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ, प्रिंस इस बार अच्छी गेंद, देखिए लगातार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंदबाजी करते हुए। और उतनी ही बढ़िया विकेट कीपिंग, हालांकि एक गेंद जरूर छूटी थी विकेट कीपर से, लेकिन अच्छा बैकअप था वहां पर। 4 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड। प्रिंस एक और तेज गति के साथ गेंदबाजी करते हुए। इस बार मिडल पर गेंद थी और खिलाड़ी वहां पर मौजूद, सीली मिड ऑन रीजन में गेंद ट्रेवल करती हुई महज कलाइयों के सहारे इस गेंद को मोड़ दिया था। फील्ड रिस्ट्रिक्शन का यहां पर ओवर चलते हुए 6 ओवरों का फील्ड रिस्ट्रिक्शन होगा। पावर प्ले जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रन जुटाने की कोशिश होगी इन दोनों। सलाह मिलने के बाद इस बार पद्मों का इस्तेमाल किया, मिड ऑफ को क्लियर और गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। केडी कॉर्पोरेशन फैबुलस 4। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर। दो ओवरों की समाप्ति के पश्चात टीम का टोटल स्कोर है 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हालांकि कदमों का इस्तेमाल किया था दूसरे ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर, मिड ऑफ को क्लियर किया था, लॉफ्टेड ड्राइव और 4 बेहतरीन रन यहां पर मिले थे। इन 4 रनों के बदौलत 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अली असगर शिकारी और जिगर, ये 2 सलामी बल्लेबाज। अब गेंदबाजी में कोई तब्दीली नहीं, यानी गेंदबाज मिहिर अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए इस बार अपर कट किया इस गेंद को। हालांकि थर्ड बार रीजन में खिलाड़ी वहां पर मौजूद और सिंगल यहां से स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। विद सिंगल स्कोर मूव्स ऑन टू 9 रन। असगर के बल्ले से एक चौका जरूर यहां से निकलता हुआ। जिगर भी इस वक्त मैदान के अंदर है। तो पहले 6 ओवरों में ज़्यादा से ज़्यादा रन जुटाने का प्रयास होगा ये इन दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के माध्यम से, क्योंकि पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाहते हैं। स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, पावर प्ले स्पेशलिस्ट बल्लेबाज है। इस बार अंदर की तरफ गेंद आती हुई, देखिए नई गेंद के साथ अक्सर हालात कुछ इस तरह से होते हैं, गेंदें स्विंग होती है और खास करके जब तेज गेंदबाजी करते हैं तो कुछ इस तरह से गेंद कोण बनाकर अंदर आती हुई। तो अच्छी गेंदबाजी अब तक
मिहिर अपने स्पेल का दूसरा ओवर यहां पर करते हुए 4 रन दे चुके हैं। हालांकि विकेट कोई अर्जित नहीं, विकेटों की तलाश जरूर लगातार होती हुई, लेकिन गेंदबाजी की लाइन और लेंथ की अगर बात करें तो ज़्यादातर गेंदें आउटसाइड द ऑफ स्टंप, यानी विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का अभी भी मन नहीं है दोनों ही सलामी गेंदबाजों का। केवल रन गति जो है, रन गति को रोकने का प्रयास यहां से होता हुआ, क्योंकि बल्लेबाज जो है भली भांति देख रहे हैं गेंदे आउटसाइड द ऑफ स्टंप है, तो उन गेंदों को ज़्यादा छिड़खानी करने का प्रयास दोनों ही सलामी बल्लेबाजों का नहीं है। कुछ गेंदों के ऊपर ज़रूर बल्ला चलाने का प्रयास किया था शुरुआती समय में पहले 2 ओवर में, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा डिफेंसिव होते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज। इस वक्त मिहिर, ये अच्छी गेंद थी, अलोंग द कारपेट इस गेंद को खेला। हालांकि अब लॉन्ग ऑन को तैनात किया गया है 30 यार्ड सर्कल के बाहर। सिंगल यहां से स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ मिहिर अपने स्पेल का दूसरा ओवर यहां पर करते हुए। और रनों की बात करें तो 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब स्ट्राइकिंग एंड पर है बल्लेबाज जिगर। इस बार देखिए अच्छी गेंद थी, हालांकि थोड़ा सा शफल जरूर होना चाहते थे, लेकिन देखा ये गेंद सीधी निकल रही, तो सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला। किसी भी तरह का रिस्क यहां पर फिलहाल उठाने के मूड में दोनों ही सलामी बल्लेबाज नहीं है, थोड़ा समय बिताना चाहते हैं। एक हाई स्कोरिंग वेन्यू जरूर कहा जाता है इस विकेट को। इस बार देखिए ड्राइव लगाने का प्रयास, बॉलर्स बैक ड्राइव, और डेंजर एंड पर हो सकते हैं, लेकिन पहुंच चुके अपने पॉपिंग क्रीज में। तो इस सिंगल के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हालांकि पारी का तीसरा ओवर अभी भी यहां पर चलता हुआ। मिहिर इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी, पावर प्ले में किसी भी तरह से हाथ खुले करने का मौका नहीं दिया दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को, अब तक बांधे रखा हुआ है। लेकिन ये दो ऐसे खिलाड़ी है कि जो कभी भी आक्रामक बल्लेबाजी जरूर कर सकते हैं। इस बार मिस कर गए लाइन को, डाउन द विकेट कदमों का इस्तेमाल किया था, डाउन द विकेट जाकर इस गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन सराहना करनी होगी विकेट कीपर की, डाइव लगाते हुए इस गेंद को रोका, क्योंकि ये गेंद अगर विकेट कीपर मिस कर जाते तो शायद ये 4-22 भी हो सकता था। तो आखिरी गेंद हुई डॉट, 3 ओवर की समाप्ति, टीम का टोटल स्कोर 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। डीपीएक्स डायनामाइट्स बनाम टीयूवीएक्स तूफानी, इन दो टीमों के बीच चलता हुआ आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, दूसरा मैच। लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं। जिगर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, जो कि आमतौर पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को आक्रामक बल्लेबाज माना जाता है। इस बार पैडलाइन पर गेंद थी, कलाइयों के सहारे मोड़ दिया, हालांकि काफी दूर से खिलाड़ी वहां तक पहुंच चुके हैं, गेंद को उठाए फेंके, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था। रन आते हुए यहां पर पहली गेंद पर 2, तो जितने रन आएंगे बल्ले से उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा दोनों ही सलामी बल्लेबाजों का, और ये काफी अहम होगा, क्योंकि लगातार स्कोर कार्ड को चलाते रखना है। यदि बड़े हिट्स आपके बल्ले से नहीं आते हैं तो सिंगल डबल से स्कोर कार्ड को लगातार चलाना होगा। इस बार शॉर्ट स्क्वायर लेग या सिली मिड ऑन कह सकते हैं, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, गेंद को रोके, डॉट गेंद की समाप्ति। देखिए रन रोकने का प्रयास यहां पर हो रहा है। पहले 6 ओवरों की अगर बात करें तो बल्लेबाज के लिए एडवांटेज होता है, क्योंकि खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के दायरे में होते हैं और उसका फायदा उठाना होता है सलामी बल्लेबाजों को। लेकिन अब तक जिस तरह की लाइन और लेंथ मेंटेन की है दोनों ही सलामी गेंदबाजों ने, प्रिंस भी अपने स्पेल का दूसरा ओवर यहां पर करते हुए, इससे पहले हमने देखा मिहिर ने अपने स्पेल के 2 ओवर किए, तो शायद हो सकता है इसके बाद स्पेल में मिहिर की जगह एक नए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन इस बार ये वाइड गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ, रन आने जरूरी है। बल्लेबाजी करने वाले डीपीएक्स डायनामाइट टीम की अगर हम बात करें तो रन आने जरूरी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए। पहले 6 ओवरों में अगर एक डिसेंट टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रखते हैं तो पहले 17
में एक अच्छी टोटल की तरफ अग्रसर जरूर हो सकते हैं। इस बार शफल अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, हालांकि वहां पर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में। पहले रन लेना चाहते थे, फिर नकारा, लेकिन आखिरी समय पर सही समय पर अपने पॉपिंग क्रीज में लौटे। 3.3 ओवर यहां पर समाप्त हो चुके हैं, 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हालांकि एक मैं कहूंगा सही, ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर डटे हुए, तो ये एक अच्छी बात होगी बल्लेबाजी करने वाली डीपीएक्स डायनामाइट्स टीम को, क्योंकि दो ऐसे खिलाड़ियों का चयन आप सलामी बल्लेबाज के रूप में करते हैं जो आपके साइड से सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। उन दो खिलाड़ियों को हम हमेशा एज अ ओपनर मैदान के अंदर भेजते हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, कलाइयों के सहारे मोड़ दिया इस गेंद को। अब ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि चैलेंज होगा खिलाड़ी के लिए, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। देखिए वहां पर फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए पैरों से इस गेंद को रोका। 2 रन जरूर आए इस गेंद के ऊपर। इन 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर पारी का चलता हुआ प्रिंस अब तक 10 रन खर्च कर चुके हैं। 10 गेंदें उन्होंने अपने स्पेल में फेंकी है, लेकिन विकेट का जो कॉलम है अभी भी यहां से खाली। दोनों ही सलामी बल्लेबाज अभी भी मैदान के ऊपर डटे हुए। ये एक और अच्छी गेंद, स्क्वायर कट करना चाहते थे इस गेंद को। पिच होने के बाद गेंद ने अतिरिक्त तो उछाल लिया, और यही कारण था कि गेंद और बल्ले का सही तरीके से संपर्क नहीं। जिगर 13 गेंदें खेल चुके अब तक, 8 रन उनके बल्ले से आए। और अली असगर शिकारी की अगर बात करें तो 10 गेंदें खेल चुके और 5 रन उनके खाते में भी। 3 अतिरिक्त रन एक्स्ट्रास के रूप में इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, डाउन द विकेट आए और 1 रन यहां से मुकम्मल होता हुआ। जानते थे कि मिड ऑफ का जो खिलाड़ी है वो एज ऑफ द सर्कल है, तो उसका फायदा उठाया पूरी तरह से। सिंगल आखिरी गेंद पर आता हुआ 4 ओवर का खेल समाप्त। टीम की टोटल की बात करें तो 17 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। सो वेलकम बैक। 4 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। हालांकि धीमी शुरुआत 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, लेकिन एक अहम चीज़ मैं यहाँ पर जरूर दोहराना चाहूँगा कि दोनों ही सलामी बल्लेबाज अभी भी मैदान के अंदर डटे हुए, और ये जितना ज़्यादा समय बिताएंगे उतनी ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर जरूर कर सकते हैं। इस बार गेंदबाजी में तब्दीली शायद नहीं की गई, क्योंकि मेहिर अपने स्पेल का 3रा ओवर यहाँ पर कर रहे हैं, तो एक अच्छी सोच होगी। देखिए अपने स्ट्राइकिंग गेंदबाज को स्पेल का 3रा ओवर देना, यानी विकेटों की तलाश है। यही दर्शाता है कि यहां से विकेट की तलाश है, और शायद यही कारण है कि मिहिर को कंटिन्यू किया गया। प्रिंस ने अपने स्पेल के 2 ओवर किए, 2 ओवर किए थे मिहिर ने, और शायद ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजी में तब्दीली होगी, लेकिन कप्तान की अलग सोच, क्योंकि कप्तान चाहते हैं हमेशा पावर प्ले में 1 या 2 विकेट आए, और ये 1 या 2 विकेट आपको कौन दे सकते हैं, तो आपके सलामी गेंदबाज। और यही भरोसा जताया। इस बार सीधे बल्ले से खेला, बॉलर्स बैक ड्राइव, डायरेक्ट हिट नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। एक हल्की सी अपील जरूर वहां पर हुई, लेकिन सभी खिलाड़ी जानते हैं कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। ये देखिए रिप्ले में भी आप देख सकते हैं, डायरेक्ट हिट जरूर हुआ था। अपने शरीर का बैलेंस बनाते हुए काफी अच्छा थ्रो किया था नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। अंपायर ने इस अपील को खारिज किया, तो मैच सिंगल आता हुआ इस स्कोर कार्ड के साथ। देखिए अब संघर्ष देखने मिल रहा है मैदान के अंदर सिंगल रनों के लिए भी। हालांकि 2 स्पेशलिस्ट ओपनर इस वक्त मैदान के अंदर है।
अली असगर शिकारी और जिगर, और दोनों ही गेंदबाज लगभग 10 या 10 से ज़्यादा गेंदें खेल चुके हैं। जिगर 16 गेंदें खेल चुके हैं, 10 रन बनाए, और अली असगर की अगर बात करें तो 10 गेंदों में 5 रन। इस बार पैडलाइन पर गेंद थी, कलाइयों के सहारे मोड़ा खुद गेंदबाज वहां पर तेजी से गेंद के ऊपर आते हुए, क्योंकि जानते हैं ऑन साइड के खिलाड़ी थोड़ा सा डीप में खड़े हैं, तो खुद गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में गए, उस गेंद को रोका। जब तक गेंद को उठाए सिंगल यहां से मुकम्मल होता हुआ, तो 19 रन ऑन स्कोर कार्ड। पारी का 5वां ओवर यहां पर चलता हुआ। पावर प्ले की अगर बात करें तो अब तक महज एक बाउंड्री आ चुकी है, लेकिन उसके पश्चात कोई बड़ा हिट लगाने का प्रयास नहीं खिलाड़ियों के बल्ले से। थोड़ा सा शांत खेल यहां पर चलता हुआ, और इस सराहना करनी होगी दोनों ही सलामी गेंदबाजों की। क्या बेहतरीन स्पेल यहां पर करते हुए मिहिर। इस बार डाउन द विकेट। देखिए बड़ा हिट लगाने का प्रयास जरूर था, क्योंकि ये भी जानते हैं कि अब समय निकलता जा रहा है, क्योंकि 6 ओवर पावर प्ले के होते हैं और लगभग 4.4 ओवर का खेल हो चुका है। महज एक बाउंड्री यहां से हासिल हुई है। पहले 6 ओवरों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का प्रयास होता है बतौर सलामी बल्लेबाज। जब आप मैदान में जाते हैं तो आपके माइंड में ये लगातार चलते रहता है कि 6 ओवरों में आपको ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनाने हैं, लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो पूरी तरह से जकड़ के रखा हुआ है दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को। क्रेडिट गोज टू द बोथ द बॉलर्स। लेकिन इस बार हाथ खुले करने का मौका, अवे फ्रॉम द बॉडी, स्क्वायर कट किया और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। ये आता हुआ केडी कॉर्पोरेशन फैबुलस 4। देखिए फैबुलस 4 आप देख सकते हैं केडी क्रिएशंस, और मच नीडेड बाउंड्री जिसे कहा जाता है। काफी समय हो चुका था और एक बाउंड्री जरूर चाहते थे दोनों ही खिलाड़ी। इस बार लगभग उसी दिशा में ये रिप्लाई आता हुआ शायद। यस, गेंदबाज मिहिर, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। देखिए बाउंड्री आने के बाद गेंदबाज भी एग्रेशन यहां पर दिखाते हुए। तो 5 ओवर का खेल होता हुआ यहां पर समाप्त। रन गति की अगर बात करें तो 23 रन ऑन द स्कोर कार्ड। पांच ओवर 23 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। सो वेलकम बैक। 5 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और ड्यूरिंग ब्रेक आपने देखा हमारे स्पॉन्सर्स जिनके बदौलत इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में काफ़ी बड़ा अहम और योगदान रहा है, तो हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं और चलते हैं मैदान की ओर। अब गेंदबाजी में यहाँ पर तब्दीली होती हुई तीसरे गेंदबाज को इंट्रोड्यूस करते हुए रौनक इस वक्त अपने स्पेल की शुरुआत करते हुए। 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। 2 सलामी गेंदबाजों के द्वारा 5 ओवरों का स्पेल यहां पर किया गया, जिसमें मिहिर ने अपने स्पेल के 3 ओवर किए, प्रिंस दुलशी ने अपने स्पेल के 2 ओवर किए। दोनों ही गेंदबाज काफी इकोनॉमिकली रहे और यही कारण है, हालांकि विकेट अर्जित नहीं कर पाए लेकिन रनों पर अंकुश लगाने में कामयाब रहे। महज 23 रन पहले 5 ओवरों में आते हुए, तो ये पावर प्ले का आखिरी ओवर यहां से चलता हुआ। और हमने कई बार देखा है पावर प्ले में या तो आखिरी ओवर में विकेट आता है या तो बड़े हिट लगाने में बल्लेबाज कामयाब होते हैं, क्योंकि सोच होती है आक्रामक सलामी बल्लेबाजों की, और इस आक्रामक सोच को अगर आपको बरकरार रखना है तो इस ओवर में आक्रमण करना होगा। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, ये क्रिकेट का परिसूत्र, ये क्रिकेट का मूल मंत्र हम जरूर कहेंगे। लेकिन इस बार डायरेक्ट हिट देके नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर
तो ये शायद दोनों ही खिलाड़ी के लिए चेतावनी है कि अगर आप दूसरा रन लेने की कोशिश करोगे या रन चुराने की कोशिश करोगे तो कुछ इस तरह से डायरेक्ट हिट हम कर सकते हैं। ये दिखाया खिलाड़ी ने, हालांकि वो जानते थे कि खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, फिर भी एम किया नॉन स्ट्राइकिंग एंड के विकेटों को। तो ये अक्सर देखते हैं हम बैटल, जबकि ये सभी खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ लगातार खेलते हैं। इस बार हवा में खेला है इस गेंद को, हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और क्या बेहतरीन कैच यहां से आता हुआ, वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ दिस टूर्नामेंट, वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज प्रेजेंट्स एक्सल विकेट यहां से आता हुआ। देखिए हमने शुरू में ही कहा था कि पावर प्ले के ओवर में या तो रन गति को बढ़ाने का प्रयास होता है या तो विकेट यहां से खोते हैं, और यही होता हुआ, विकेट खोया, सफलता मिलती हुई गेंदबाज। और क्या बेहतरीन कैच, देखिए रिप्ले में भी आप देख सकते हैं, पूरी तरह से अपना सब कुछ नौचावर कर दिया था मैं कहूंगा, और बॉडी बैलेंस को यहां पर बनाते हुए डाइव लगाकर इस गेंद को लपका, और जो एग्रेशन यहां पर होना चाहिए, क्योंकि विकेट की तलाश थी, लगातार 5 ओवर विकेट की तलाश में थे, और वो विकेट इस वक्त मिलता हुआ रौनक को। बेहतरीन कैच, मैं कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ दिस टूर्नामेंट। और कुछ इस तरह का कमिटमेंट आपके फील्डिंग के माध्यम से भी होना चाहिए, क्योंकि जब भी क्रिकेट का हम जिक्र करते हैं तो क्रिकेट में गेंदबाजी और बल्लेबाजी के बारे में ज़्यादातर चर्चाएं होती है, गेंदबाजी और बल्लेबाजी के बारे में ज़्यादातर हम सोचते हैं, लेकिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी के साथ में फील्डिंग भी एक ऐसा पार्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और कुछ ऐसे खिलाड़ी है कि जिन्होंने बतौर फील्डर इंटरनेशनल टीम में भी अपनी जगह बनाई थी, और उसी में से एक नाम हम ज़रूर यहाँ पर लेना चाहेंगे, जॉन्टी रोड्स, जो कि साउथ अफ्रीकन टीम के इंटरनेशनल खिलाड़ी थे। इंडिया की अगर बात करें तो मोहम्मद कैफ ने फील्डिंग के दम पर, हालांकि वो अंडर 19 के कप्तान थे जब उन्होंने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन वो खिलाड़ी इंडियन टीम में जब आए तो बतौर फील्डर वो ज़्यादा फेमस हुए थे। और उसके बाद नेटवेस्ट सीरीज आई थी जिसमें युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई थी, और दादा का एग्रेशन भी हमने लॉर्ड्स के मैदान पर देखा था। तो चलते हैं फिर एक बार इस मुकाबले की तरफ। 5.3 ओवरों की समाप्ति हो चुके, 23 रन, और विकेट का कॉलम जो खाली था अब वहां पर एक विकेट दिखता हुआ। इस बार देखिए अंदर की तरफ आई गेंद, पूरी तरह से इस लाइन को मिस कर गए, बेल्स डिसलॉज होती हुई, और एक और विकेट का पतन यहां पर आता हुआ। ये दूसरा विकेट यहां पर खोया, और रौनक को मिलती हुई ये दूसरी सफलता। तो पहले गेंदबाजी का चेंज और यहां पर सफल साबित होता हुआ। ठीक है, पिच होने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई और बेल्स को डिसलॉज करते हुए ये आता हुआ वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज प्रेजेंट्स एक्सल विकेट। तो 23 रन पर 0 विकेट और 23 रन पर 2 विकेट। ये बेहतरीन गेंदबाजी, रौनक, पहला गेंदबाजी का बदलाव। 4 गेंदें अब चुक कर चुके हैं, कोई रन नहीं, और 2 महत्वपूर्ण विकेट अर्जित कर चुके हैं। नए बल्लेबाज राजेश सवारिया इस वक्त मैदान के अंदर आते हुए, इनेट नंबर 4। क्योंकि अब चेहरे के ऊपर थोड़ा सा मैं कहूंगा कि प्रसन्नता जरूर होगी। रौनक बेहतरीन स्पेल यहां पर करते हुए, TUVX तूफानी बनाम DPX डायनामाइट्स। TUVX तूफानी पिछले साल के चैंपियन तो बतौर डिपेंडिंग चैंपियन इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिए, पिछले साल के चैंपियन, और उनके साथ एची वॉरियर्स थे फाइनल में। इस बार देखिए अच्छी गेंद, अतिरिक्त तो उछाल यहां पर मिलता हुआ। तो रौनक के हौसले अब यहां से बुलंद होते हुए, क्या इस प्रतियोगिता का आज के दिन में एक मेडन ओवर हमने देखा था साहिल पारिक के माध्यम से, तो क्या एक और मेडन ओवर इस दूसरे मुकाबले में भी देखने मिलेगा? क्योंकि 5 गेंदें अब तक कर चुके, कोई रन नहीं, और 2 विकेट अर्जित कर चुके हैं।
और जरूरत थी, और पहला गेंदबाजी का बदलाव यहां पर काम करता हुआ। ये अच्छी गेंद, एक और विकेट देकर जाती हुई, तो मेडन ओवर और 3 विकेट। क्या बेहतरीन स्पेल यहां पर, रौनक इस गेंदबाज के माध्यम से। एक और वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज प्रेजेंट्स, एक्सल विकेट यहां पर आता हुआ। देखिए मुकाबले में किस तरह से करवट ली, 3 विकेट जल्दी जल्दी खोए, एक ही ओवर में 3 विकेट खोए। 23 पर 0 था, अब 6 ओवर के बाद है, 23 पर 3 विकेट। हमने कई मर्तबा देखे हैं कुछ ऐसे मुकाबले भी कि जहां पर पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर होने के बावजूद भी एक ऐसा मोड़ क्रिकेट में आता है जहां पर वो मुकाबला पूरी तरह से आपके आगोश में होता है और वो फिर वो मुकाबला आपके हाथ से छूट जाता है। सो वेलकम बैक। यहाँ से देखिए छठे ओवर में पूरी तरह से इस गेंद को मानो यू टर्न कर दिया, क्योंकि पहले 5 ओवर में स्कोर था 23 रन, कोई विकेट नहीं खोया था, दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर थे। लेकिन उसके बाद क्या बेहतरीन स्पेल यहाँ पर करते हुए गेंदबाज, रौनक की सराहना करनी होगी यहाँ पर। उनका स्पेल 1 ओवर 1 मेडन 3 विकेट, क्या बेहतरीन स्पेल। मैं कहूंगा उनके क्रिकेटिंग करियर का ये सबसे बेहतरीन स्पेल यहां पर होगा। नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर, जिगर अभी भी डटे हुए। देखिए ये लगातार हम देख रहे हैं कि एक बल्लेबाज डटा हुआ रहता है मैदान के अंदर, लेकिन उसके साथ वाले जो खिलाड़ी होते हैं, साथी खिलाड़ी जो होते हैं, जिनसे उम्मीदें होती है कि कम से कम 20 ओवर के मुकाबले में, यानी T20 मुकाबले में आप एक पार्टनरशिप को बिल्डअप करने की कोशिश करें। तो नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर भाविन मेहता। अब यहां से पार्टनरशिप बिल्डअप करनी होगी, क्योंकि लगातार 3 विकेट खोई है। एक ही ओवर में 3 विकेट खोना शायद इस प्रतियोगिता में पहली बार ये मंजर हम देख रहे हैं। एक ही ओवर में 3 विकेट खोई है किसी टीम ने। DPX डायनामाइट्स बनाम TUVX तूफानी, ये खेल यहां पर चलता हुआ, अच्छी गेंद, काफी तेज गति से गेंद की थी। मयंक शाह को अब इंट्रोड्यूस किया गया है। Mayank Shah has been introducing to the attack. देखिए अपने गेंदबाजी के जलवे बिखेरते हुए सभी सलामी गेंदबाज। पहले 5 ओवर में हमने देखा मिहिर ने 3 ओवर का स्पेल किया, 2 ओवर का स्पेल किया प्रिंस दोषी ने, और उसके बाद क्या बेहतरीन स्पेल यहां पर किया गेंदबाज ने। 1 ओवर 1 मेडन 3 विकेट। अब आए हैं नए गेंदबाज मयंक शाह। पहली गेंद हालांकि डॉट रही। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली यहां पर जरूर होती हुई, क्योंकि स्ट्राइकिंग एंड पर है भाविन मेहता। इनेट नंबर 5 इस बार कलाइयों के सहारे मोड़ दिया। देखिए आते ही रनों की भूख आपके अंदर होनी चाहिए। आते ही इन्होंने पहला रन काफी तेजी से लिया, और भली बात ही जानती है कि यहां से अगर टीम को एक डिसेंट टोटल तक लेकर जाना है तो यहां से एक पार्टनरशिप बिल्डअप करनी होगी। भाविन मेहता पहले गेंद के ऊपर अपना खाता खोलते हुए, अपने निजी रनों का खाता खोलते हुए, और जिगर की अगर बात करें तो अभी भी 20 गेंदों में 14 रन बनाकर विकेट के ऊपर डटे हुए। हालांकि 3 विकेटें उनके सामने गिरी, एक ही ओवर में 6 गेंदें लगातार नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े रहे, और ये सारा मंजर देखते रहे। एक ही ओवर में पूरी तरह से गेम को पलट दिया था, और शायद इस बुरी यादों को जल्द से जल्द भूलना होगा, इस ओवर को जल्द से जल्द भूलना होगा, और अपना स्वाभाविक जो खेल है मैदान के अंदर
लगातार करना होगा, क्योंकि अपनी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के ऊपर अगर आप बल्लेबाजी करते हैं तो परिस्थितियां कैसी भी हो आप उसमें से ज़रूर उभर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव ज़रूर होता है, जब भी आपके सामने लगातार विकेटें गिरती है तो ऐसे समय पर आपका संयम आपको एक अलग ऊंचाई पे ज़रूर ले जा सकता है। यह समय है खुद को संभालने का, यह समय है एक पार्टनरशिप को बिल्डअप करने का, और ये समय यदि आप निकालते हैं मैदान के ऊपर तो आने वाले समय में आप ज़रूर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इससे पहले वाले मुकाबले में हमने देखा कुछ यही हुआ था। साहिल पारिक जो कि मैन ऑफ द मैच रह चुके थे और उनके सामने भी लगातार विकेटें गिर रही थी, और ऐसे समय पर उन्होंने अपने संयम को बरकरार रखा, आखिरी ओवर तक मैदान के ऊपर डटे रहे, और जो टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर लगाया उनके बल्लेबाजों ने, उस टोटल को भी जरूर डिफेंड करते हुए इस बार सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ सातों ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। देखिए 5 ओवरों में 23 रन, कोई विकेट नहीं था, और उसके बाद एक ओवर आया जिस ओवर ने पूरी तरह से इस मुकाबले को बदल दिया। 3 विकेटें अर्जित की गेंदबाज ने। गेंदबाजी में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं है, यानी रौनक आएंगे फिर एक बार, विकेटों की तलाश जरूर होगी क्योंकि लगातार दबाव बनाने होंगे। T20 इज द फास्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ अ क्रिकेट, लेदर क्रिकेट का ये सबसे फास्टेस्ट फॉर्मेट है, और इसमें परिस्थितियां लगातार बदलती रहती है। एक अच्छा ओवर इस मुकाबले में वापसी दिला सकता है, लेकिन इस वक्त दोनों ही खिलाड़ी की अगर बात करें तो एक संयम के साथ संयम बरतना होगा। कलाइयों के सहारे मोड़ दिया इस गेंद को। पारी का 8वां ओवर यहां पर चलता हुआ, थोड़ा सा फंबल, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं, महज एक ही रन यहां से मुकम्मल होगा। इस एक रन के साथ 27 3 विकेटों के नुकसान पर भाविन मेहता है, और जरूर यहां पर अगर आप बुलंद हौसले के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं तो जरूर मैं कहूंगा यहां पर कि एक अच्छे टोटल की तरफ आप यहां से भी अग्रसर कर सकते हैं। इस वक्त स्ट्राइकिंग एंड पर है भाविन मेहता, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जिगर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। जिगर दिखाना होगा इस खिलाड़ी को मैदान के अंदर, और सराहना करनी होगी रौनक की भी। क्या बेहतरीन स्पेल यहां पर करते हुए भाविन मेहता और जिगर इस वक्त रनों की अगर बात करें तो 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। और पारी का ये 8वां ओवर यहां पर चलता हुआ। रन गति की बात करें तो 3.68, और इसी रन गति से अगर जाए तो प्रोजेक्टेड 74, लेकिन इस आंकड़ों को बदलना चाहेंगे। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, स्क्वायर कट करने का प्रयास, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। रौनक यहां पर मैं कहूंगा कि अपनी गेंदबाजी के माध्यम से रौनक बिखेरते हुए, थोड़ी ही समय में यहां पर लाइट्स फुल इफेक्ट्स में हमें दिखाई देंगी, लेकिन उससे पहले क्या बेहतरीन स्पेल यहां पर रौनक का। लेकिन दोनों ही खिलाड़ी इस वक्त बुलंद हौसलों के साथ लड़ते हुए मैदान के अंदर। डीपीएक्स डायनामाइट्स बनाम TUVX तूफानी। हालांकि पहले स्पेल में, पहले सत्र में तूफान भरी गेंदबाजी यहां पर देखने मिली, जैसे किसी शांत जगह पर तूफान आता है तो पूरी तरह से तूफान चले जाने के बाद जो मंजर होता है, कुछ उस तरह का मंजर यहां पर फिलहाल दिख रहा है। अपने नाम के मुताबिक यहां पर गेंदबाजी हुई है, तूफानी गेंदबाजी हुई है इस वक्त मैदान के अंदर TUVX तूफानी द्वारा। और जैसे तूफान में सब कुछ तहस नहस होता है, लेकिन तूफान चले जाने के बाद इंसान फिर एक बार अपना बसेरा बिताने की कोशिश करते, और वही करते हुए खिलाड़ी इस बार एक मौका बनता हुआ, बल्ले का ऊपर ही किनारा लगा। क्या शायद अपील यहां पर होती हुई, और
क्या हो चुका है मैदान के अंदर, देखिए ओयूटी आउट, यार विकेट खोया है। एक और विकेट यहां से आता हुआ, शायद खिलाड़ी नाखुश है थोड़ा सा, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि आपकी सोच अलग होती है, अंपायर का नजरिया अलग होता है। और अंपायर्स की अगर बात करें तो दोनों ही अंपायर्स मंजिले हुए अंपायर्स है। और विकेट यहां से आता हुआ, एक और विकेट का पतन 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 विकेटों के नुकसान पर। डीपीएक्स डायनामाइट्स पूरी तरह से मैं कहूंगा कि बैकफुट पर, पहले 5 ओवरों में महज 23 रन, कोई विकेट नहीं था। और वहां से अगर देखा जाए तो इन 2 से 3 ओवरों में पूरी तरह से मंजर बदल चुका है। डीपीएक्स डायनामाइट्स 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 विकेटों के नुकसान पर। नील शाह अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, लेकिन जिगर की सराहना करनी होगी, जिगर दिखाते हुए अभी भी मैदान के अंदर डटे हुए, और यही करना होगा। आने वाले खिलाड़ी ने ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय विकेट के ऊपर बिताना है, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ 20 ओवर्स और महज 8वां ओवर पारी का यहां पर चलता हुआ। देखिए ये आउटसाइड द ऑप्शन गेंद थी, अपरकट करना चाहते थे इस गेंद को, अतिरिक्त उछाल लिया इस गेंद ने, अंपायर का इशारा यहां से वाइड आता हुआ। एक अतिरिक्त रन स्कोर कार्ड पर ऐड होता हुआ, 30 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। प्रोजेक्टेड स्कोर शायद ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे 77, क्योंकि इसी रन गति से अगर रन आते हैं तो मैं 77 रन होंगे, लेकिन दिस इज नॉट इनफ टोटल। आपको इन आंकड़ों को बदलना होगा, किस्मत को बदलना होगा। इस बार फुल टॉस गेंद थी, बैक का फेस ओपन किया, हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद है डी पॉइंट में। जब तक खिलाड़ी आए गेंद को उठाए, ओवर की समाप्ति यहां से होती हुई 8 ओवर का खेल हो चुका है। और रनों की अगर बात करें तो 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 विकेटों के नुकसान पर। रौनक अपने स्पेल का 2 ओवर कर चुके हैं, बेहतरीन फिगर मैं कहूंगा यहां पर। 4 विकेटें अब तक गिरी है। सो वेलकम बैक। 8 ओवर की समाप्ति, 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हालांकि 4 विकेटें खोई है जरूर, लेकिन जिगर अभी भी जिगर दिखाते हुए मैदान के अंदर। नील, मैं कहूँगा अपने आप को थोड़ा सा समय देना होगा, थोड़ा सा शांत यहाँ पर करना होगा। मयंक कंटिन्यू करते हुए अपने स्पेल का दूसरा ओवर। देखिए अच्छी गेंद थी, लेकिन थोड़ा सा फंबल यहाँ पर जरूर हुआ, उसका फायदा उठाना चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाज। सिंगल यहां से स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। तो क्या जबरदस्त स्पेल रहा है रौनक का। 4 विकेटें अब तक गिरी है और चारों विकेट रौनक के माध्यम से आती हुई। पहले ओवर की अगर हम बात करें तो 1 ओवर 1 मेडन और 3 विकेट अर्जित किए थे, और इस ओवर की अगर बात करें तो इस ओवर में भी 1 विकेट अर्जित किया है। तो अच्छी गेंद यहां पर पूरे सम्मान के साथ में खेला। जिगर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, हालांकि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को आक्रामक बल्लेबाज कहा जाता है, लेकिन इस वक्त समय की अगर मांग को देखें तो ये खिलाड़ी थोड़ा सा संयम यहां पर दिखाते हुए, और जरूरी भी है क्योंकि समय बिताएंगे मैदान के ऊपर, तो शाम के सत्र में यहां पर जरूर एक डिसेंट टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार पैड्स पर गेंद करने का प्रयास था, बॉडी लाइन अटैक करने का प्रयास था, दिशा से भटके, अनुशासन से भटके गेंदबाज, लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई गेंद। वाइड का इशारा यहां से आता हुआ, और इस वाइड के साथ टीम की टोटल 1 रन से बढ़ती हुई 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। पारी का 9वां ओवर यहां पर चलता हुआ। क्या 10 ओवर के बाद गेयर शिफ्ट करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। इस बार देखिए स्क्वायर कट करना चाहते थे, ये भी गेंद पहुंच से बाहर। अब गेंदबाज भी जानते हैं कि जिगर की आंखें जम चुकी है, क्योंकि लगभग 26 गेंदें उन्होंने खेली है, 16 रन का योगदान रहा है, 2 चौके के उनके बल्ले से आए हैं। तो ऐसे समय में थोड़ा सा गेंदों को उनके बल्ले से दूर ही रखे तो बेहतर रणनीति होगी, और शायद यही करते हुए मयंक भी। हालांकि विकेट का कॉलम अभी भी खाली है मयंक का, लेकिन विकेटें अर्जित करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। लगातार ये दूसरी वाइड गेंद, तीसरी वाइड गेंद शायद ये होगी। यस, इट्स अ 3rd वाइड इन अ रो।
सो ये कुछ थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि हेल्प करता हुआ डीपीएक्स डायनामाइट्स टीम को 35 ऑन स्कोर कार्ड। और जिगर अभी भी एक तरफ से एक बाजू को संभाले रखा है, अपने विकेट की अहमियत को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इन परिस्थितियों को अगर समय दे तो इन परिस्थितियों से में भी निकला जा सकता है। इस बार देखिए बैट का फेस ओपन किया, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल, हालांकि वहां पर दो खिलाड़ी है लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट उतना अच्छा नहीं। महज सिंगल यहां से आता हुआ, पहला रन अगर तेजी से आते तो शायद यहां पर मौका बन सकता था दूसरे रन का, लेकिन ऐसे समय पर विकेट खोना ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। तो शायद ये अच्छा सुझाव महज सिंगल लेने का। नील, शाह और जिगर इस वक्त मैदान के अंदर। ये अच्छी गेंद थी, काफी तेजी से इस गेंद को किया था, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, कट करना चाहते थे इस गेंद को। रन गति की अगर हम बात करें तो 4.15 करंट रन रेट, और इस रन रेट से अगर प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करें तो 83। लेकिन इससे पहले वाला जो मुकाबला हुआ था शायद उस मुकाबले से कुछ सीख जरूर ली होगी कि अगर लोएस्ट टोटल भी स्कोर कार्ड के ऊपर आता है और नियंत्रित गेंदबाजी होती है तो उस स्मॉलेस्ट टोटल को भी डिफेंड किया जा सकता है। बिलो 6 रन पर ओवर थे रिक्वायर्ड और उस टोटल को, एक स्मॉल टोटल को डिफेंड किया था पहले मुकाबले में। तो शायद यही नजरिया आपके सामने रखना होगा, यही टारगेट आपके सामने रखना होगा कि अनफॉर्चुनेटली अगर आप एक डिसेंट टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर नहीं लगाते हैं तो इससे पहले वाले मुकाबले में एक लोएस्ट टोटल को डिपेंड किया है, तो ये पॉजिटिवनेस आपके अंदर होना चाहिए। तो कम से कम 120 बार तेजी से गेंद करने का प्रयास था, कंधे का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन दिशा से भटके। हम लगातार कहते हैं कि अनुशासन भरी गेंदबाजी आपके पास होना जरूरी है, गति मायने नहीं रखती है। देखिए दो गेंदबाजों का हम उदाहरण देंगे, शोएब अख्तर जो गति के लिए जाने जाते थे और ग्लेन मैकग्राथ जो अपने लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते थे। सबसे ज्यादा फेमस ग्लेन मैकग्राथ गेंदबाज हुए जिन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर में सबसे ज्यादा विकेट्स लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो गति और अनुशासन की अगर हम बात करें तो गति से ज्यादा आपके गेंदबाजी में अनुशासन होना जरूरी है। देखिए ये स्कोर कार्ड आपके ऊपर बीच के दो जो विकेटें गए, लगातार 3 विकेटें खोए, 0-0-3, कुछ एक मोबाइल नंबर की तरह लगते हुए, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आप जब आप बतौर बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हैं और जब आपको पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है तो शायद ये आपके कप्तान भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कुछ इस तरह के फिगर्स आपके नाम के सामने हो। रनों की अगर बात करें तो 9 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 38 रन ऑन द स्कोर कार्ड फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। मयंक ने अपने स्पेल के 2 ओवर कंप्लीट किए हैं, 9 रन, कोई विकेट नहीं। अब नए गेंदबाज सुनील होलानी अपने 5वें गेंदबाज को यहां पर इंट्रोड्यूस किया है। देखिए मिहिर ने अपने स्पेल के 3 ओवर किए, प्रिंस ने अपने स्पेल के 2 ओवर किए। रौनक इंप्रेसिव फिगर रहा इस गेंदबाज का। और उसके बाद मयंक इस बार देखिए आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, स्लैश किया इस गेंद को, हालांकि खिलाड़ी वहां पर है, जब तक आए गेंद को उठाए और यहां पर महज 1 रन सिंगल स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। हालांकि शॉट सिलेक्शन अच्छा था, गेंद के मेरिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो खिलाड़ी भी वहां पर मौजूद था, तो गेंदबाजों की भी सराहना करनी होगी, उनके भी हौसले अब बुलंद हो चुके हैं, क्योंकि पहली बात ही जानते हैं सलामी 4 बल्लेबाज खोज चुकी है, तो थोड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव है और ऐसे समय पर अगर इस दबाव को लगातार बरकरार रखे तो आने वाले समय में एक सीमित रनों के अंदर रोका जा सकता है। फुलर लेन की गेंद थी, बॉलर्स बैक ड्राइव किया, सम्मान दिया इस गेंद को पूरी तरह से। 10वां ओवर पारी का चलता हुआ शायद यहाँ इसके बाद एक मैसेज जरूर मैदान के अंदर आएगा। जब ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान के अंदर आएगी तो थोड़ी रणनीति में बदलाव जरूर देखने मिलेगा। इस बार फुल टॉस की गेंद थी, शायद दिशा से भटके
एक जेंटल टच देना चाहते थे, बल्ला भी अड़ाने का प्रयास किया था वहां पर जिगर ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गेंद बल्ले से काफी दूर रही। वाइड यहां पर जरूर आता हुआ इस वाइड के साथ 40 रन ऑन द स्कोर कार्ड, 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए। देखिए अभी भी 4 गेंदें बची हुई है। इन 4 गेंदों में अगर 10 रन आते स्कोर कार्ड के ऊपर तो 50, पहले 10 ओवरों में 50 रन, एक अच्छी शुरुआत नहीं कहेंगे लेकिन एक सम्मानजनक स्कोर जरूर होगा। 50 या 55, अब 55 यहां से पॉसिबल नहीं है, लेकिन 50 रन अगर स्कोर कार्ड के ऊपर आते हैं 10 ओवरों के बाद, तो एक जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, एक जो प्रेशर है, मनोवैज्ञानिक जो दबाव है, उस दबाव में से आप अपने आप को उभरने के लिए जरूर मौका दे सकते हैं आखिरी 10 ओवरों में। क्योंकि पहले दिन के पहले मुकाबले में मैंने देखा था 10 ओवर में 89 रन स्कोर कार्ड के ऊपर थे और उस टीम को एक सीमित रनों में रोका गया था, यानी 163 रनों में। यहां से अगर बात करें तो ये पारी का 10वां ओवर चलता हुआ 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए हुए जिगर, क्या जिगर दिखाएंगे यहां पर? एक बड़ा हिट लगाने का प्रयास होगा क्योंकि ये बेहद लाजमी है। यहां से अगर एक बड़ा हिट आता है और 50-52 के करीब अगर पहुंचते हैं, 5.55 या 5.20, इस रन गति से अगर 50-55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हैं, 52-55, तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जरूर होगा। मनोवैज्ञानिक जो दबाव बना चुके हैं पहले 10 ओवरों में, उससे उभरने में जरूर यहां पर आसानी होगी। लेकिन सराहना करनी होगी गेंदबाज सुनील की भी, अपने स्पेल का पहला ओवर यहां पर करते हुए, पारी का 10वां और अपने स्पेल का पहला ओवर। ये इस ओवर की दूसरी वाइड गेंद, लगातार पैड लाइन अटैक यहां पर हो रहा है, बॉडी लाइन अटैक यहां पर हो रहा है, यानी बल्लेबाजों को किसी भी तरह से हाथ खुले करने का मौका नहीं देना चाहते हैं और यही कारण है कि लगातार पैड लाइन पर गेंदबाजी होती हुई। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों को आमतौर पर आक्रामक बल्लेबाज कहा जाता है। कई ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जिनका उदाहरण हम जरूर दे सकते हैं, जिसमें मैथ्यू हेडन हो या एडम गिलक्रिस्ट हो। वेस्ट इंडीज की अगर बात करें तो यूनिवर्सल बॉस यानी कि क्रिस्टोफर हेनरी गेल। इंडिया की अगर हम बात करें तो सौरभ दादा। ये लेफ्ट हैंडेड ऐसे बल्लेबाज है जो कि नेचुरली अटैकिंग बल्लेबाज माने जाते हैं। क्रिस्टोफर हेनरी गेल जिन्होंने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाकर किया था और तभी से इस खिलाड़ी चर्चा में आए थे। इस बार फुलर लेन की गेंद थी, पूरे सम्मान के साथ में इस गेंद को खेला, सिंगल यहां से स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। 10वें ओवर का खेल अभी भी जारी है। 45 स्कोर कार्ड के ऊपर, 4 विकेटें जरूर खोई है, उसका थोड़ा सा दबाव जरूर खिलाड़ियों के ऊपर। सुनील लोलानी अपने स्पेल का पहला ओवर यहां पर करते हुए 5वें गेंदबाज है जिनको कि इंट्रोड्यूस किया गया 10वें ओवर में। इस बार फिर एक बार ये देखिए, इस ओवर की ये शायद चौथी वाइड गेंद, यानी कुल 10 गेंदों का अब ये ओवर हो चुका है। इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो मोहम्मद सामी, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेटिंग करियर में 17 रनों का ओवर किया, 17 गेंदों का ओवर किया था। एक और वाइड गेंद, देखिए अनुशासन से भटकते हुए कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास जरूर होता हुआ। देखिए एक अच्छे पोजीशन में आपकी टीम है, यहां से नो नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, आपको आपके स्ट्रेंथ के ऊपर गेंदबाजी करनी है, ना कि विकेट। देखिए 4 विकेटें खो चुके हैं ऑलरेडी, बल्लेबाज प्रेशर में है, तो ऐसे समय में आपको आपके स्पेल की जो ओवर्स है उन ओवर्स को जल्द से जल्द खत्म करना है, ना कि आप विकेटों के लिए जाए, क्योंकि वो काम आपके सलामी गेंदबाजों ने किया है। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप। अब अच्छी लाइन यहां से आती हुई, तो 10 ओवर का खेल यहां से समाप्त होता हुआ। ड्रिंक्स ब्रेक के लिए जरूर जाएंगे और जैसे ही आएंगे फिर से एक बार लाइव बैक टू द एक्शन।
Let's check. So DPX Dynamites are 47 for 4, and you may feel DPX Dynamites are falling behind. They are 4 wickets down. They are not that scoring well, but take my word, the way these two guys have played, they can always make a comeback. Jigar has looked good, and so has Neil Shah. So every possibility that this score might just change in the next 10 overs. That was nicely bowled, slower delivery, rolling the fingers. Score moves on to 48. It's not how you start, it's how you end, they say, which matters a lot. So 48 for 4 is the score. Even if they get somewhere around 130, 135, you have seen that can be a fighting total on this ground if you bowl well. The wickets have been in love with the spinners, so things can change. So 48 for 4 is what the score is. They're bowling from Fatima, and the bowler Gaurav Bakhai, he would be up against Neil Shah. He was just come in. That's outside the off stump, and that will be wide. So with that wide, the score will move on further. With that little help, we'll move on to 49 now. Now, what these two guys have to understand is to like nurture, fabricate, engineer a small partnership so that the team comes in a very strong position again. TVX Tufanis have won one yesterday, and they are on the verge of winning the second one also. 50 for 4. We are into the 11th over. That's nicely bowled. So 51 for 4. We are into the 11th over. Jigar. And that's beautifully played by Neil Shah. And the ball nicely punched off the back foot. This is where things can change if they run well. They haven't been running that well because they have played some delightful strokes, but they haven't been capitalizing on the bird shots which they have played. They haven't been running those doubles, singles that well. So this is going to change. This is going to help them. The score is 53 now. 53 for 4. They need to run well. They need to run well and get this scoring little ahead. So once in a while they can go for those boundaries even. Some boundary balls will be coming on the. That's a boundary ball that is pulled. That is pulled in disdain, and that will be up and over. What a shot! KD Corporation sixer pulled disdainfully, just like Rohit Sharma does. What a good shot that was. Short pitch ball, and that's what I was talking about. You wait for those boundary balls, sixes ball. They are going to come in between. You don't need to hit a lot of boundaries. Even if you hit a boundary in every 2 overs or in the end every over, you're going to get a very good score. That's what I was talking about for 47 for 4 some time back. In just 5 balls, these guys have got 12 runs. It happens generally. It happens generally after the break. Either you lose a lot of wickets or you just get the momentum to the inning. So with that sixer, oh, that's good bowling, but that's good prudent batting now. Both the batsmen are looking good. That's what I said. That both the batsmen have shown some glimpses of some fantastic hitting. So the score moves on to 60 now. After the break, it went on for 13 runs.
What a good shot that is. Fabulously played. It is uh, X. In fact, it's a KD Corporation boundary. What a good shot that is. Fantastic hit into the covers. What a good shot that was. KD Corporation fabulously hit boundary by this man in last 2 overs. We saw one KD sixer. Now we saw one KD boundary. The KD Corporation sixes and boundaries are the need of that hour. Oh, that's beautifully done. The score is up and over into that mid wicket. Wonderful batting by these two guys now. Left-hander Jigar on one side, Neil Shah on the other. These guys have put their foot on the pedal, and that's what I was saying. Even if it is 47 for 4, things are gonna change in the next half, and things have absolutely changed in the next half. This is some great batting, some Jigar Bass batting by Neil and Jigar. 67 for 4. We are into the 12th over. What a good shot that is. 68 for 4. Score at the end of over number 12 is 68 for the loss of 4 wickets. .69 for 4 is what the score is. Beautifully turned away. They get a couple of runs. .71 for 4. We are into 13th over. Oh, this is beautifully played. What a good shot. That is a smooth, scintillating, crisp cover drive for a couple of runs. This is great batting. This is super stuff from Neil Shah. Jigar is looking good. He's almost playing that anchor kind of innings all throughout the innings. Understand what has happened in the last few overs. 46
for 4. They were in 10 overs. In the last 15 balls, they have managed to score 26 runs, which is superb. The run rate, which was hovering for around 4.7, had just cropped up to 5.84 now, which is superb. Last 3 overs, it is more than 9. Oh, this is super! This is scintillating! This is a maximum! It is a KD Corporation sixer! What a shot! Beautiful extension of the arm. Neil Shah looking superb, sensational, scintillating, and what a great shot that was. Fantastic, Neil. Mesmerizing batting by this man. That's what I was talking about, and I'm happy that my words are proven right. DPX Dynamite batting like dynamites now. What fantastic hit that was. Oh, that's a full toss, and the ball is racing towards the long off region. They get a single, they go on to the other, and the score is 80. Can we imagine the last 3 overs? In fact, 2.5 overs, they have scored 33 runs, almost 11 runs per over. In fact, more than that in the last 3. They were 4.7 at the end of 10 overs, and in the next 3, they have got 33 runs. So 12.5 overs, its score is 80 for 4. This is beautiful. So the score is 81 for 4 in 13 overs. For fabulous display. 34 runs in the last 3, 11.33 runs per over. This is super scintillating comeback by these two men. That's what I was talking. I just had a feeling that things are going to change. 47 for the way I looked at them when I wasn't on air. I was just watching them closely, and they looked quite all right. Only thing, they were not running well. But now in the next part, but they have managed to run well. Yes, this is superb now. Superb to watch a match which is a contest where bat and ball are equally. That's beautifully bowled. But all the accolades for this man, Jigar. Every time in your life you need someone who is there for you every time, in family, in your careers. He's such man in a cricket match, Jigar, who's taken the responsibility of the whole innings on his shoulders. And this is not good running. This is in fact calling from outside, which is poor. You cannot be calling from outside. The man who has played for the players in the dugout almost made him run that forcibly. That wasn't a good second run. Thankfully, he is safe. No point giving your wicket away when you are just starting to middle every ball. Agreed, they had to go for the second, but that was almost non-existent second run. There is a lot of excitement when you sit on the dugout and you just start screaming and shouting. Things do change. But some interesting stuff now. Some fiery cricket now. You can see a few sixes boundaries coming in now. This is very good bowling, but not that great fielding. You need to bend down. He has been hurt. The ball comes in quickly. Most of these guys are very, very successful professionals in their careers, in their whatever projects they have, whatever small or big businesses they have, and they are not the ones who play the cricket every day. They are sitting in the nice, cozy, comfortable cubicles, and this is where they have come back to play with their community, be with their
mates and play the game which they love and have a lot of passion about it. That's nicely bowled. With that single, the score will move on to 86. In fact, it's 85, 85 for 4. The last two balls of the 14th over. Almost 38 runs scored in the last 20 balls. Well, that's nicely bowled. Very well weighted for that ball. And he gets a single, goes to the then. Now Jigar has done a lot of scoring, and Neil Shah has been also very good in the last few overs. Now they need to switch responsibilities now. Now Jigar needs to go and get those singles, and Neil Shah can go for this bigger shots. He's the man who has a lot of energy left in the tank, and he's played half the balls. Yeah, he can go for his shots like this. Up and over into the covers. This will be racing towards that extra cover boundary, and they get an easy couple. With that brace, the tally of the last 4 overs is exactly 40 runs now. 1 run short, is it? So 1 shot it is. The umpires are very vigilant, like just like the CCTV cameras. 39 runs in the last 4 overs. Beautifully bowled. That's not a bad ball, that's a very good ball. The batsman missed, the wicketkeeper missed, and they get 4 byes. Sometimes the numbers don't tell you the exact story. You may see the result of 4 byes, but that was a pretty handy ball. But that's not going to bother DPX Dynamites. They will take all these runs with both hands. TVX Tufanis, they would be almost assured of a semi-final place if they win this one. DPX Dynamites, they are fighting. That's very well bowled. The best part for Jigar would be to now take single, go to the other end, wait for a bad ball and then dispatch it for a boundary. Other than that, he needs to garnish, manufacture, fabricate the strike and give it to Neil Shah now. He can be the one who can be the aggressor because he has lot of power left in the tank, Neil Shah. But Jigar has played so very well. Jigar is the one who has created all those opportunities. He has been that pillar which has held this team together. He has been that glue which has got this innings together bounded. Let's see. 91 for 4. Oh, what a good shot that is, straight down the ground, beautifully played. What a crisp, scintillating, super shot that is. KD Corporation, fantastic boundary that is, beautifully played. What a good shot that is. KD Corporation boundary coming in at the right time. Oh, that's an under edge. That's some fortune. There is some good fortune. Fortune favoring the Brave. One very good shot down the ground. One little fortuitous. And this you get. At times you work very hard. You don't get results for it. At times for very little work you get rewarded. That was one such incident. A lot of fortune for the batter. Not so for a very good bowler Mayank, who has bowled brilliantly in the last match. Even in this match he has bowled well. But that under edge going past the short fine leg, the scoring has taken a hit. It has gone. Can you imagine 52 runs in the last 4.4 overs? This is super stuff. 52 in the last 4.4, 47 in the first 10. It has been the story of 2 innings. That's very well played. Someone has given them nice booster toxin vaccine, I think, and this is not good running.
They cannot be risking Neil's wicket. But it's 100 up. Fabulous change of events, turn of events over here. 54 runs in just 29 balls. This is super stuff. Are we watching some other match? The first 10 overs was some different match. The next 5 overs is some different match. The attitude has changed, the approach has changed, and it is just so good to watch. So the score at the end of 15 overs is 101 for 4. Back live now. So it's gonna be Jinesh Wasa. He bowled first over very well. Oh, that's a full toss. That's a gift. That's going long. Oh, that would be. It's just wait for the umpire signal. Is it a sixer or a boundary? It's a very good KD Corporation boundaries. Many KD Corporation boundaries and sixers. It's raining KD Corporation boundaries and sixers in this Fatima ground over here. Oh, he goes for it again. And that's in the cow corner. There's fielder over there. That's a good fielder. Mayank or Mihir, I don't know who is. But some good work was done over there. The score is 106. Massive 59 runs in the last 5.3 overs. The run rate, which was around 4.7, has just skyrocketed to 6.84, which is superb, scintillating stuff. 140 is a probability now. They say 137, 140 is in cards. This is beautiful hit. Great work by the fielder over there. I think that's Prince. So 107 for 4. Prince is a very dynamic character as well. Love the way he plays his game, and he's fielded well over there. But what good batting this by Neil and Jigar. They have been just so good to watch. 107 for 4, exactly 60 runs in the last 5.4 overs, which is super stuff. 34 balls and they've scored 60 runs. This is beautifully bowled Yorker. Immaculate line and length by Jinesh. He has been hit for a boundary, has got given away 6 runs, but that was a good comeback ball. Last ball, I strongly think it would be a boundary or a wicket ball. I strongly feel something's going to happen on this ball. You just might see Jinesh picking up Neil's wicket, or Neil might go for a big one, boundary or a sixer. Very strongly I feel this. Something's fishy going to happen over here. Last ball. He goes for it. That's what I was talking about. Just short of the fielder over there. And he is in the mood, this guy now. The score at the end of 16 overs is 108 for 4. Jignesh is on the 46. Neil is on 34. And these guys are going great gun. They have scored almost 61 runs in the last 6 overs. DYZB Bearings, a very big name in the industry of ball bearings, 4 taper roller bearings, 2 wing bearing, application bearings, and everything which is related to ball bearings. These guys are right up there. And if you want to contact us, there are a few numbers
and the website is given over there for you to contact. So www.dyzv.in, www.dyzv@dyzv.in. 9833-85785-804 are the numbers to that one. We come back to the live pictures now. 108 for 4, 24 balls remaining. Even if they get 9 runs per over, that would be 144. And projected score as per the given run rate is 135, but 140 is a probability. If they bat well, it's going to touch 150. So let's see whether it's going to be 135, which is the projected score by our system over here, that 16.75 runs per over. If they go bat slightly better, it would be 32 runs in 4 overs. That is 140, which is a strong probability. And 2 of these batsmen of that remains for the last 4 overs is going to touch 145. So all 3 scores possible: 135, 140, 145. And if they go really mad, it's going to touch 150 as well. Let's see. But they have some good bowlers. TVX Tufanis have the best set of bowlers, especially this man. He was simply superb yesterday. Mihir, he bowled so very well. Bowls with nice smooth action. Picked up 3 wickets yesterday. Mihir, he comes back. He has bowled very, very economical today. But that wicket column is still 0. The last over of his spell. That's good. That's nicely hit. Oh, is that a wicket? Thankfully he is in, because he's closing in on the second half century of the tournament. It was Sahil Parekh, of course, who got that first half century. Many batsmen went into that 40s. Some of them closed in on to late 30s, but very few have been able to get their half centuries. It is a different story this year. Last year there were so many 50s being scored, and people were having at least 3-4 batsmen who were in good nick last year. And maybe this year the stories have changed. People were more adherent towards fitness, because that was a COVID time. People were spending more time on their health and maybe a little practicing a bit more. Now they are running behind money now, trying to make up for the losses. So maybe that's the reason they are not in that great touch. But that's beautifully bowled. Now he is a very experienced man. It's very easy to give advice from here, but for me and for the team's cause, Jigar, the way he got his runs previously, it's very, very nice to see this kind of commitment. 46 of 51. Oh, that was too far away from his body. No point getting runs swinging the bat like this. One should remember the way you are successful. You got those runs not by swinging the bat just wildly. You have got those runs because you have a very strong technique and you play normal cricket. So why do you change the way you play your cricket? Of course, the intent should be there. You should be more aggressive, but not give away your natural game, which is, yeah, playing authentic shots like this. You may not get runs almost every time, but there are possibilities there that you may hit the gaps and you get forced through those kind of shots as well. 110 for 4, which has been a good comeback over just a couple of runs. This man is absolute gold dust when it comes to bowling, with fine spells, economic spells, and taking wickets. Today it wasn't his day to pick wickets, but he has bowled well and almost bowling at an economy rate of 3.75 or 4. But against Neil it would be difficult for him to contain, because Neil might go for a big one. He might get a boundary or a sixer on this ball. That's what I was talking. The ball is swiveled, turned, and it is running past. This would be another KD Corporation boundary. What a good intent it is. It wasn't, I won't say it's the best possible shot to play, but that's a shot which is going to fetch him a few runs. That's a shot which will ease the nerves of DPX Dynamites and this team, who was down in dumps, and they have scored 64 runs, in fact 67 runs in the last few overs. In fact 7 overs and 67 runs. That's brilliant. Oh, that's beautifully hit. That is racing towards the covers. There's a fielder over there with that single. 8-run over. The score is 115 for 4 at the end of over number 17. We have seen some super stuff by this man.
Yes, back live. We are last 18 balls of complete entertainment. That was a very good over and up until that boundary which was hit. But Neil, very quietly, without anyone's knowledge, has come quietly to 40. Remember, 8 balls, he was just 3 runs. And just after that interval, I don't know what tonic someone has given him, some words of encouragement and some free advice has worked very well for them. 115 for 4 last 18 balls. 135 is a certainty, 140 is a possibility, 145 also is on the cards. Oh, that's not the shot which he has played. Every time he has come down the ground, he has connected the ball. This was slightly outside the off stump, and nothing special in that ball. He just held its line outside the off stump, bowling at that good length, keeping it away from that hitting arc. So 17 balls remaining, 115 for 4. Oh, that's a full toss. That's beautifully hit. That's going to be a KD Corporation maximum. What a shot. What a player. He has been the one who has got the innings moving. It was a beamer. It was a full toss. It was a gift, but that has to be hit out of the park. That was hit disdainfully with minimum effort, and he has got the maximum return. He's a long, long way away. KD Corporation maximum. And this man is looking fabulous. That 7 runs are going to help, and it's going to create some problems for. Oh, what a shot again! He goes for it. It's a free hit, so he'll go for it. Look at Jigar, fabulous running. People are looking at Neil, but I really love this man now. Jigar, he has been simply superb. Oh, he's been given out. Acha, one shot it is, one shot. I thought the finger umpires, one finger up, I thought he has given him out. But that's one shot. It's not Jigar, but it has been Neil who has faltered by not crossing that line. You cannot touch, you have to cross that line. Umpires are very vigilant. Both the CCTV umpires, not CCTV umpires, CCTV cameras they are. 123. Look at, very unique. 1, 2, 3, 4. 123 for 4. Oh, what a shot! No two ways about it. It is a KDC maximum. KD Corporation sixer. Diwali has come in the month of January. That's the 50 for this man. 53 of just 31. The best innings of Jinharsh Timken Ador 2023 against the balls. They were pushed against the balls. They were down and out. They were pressurized. They were 47 for 4 at the end of 10 overs. And they have got almost 82 runs in 7.3 overs. Can you imagine? 85 in fact. Oh, he goes for it again. This man is looking in some superb touch. And look at that KDC sticker. It does not want to go away, because I strongly feel KDC, another boundary or a sixer is on the cards. KDC, of course, are 4 and 6 sponsors, and we just called out for someone who's going to help out in sponsorship. Before even we could give them a call, they said we want to sponsor anything, whatever you wish for, and we offered them this, and KD Corporation is the right person to be there for this one. We have seen some fantastic KDC boundaries and sixes. Oh, that's so good to see. That is so good to see. The ball just ricocheted off the bat, hit the body, and it has gone on to the wicket keeper. Umpire did not give him out initially. He has come out on his own. This is so good to see. Great sportsmanship on show. And this man has played one of the best innings. And everybody congratulating him. That is so good to watch. Is he bowled? I thought he is caught, but he is bowled. Clean bowled. So I need to change my glasses. I was just going gaga over his sportsmanship. In fact, he was clean bowled. I thought it would hit his bat, the body, and had gone on to the wicket keeper. In fact, he is clean bowled. So the score is 129 for 5. I had a very tight schedule as a commentator. I shouldn't be discussing these things, but was working for so many hours, and I was slightly feeling dizzy. But all that dizziness, all that fatigue, all that tiredness, everything has just been washed off by some brilliance by this man Jigar. And more importantly,
more importantly, I'm not self-boasting myself. When it was 47 for the first few deliveries, that's what I said. I feel this Neil and Jigar both they look very good when they have played us few little shots. Jigar was well said, but Neil's few shots I could see that he's a player who can make a difference. And thankfully, my words have been proved to be right, because not it's not something which I have to be feeling proud about, but I'm just happy that that man has delivered, and he has put up a contest against a very strong team. 129 for 5. 5 wicket. 5 wickets for Ronak. Yes, all 5 to Ronak. 5 for विकेट हो गया ना वो भी पहले में 2 लिया था मेरे जितना हो गया Vicky is more worried about his top bowling, and he has come here to see this is a young Gujarati who wants to be on the top all the time. And okay, almost the same. So Vicky has got 7 wickets, and he is on the top, and he just came to inquire how many Ronak has got, and use that F word to describe that, because even Ronak has got 7 wickets now. Ronak, even if you see what did I say yesterday, I feel Ronak is one of their best bowlers. He got only 1 wicket, and after that 1 more wicket, but he got the wicket of Nirav Shah, and before even getting that wicket I said he looks to be one of the best bowlers, and he's proven me right again. So all my little experience which I have seen these players in the last 1 or 2 years, things are working out. First 5 wicket haul of the tournament to Ronak, all 5 to Ronak. But he was hit for 2 big sixes in this over. Just spoiled his figures. His figures before this were looking fabulous. 16 runs in this over, and he had given just 8 runs in the first 2 overs. He has 1 more over. In fact, he has finished his quota. Prince Doshi, who comes in now. Prince Doshi, the score is 131 for 5. And what a scintillating knock we saw. A great example of some great hitting. Good comeback. Last 12 balls remaining. That's what I was saying. 135 is a certainty. 140 if they play well. 145 if they get mad. And now with this current scenario, even 150 is a possibility. And would love to see Jigar get his half century. It has been one that hard working knock. You had one glamorous player in Neil, and we had this man of complete resolve. Prince, I don't want him to be run out. That's the only thing. The ball is just trickling down. No, can't be running. They all want Jigar to run and get himself out. They do not understand the game. Jigar needs to stay there. He needs to get his half century, and he might even hit a couple of boundaries. Now it's the time not to run, but to get few boundaries also. You can't be an Usain Bolt running over there. Running has to be done right, prudently and properly. So the score is 133 for 5, 11 balls remaining. It's going to be Parin Thakkar. That has to be only one. Jigar should keep strike. He's on a suicidal mission. This is super stuff from. Is he out? That's what I was worried. He missed out on a well-deserved half century. His friends in the camp forced him to run that second run. But this is, I think, as good as an innings of Neil Shah, if not better, because he was the one who stayed there when the going were tough. Neil Shah came in, fought like a lion, but this man's resolute efforts are the ones which are responsible for taking this team to this kind of score. 134 for 6. Jigar just played like his name. It was a Jigar Baz innings, and he kept on fighting, gave his wicket for his team. 134 for 6, 10 balls remaining. What a shot this is! Super stuff! What a fabulous swing of arms! They got this energy from their mates, they got that confidence. There is no other tonic in the world better than confidence, and especially it is rubbed off with players like Neil, who went in and say it's very easy, just go and swing your bat. The most important thing for achieving something is belief. If you believe that you can get that thing, you're definitely going to get that. So that belief has been instilled by the other players, into the other players by Neil, and it has worked well. 138.
हाँ परिन नहीं मारा. हाँ तो परिन नहीं. अच्छा उधर. जिगर नहीं है, जयेश है, जयेश. अच्छा उधर गड़बड़ हो गया. साइड नहीं दबाएगा, हो गया. हाँ. जयेश में जय मत लिखो. Oh, what a good shot that is! Will it go for an oh beautiful stuff, super stuff by the fielder over there. 138. In fact, just a single. 139 for 6. This is super stuff now. They got 7 runs in the first 4 balls, and we might see another KD Corporation boundary or a sixer coming in. उधर क्या ऐसे ऐसे कर रहा है? So the score is 140 now, 140 for 6. Last 7 balls remaining, and if somebody had told 120 is a possibility at 10 overs, they would have laughed at him. 135 they would have counted him as mad. 135 they would have considered as imbecile, and 140 150 was out of the dreams as well. But they've crossed their own limits. They've got almost 93 runs in the last 8.5 overs. First 10 overs 47, next 8. Oh, that's very high full toss, but they might. Will they go for a second? No, they won't. With that single, the score moves on to 141. 19 overs 141. Will they get 100? In fact, they are on the way to get the 100 in the next 10. They have got 94 runs in last 9 overs. More than 10 runs per over. Can you imagine? 9.5 runs per over. First 10 overs 4.7. Next 9 overs 9.4, means double the run rate in the next 9 overs. Will they get 100 runs in the last 10 overs? They need just 6 runs to do that. And will they get to 150? That's a big question. So what change of events this has been? This story is almost like a South Indian thriller, where the hero comes back strongly and hits everyone with a single punch. Oh, what a good shot! This is inside out into the covers. Oh, there's protection. Generally there are no fielders over there. With that brace, the score will move on to 143. He is one of the better bowlers, is Mayank. He is the most economical one, Mayank Shah, the miserly bowler. 1 4 3 4 6 last 5 balls. The miserly Mayank. Oh, this is high, very high, not that far. Catching practice. Beautifully taken, easily taken like a small child. Bounce. It's Mihir. Yeah, he is their MVP. He is their most important player. In fact, Mihir has also bowled well. But some good contribution by Parin Thakkar. Short and sweet cameo. Just like you have seen Salman Khan or Shah Rukh Khan coming in each other's movie as special appearance. This guy was indeed super special appearance by Parin Thakkar. The small little contributions go a long way, and they are the ones who add that flavor to it. Every time you get something nice to eat, that little chart powder on the top of it gives some flavor to it. That kind of innings it was. Wonderful innings. It's like placing a cherry on the top of the cake. That kind of innings was of Parin Thakkar. But all the dessert was arranged nicely put by Neil and Jigar. Jigar was that important ingredient, the bounding factor. Then that all the delicacies which were put onto it was Neil Shah. And innings like Parin are the cherry on the top of the cake. 143 for 7. The last 4 balls are going to come. And will they get 150? That's a big question. I don't think, because Mayank is a pretty handy bowler and he won't allow the 7 runs. Only way they can get is by just swinging the bat and running like mad over here. They have to convert those 1s into 2s into 3s. Yeah, something like this. They need to run hard. They have to run ragged. Yeah, just like that. Bhag Milkha Bhag. That's what the mantra should be. Oh, what a throw that is. Super stuff. Oh my God, that's what I was talking. This would be mad running now. They get 3. See, look at the non-striker. Look at the non-striker. Oh my God, that's what I said. Complete harakiri. And he was almost run 5 runs. We'll wait for the umpire signal. So much drama happening. The non-striker ran 5 runs. Yeah, let's see whether he is safe or he has to go back. And his only point of contingency was
and the bowler was smart over there. Once the bails are dislodged, you need to uproot a stump and hit it. Otherwise, also you can just take the ball stumps and hit it. That's also fine. Nowadays, it's a fashion that people uproot a stump and then show it like this. Even if you hold it and do it, that's fine. That's fine. If you dislodge it, you take the ball and dislodge the stumps completely, uproot them. That's fine. 3 रन कंप्लीट किया, 3 रन, तो स्कोर 2 ही हुआ, 4 है ना. 146 for 7. $146 for 7. चाली पड़ी है सारी दो फर्स्ट क्लास मेरा कल बैठ रही है Again, लेकिन है ना, that's very important. So 146 for 7. Mr. Bhavin is here. He wasn't there. Maybe the family has just scolded him. He is spending a lot of time over here. So Bhavin is here now after almost a day. He wasn't here today. That's very rare. Vipul was here some time back, very infuriated because he wanted all those things perfect, and that's good. Yeah. Three runs should be added to the total. Yes. So a lot of drama over there, whether it was 3, whether it was 4, all everything whatever I'm saying is coming true. So this is my day now. 146 for 8. I said they are going to run ragged. That's what they are going to happen. 146 for 8 now. Last 3 balls. Oh, this is not a good shot. An agricultural shot. That's what I was talking about, Mayank. He is just superb. 146 for 8. 2 run outs in this over. That's nicely hit down the ground. Will it be a KDC maximum? No. They move on to 147. Exactly 100 runs in the last 9.5 overs. I think the score will remain like that. There would be a wicket of the last ball. I strongly feel that. But a boundary will cross it to 151. I strongly feel there would be a wicket on this ball. Oh, that's it. They need a couple so that the target would be 149. So what a romantic story this has been. 47 runs in the first 10 overs and complete turnaround. 90. Oh my God. The umpire is so cruel. The number of 150 has been brought back to 148. One shot it is 148 for 8. It could have been 149 for 8 and target would have been 150. But can you imagine 101 runs? In the Hindus they say 51, 101 is always a pious number, a lucky number. So 101 runs in the last 10 overs, 47 runs in the first 4 overs. They lost 4 wickets in the first 10 overs. They lost 4 wickets in the next 10. But more importantly, they got more than 101 runs, 4.7 runs per over in the first 10, 10.1 runs per over in the next 10. 149 is the target for the Tufanis. Let's see whether the Tufanis have it in them.
सो वेलकम बैक टू द ऑल आवर व्यूअर्स। सभी दर्शकों का फिर एक बार तहे दिल से स्वागत है। आप देख रहे हैं नागदेवी स्पोर्ट्स ग्रुप प्रेजेंट्स जिनहर्ष टिमकिन एडोर कप 2023 सीजन 4। टाइटल स्पॉन्सर जिनहर्ष सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। फूड स्पॉन्सर्स DY-ZB बेयरिंग इंडिया सॉल्यूशंस मिस्टर राकेश वाघेला, मिस्टर निशांत शाह। ग्राउंड स्पॉन्सर विकास एंटरप्राइजेस मिस्टर विकास गुप्ता। अपीरियल स्पॉन्सर्स नवकार एंटरप्राइजेस मिस्टर प्रकाश बिलाकिया, मिस्टर सागर बिलाकिया। यूट्यूब लाइव स्पॉन्सर मिसेस भाविन इम्पेक्स मिस्टर चित्रेश उडानी एंड मिसेस NK ट्रेडिंग मिसेस श्री श्याम इम्पेक्स मिस्टर अजय अग्रवाल। मीडिया पार्टनर किवालेज मिस्टर संजय भाई शाह, मिस्टर कुणाल शाह, मिस्टर हरीश मेहता। तो सभी दर्शकों का तहे दिल से यहाँ पर स्वागत है। जीत के लिए लक्ष्य की अगर बात करें तो 148 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, यानी 149 रनों का लक्ष्य। 20 ओवरों का ये मुकाबला यानी 2020। इट्स अ थ्रिलर ऑफ 2020। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, इस प्रतियोगिता का ये दूसरा दिन। पहले दिन हमने देखा था 3 मुकाबले और इस दूसरे दिन में भी 3 मुकाबले यहाँ पर। उसमें से दूसरा मुकाबला इस वक्त चलता हुआ शाम का समय, खुशनुमा माहौल, लाइट्स पूरी तरह से अब इफेक्ट ग्राउंड पर ले चुके हैं और खिलाड़ी हमारे तैयार है, दोनों ही बतौर सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर। TUVX तूफानी बनाम DPX डायनामाइट, इन दो टीमों के बीच चलता हुआ मुकाबला। क्या बेहतरीन पहला सत्र रहा यहाँ पर। पहली 10 ओवर गेंदबाजों का बोलबाला, जिसमें महज 47 रन आए, 4 विकेटें खोए थे, लेकिन आखिरी 10 ओवरों में कुल 101 रन आए। हालांकि 4 विकेटें वहां पर भी खोई, लेकिन एक डिसेंट टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। और इसका संपूर्ण श्रेय अगर किसी को जाता है तो गेंदबाज रौनक, जिन्होंने 5 विकेट ऑल लिया। तो चलते हैं, ऑल सेट फॉर द रन चेस। यहाँ पर पहली गेंद पैड लाइन पर थी, अंपायर का इशारा यहाँ से आता हुआ, इट्स अ लेग बाय। तो पहली अतिरिक्त रन स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित होती हुई। जीत का लक्ष्य 149 रन, जिसमें से पहला रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। 2 सलामी बल्लेबाज महल शाह और जिनेश इस वक्त मैदान के अंदर और गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए। हालांकि जिन्होंने अपना अर्धशतक बनाने से चूके 47 रनों का योगदान दिया, वही जिगर इस वक्त गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए। पहली गेंद लेग बाइज, दूसरी गेंद बेहतरीन कमबैक यहाँ पर, और लगातार यही करना होगा। पहली 6 ओवरों में दबाव बनाए रखे तो इस 149 के टारगेट को भी यहाँ पर डिपेंड किया जा सकता है। देखिए शाम का सत्र है, थोड़ा सा ठंडा माहौल। इस बार अंदर आती हुई गेंद, बेहतरीन गेंद, मैं कहूंगा आखिरी समय पर अपना बल्ला अड़ाया। तो खुशकिस्मत रहे, काफी तेजी से गेंद अंदर आई थी और लगातार इस तरह की गेंदें देखने मिलेंगी, क्योंकि ये विंटर सीजन यहाँ पर चलता हुआ। तो ठंड जरूर महसूस कर रहे सभी दर्शक, सभी खिलाड़ी, और ऐसे खुशनुमा माहौल में गेंदबाज के लिए स्विंग जरूर मौजूद होता है, और वही स्विंग यहां पर देखते हुए। इस बार अच्छी गेंद थी, लिमिट ऑफ रीजन में इस गेंद को धकेला। हालांकि कोई रन यहां पर नहीं, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ियों ने आपस में एक प्रॉपर कॉलिंग। देखिए जब भी आप रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं, आपके पास 3 कॉल्स होते हैं, यस, नो एंड वेट। तो यहां पर वेट कहा, यानी इंतजार कीजिए, शायद यहाँ पर धोखा हो सकता है, यहाँ पर नुकसान हो सकता है, यही कहा। अब इस बार गेंदबाज के बगल से इस गेंद को निकाला मिड ऑफ रीजन में। खिलाड़ी गेंद को जब तक आए उठाए, दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था। सिंगल यहाँ से आता हुआ, लेकिन लगातार स्कोर कार्ड को मूविंग में रखना चाहेंगे, क्योंकि पहली 6 ओवरों में यदि 50-55 उसके करीब रन देखना चाहेंगे दोनों ही बतौर सलामी बल्लेबाज। एक बुलंद हौसलों के साथ मैदान के ऊपर उतरे हुए। इस बार बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन मिस कर गए, और जिगरबाज गेंदबाजी, पहले बल्लेबाजी और उसके बाद क्या बेहतरीन गेंदबाजी। यहां से आता हुआ ये विकेट। वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज प्रेजेंट्स एक्सल विकेट, यहां से आता हुआ। देखिए शुरुआती झटके देने जरूरी है जब आपको 149 रनों को डिफेंड करना है। हालांकि देखा जाए तो T20 में 149 एक बड़ा टोटल नहीं कहा जाएगा, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि जिस टोटल को आप इजीली अचीव कर सकते हो।
तो यहां से पहला विकेट आता हुआ। तो ये अनएक्सपेक्टेड था कि यूवीएक्स तूफानी, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन, बतौर डिफेंडिंग चैंपियन इस श्रृंखला में, प्रतियोगिता में पिछले साल के विनर रह चुके हैं, एक बुलंद हौसलों के साथ ये टीम इस प्रतियोगिता में आई है। लेकिन पहले ही ओवर में विकेट खोना, मैं कहूँगा कि ये शुभ संकेत नहीं है। यहाँ से संभलना होगा और जितना जल्दी अपने आप को संभालेंगे। एक ज़रूर विकेट खोया, यहाँ पर एग्रेशन दिखाना चाहते थे, थोड़ा सा पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाहते थे, इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, लेकिन लाइन को मिस कर गए। इस बार देखिए थोड़ा सा साइड स्क्रीन में कुछ यहाँ पर ज़रूर तकनीकी कुछ कमियां वहां पर, तो शायद बल्लेबाज ने हटना बेहतर समझा। और यही होता है, जब आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप रोक दीजिए बतौर गेंदबाज, बतौर बल्लेबाज। इस बार अच्छी गेंदें ड्राइव किया अलोंग द कारपेट, थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ और मौका बनता हुआ यहां से। देखिए जहां जहां मौके मिले आपको लगातार सिंगल स्कोर कार्ड के ऊपर आना है, और जहां पर खराब गेंदें मिलती है वहां पर आक्रामक बल्लेबाजी करना है। बल्कि ये नहीं कि अच्छी गेंदों के ऊपर अगर आप बड़ा हिट लगाने की कोशिश करेंगे तो वही होगा जो इस वक्त मैदान के अंदर हुआ। एक अच्छी गेंद थी, अंदर आती हुई गेंद थी, इस गेंद को कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, लाइन को परख नहीं पाए, गति को परख नहीं पाए, लाइन को मिस कर गए और पहला विकेट यहां से जाता हुआ। तो नए बल्लेबाज राजीव शाह और उनके साथ सलामी बल्लेबाज जिनेश नील यहां पर गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए। हालांकि पहले ओवर में सफलता अर्जित की थी जिगर ने, बल्लेबाजी में जिगर दिखाया था, 47 रनों की नायाब पारी खेली थी। और उसके बाद गेंदबाजी में क्या बेहतरीन शुरुआत। मैं कहूंगा किसी खिलाड़ी का जब दिन होता है तो वो खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करता है अपनी टीम के लिए, और वही करते हुए जिगर इस वक्त नील। देखिए दूसरे ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 50 रन बनाए थे इस प्रतियोगिता का, दूसरा ऐसा खिलाड़ी जिसके नाम के ऊपर 50 रन है। कल के दिन में हमने देखा साहिल जिन्होंने 50 रन बनाए थे। आज भी साहिल ने नायाब पारी खेली, शायद मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं पहले मैच के, साहिल पारेख। और अब नील जिन्होंने 50 रनों की नायाब पारी खेली। इस बार अच्छी गेंद थी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप ड्राइव लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। देखिए रनों की बात करें तो 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। पारी का दूसरा ओवर यहां पर चलता हुआ, जीत के लिए लक्ष्य 149 रनों का। 148 रन बनाए थे पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए डीपीएक्स डायनामाइट्स टीम ने। हालांकि डायनामाइट जैसे बल्लेबाजी पहले 10 ओवरों में नहीं हुई, लेकिन आखिरी 10 ओवरों में क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। गेंदबाज नील, इस बार अच्छी गेंद थी, पिच होने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई। देखिए बल्ले का ऊपरी किनारा लगा था, शायद बैट का फेस जल्दी क्लोज किया था, तो यही कारण था कि बल्ले के एज पर लगी ये गेंद, और जहां खेलना चाहते थे इस गेंद को शायद गेंद वहां पर नहीं गई। खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। सिंगल यहां से आता हुआ, टीम के टोटल की बात करें तो 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर पारी का चलता हुआ, राजीव शाह और जिनेश वसा इस वक्त मैदान के अंदर। ये अच्छी गेंद थी, बॉलर्स बैक ड्राइव, तो बेहतरीन गेंदबाजी। दोनों ही सलामी गेंदबाजों की सराहना करनी होगी, क्योंकि नई गेंद है, हार्डनेस है गेंद के अंदर, और गेंदों को लहराने में कामयाब हो रहे हैं दोनों ही गेंदबाज। पहले ही ओवर की दूसरी गेंद हमने देखा था, क्या बेहतरीन स्विंग देखा था, और उसके पश्चात नील भी लगभग उसी तरह से गेंदबाजी इस अपने पहले स्पेल में, पहले ओवर में करते हुए। देखिए आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, स्क्वायर कट करना चाहते थे, लेकिन चूंकि दूसरे ओवर का खेल भी यहां पर समाप्त होता है। 2 ओवरों की समाप्ति के पश्चात टीम की टोटल की बात करें तो 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
तो बिटवीन द ओवर्स आपने देखा हमारे स्पॉन्सर्स जिनके बदौलत इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में काफ़ी अहम रोल अदा करने वाले ये सभी हमारे स्पॉन्सर्स नागदेवी स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स जिनहर्ष टिमकेन एडोर कप 2023 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 4 और टाइटल स्पॉन्सर्स की बात करें तो जिनहर्ष इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। बैक टू द क्रिकेट। 2 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। हालांकि सलामी बल्लेबाज जरूर यहाँ पर खोया है तो थोड़ा प्रेशर इन एट नंबर 3 राजीव शाह इस वक्त मैदान के अंदर है। स्ट्राइकिंग एंड पर है बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज जिनेश वसा। जिगर के हाथ में फिर एक बार गेंदबाजी की बागडोर। इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, शॉर्ट ऑफ भूल करना चाहते थे खिलाड़ी को, वहां पर बीट किया। बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट्स वहां पर देखिए, काफी दूर से खिलाड़ी आए, क्या बेहतरीन एफर्ट रहा यहां पर। लेकिन इन बिटवीन इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कुल रन अर्जित किए इस गेंद के ऊपर। देखिए दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हुए, क्योंकि एक पार्टनरशिप को बिल्डअप करना होगा। रनों की अगर बात करें तो इस गेंद के ऊपर राजीव शाह ऑन स्ट्राइक है तो सिंगल रन यहां से आता हुआ। 7 रन ऑन द स्कोर कार्ड। इस बार शायद इस गेंद को देखते रहे थे, हमें लगा कि 3 रन इन 2 खिलाड़ियों ने दौड़कर पूरे किए, लेकिन नहीं, यहां पर एक ही रन से संतुष्ट हुए दोनों ही खिलाड़ी, क्योंकि गेंद को आखिरी वक्त तक देख रहे थे। शायद उन्हें लगा कि ये गेंद बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाएगी। पहला रन काफी तेजी से जब लेते हैं आप तो दूसरे रन की संभावना जरूर वहां पर बनती है, लेकिन यदि आप गेंद की तरफ देखते रहे तो शायद हो सकता है कि कुछ इस तरह का मंजर आपको मैदान के अंदर देखने मिले। जहां पर 3 रनों की संभावना थी वहां पर महज मिला 1 रन। तो ये आने वाले समय में कहीं पर आपको जरूर। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग रीजन 38 सर्कल में। देखिए काफी तेजी से गेंदें कर रहे हैं। तेज गेंदबाज बतौर तेज गेंदबाज जिगर इस टीम में शामिल किया गया। ये एक जेन्युइन ऑलराउंडर है। बल्ले के माध्यम से 47 रनों की नायाब पारी खेली और उसके बाद पहले ही ओवर में आते ही विकेट चटकाया। शुरुआती झटका दिया, दबाव बनाने की कोशिश की और वही दबाव लगातार यहां पर बनाने का कोशिश करते हुए। इस बार मिडल एंड लेग स्टिक पर गेंद थी, कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ दिया। एक और सिंगल स्कोर कार्ड पर आता हुआ। विद दिस सिंगल स्कोर मूव्स ऑन टू 9। राजीव शाह एंड जिनेश वसा इस वक्त मैदान के अंदर। जिगर, ये अच्छी गेंद थी, पिच होने के बाद सीधी निकली गेंद और थोड़ा सा उछाल भी यहां पर देखने मिला। सो विद दिस सिंगल स्कोर मूव्स ऑन टू डबल फिगर, यानी कुल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जिगर की अगर स्पेल की बात करें तो अपने स्पेल के 2 ओवर कर चुके हैं, 6 रन देकर एक महत्वपूर्ण विकेट अर्जित करते हुए। सो 3 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 3.33 की औसत से अब तक 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी जीत की बात करें तो 139 रनों की जरूरत है, यानी रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 8.18। 102 गेंदे 139 रन जीत के लिए। लक्ष्य की अगर बात करें तो लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती, जब तक आखिरी रन नहीं ली जाती, किसी भी तरह की भविष्यवाणी करना यहां पर उचित नहीं होगा। गेंदबाजी में कोई बदलाव नहीं, यानी गेंदबाज नील तेज तर्राज गेंदबाजी यहां पर करते हुए बेहतरीन गेंदबाजी है। नील की गेंदबाजी की खासियत अगर देखें तो आउटसाइड द ऑफ स्टंप लगातार गेंदें कर रहे हैं। पेस है उनके पास, गति है
और एक आध गेंद विद इन द विकेट्स, विकेटों के बीच में भी डालते हैं, तो सरप्राइज डिलीवरी होती है बल्लेबाज के लिए। हालांकि माइंड बना लेते हैं बल्लेबाज का, सबसे पहले 2 या 3 गेंदें लगातार आउटसाइड द ऑफ स्टंप करते हैं और एक आध गेंद लहराती हुए अंदर आती है तो शायद दिक्कत कर जाते हैं। इस बार पाइडलाइन से बट के फाइन लेग को बीट किया, 30 यार्ड सर्कल को बीट किया और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। केडी कॉर्पोरेशन फैबुलस 4 यहां से आता हुआ। देखिए इस तरह की गेंदों के ऊपर आपको अंकुश लगाना होगा, क्योंकि एक माहौल आपने बना लिया है। पहले 6 ओवरों में विकेट अर्जित करना चाहते थे, वो विकेट आपको पहली ओवर में मिला, लेकिन उसके बाद यदि इस तरह की गेंदबाजी होगी तो ये 149 के टारगेट को डिफेंड करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर साबित हो सकता है। यदि इन 149 रनों को आपको डिफेंड करना है तो अनुशासन भरी गेंदबाजी लगातार आपको करनी होगी, लाइन और लेंथ के ऊपर कंसिस्टेंटली आपको गेंदबाजी करनी होगी। इस बार लॉफ्ट किया है गेंद को, काफी देर तक गेंद हवा में, क्या यहां पर मौका बनता हुआ, खिलाड़ी गेंद के नीचे आखिरी समय पर शायद तकनीकी करा भी, क्योंकि जो सामने लाइट्स है बराबर उस खिलाड़ी के सामने, आंखों के ठीक सामने वो इलेक्ट्रिक पोल है जहां पर ये एलईडी लाइट्स है, और शायद वही दिखाते हुए अपने कप्तान को कि शायद वो लाइट्स उनके आंखों में आए थे और आखिरी समय पर लगभग इस कैच को लपक लिया था। लेकिन मैं कहूंगा कि भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, यहां से रन आता हुआ मैच एक इस वक्त मैदान के अंदर। देखिए राजीव को यहां पर मौका मिला है तो जिनेश आए है स्ट्राइकिंग एंड पर। इस बार अच्छी गेंद थी। अब दोनों ही बल्लेबाज समझ चुके हैं कि यहां पर विकेट की अहमियत को, क्योंकि यदि समय बिताते हैं, पहले सत्र में हमने देखा 4 विकेटें खोई थी, जल्दी 47 रन आए थे पहले 10 ओवर में, लेकिन आखिरी 10 ओवरों की अगर बात करें तो बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 10 रन प्रति ओवर से भी ज्यादा यानी 101 रन बनाए थे आखिरी 10 ओवरों में। तो यही कुछ अपने जहन में रखते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए, बेहतरीन गेंद थी, हालांकि फुलर लेन की गेंद विकेट के अंतिम चरणों में गेंद को किया था। तेज गेंदबाज की इन गेंदों को ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। देखिए सबसे घातक अस्त्र अगर कोई है तो ब्रह्मास्त्र है, और वही ब्रह्मास्त्र का यहां पर इस्तेमाल करते हुए डिफेंसिवली खेला इस गेंद को। विद दिस डॉट स्कोर स्टिल 16 for 1। पारी का चौथा यहां पर ओवर चलता हुआ 4.17 की औसत से अब तक रन बना चुके हैं। फिर वही लाइन आउटसाइड द ऑफ स्टंप, चौथे 5वें विकेट पर ये गेंद करते हुए, तो एक डिफेंसिव लाइन जरूर यहां पर मेंटेन करते हुए 4 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। और रनों की अगर बात करें तो 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। राजीव खेल रहे अपने निजी 11 गेंदों का सामना करते हुए 8 रनों पर, जबकि जिनेश वासा खेल रहे इन एट नंबर 3, 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 6 रनों का योगदान दिया। गेंदबाजी की अगर बात करें तो नील शाह 2 ओवर 9 रन, कोई विकेट नहीं, और जिगर 2 ओवर में 1 विकेट अर्जित कर चुके हैं और बेहतरीन स्पेल रहा है। आप देख रहे हैं डीपीएक्स डायनामाइट्स बनाम टीयूवीएक्स तूफानी, इन 2 दिग्गज टीमों के बीच चलता हुआ आज के दिन का, इनफैक्ट शाम का ये दूसरा मुकाबला। पहला मुकाबला हमने देखा था जहां पर गेंदबाजों का बोलबाला रहा, 112 रन महज बनाने थे, 113 रनों का टारगेट था, और गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा करते हुए उन 113 रनों के टारगेट को डिफेंड किया था, 5 रनों से जीत हासिल की थी। तो गेंदबाजों का बोलबाला रहा है आज इस विकेट के ऊपर। लेकिन क्या शाम के सत्र में यहां पर बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखाएंगे, क्योंकि पहले सत्र में नील ने बनाए 53 रन अहम रोल अदा किया, और उनका बखूबी साथ निभाया जिगर ने, जिन्होंने खेली 47 रनों की नायाब पारी। तो इन 2 खिलाड़ियों के खेल के दम पर कुल 148 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 149 रनों का लक्ष्य यहां पर। और गेंदबाजी में पहली तब्दीली यहां पर होती हुई, गेंदबाज राजेश पहली गेंद वाइड के साथ यहां पर शुरुआत करते हुए, पहली गेंद हालांकि दिशा से भटके, एक और अच्छी गेंद। देखिए दोनों ही अपने सलामी गेंदबाजों से 2-2 ओवर करा चुके हैं, यानी 2-2 ओवर का स्पेल अभी भी उनका बाकी रखा है। और तीसरे गेंदबाज को यहां पर इंट्रोड्यूस किया है राजेश। हालांकि अब तक 2 वाइड गेंदें कर चुके इस ओवर में, थोड़ा सा लाइन और लेंथ को जल्दी पिक करना होगा,
क्योंकि यही समय है, 5वां ओवर चलता हुआ, और 5वें ओवर में शायद एक्सेलरेट करने को देखेंगे, क्योंकि जानते हैं 6 ओवर का पावर प्ले है। महज 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर होते हैं, तो अब तक संयम यहां पर दिखाया दोनों ही बल्लेबाजों ने, क्योंकि विकेट जल्दी खोया था। तो ये एक और वाइड यहां से आता हुआ, वाइड +1, यानी 2 रनों का इजाफा होगा। तो रन आए ये प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि रन आना बेहद जरूरी है, फिर वो किसी भी फॉर्म में आए, क्योंकि जीत के लक्ष्य के और अगर आपको बढ़ना है तो लगातार रन स्कोर कार्ड के ऊपर आना जरूरी है। इस बार स्लैश करने का प्रयास था, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, शॉट थर्ड मैन रीजन में 30 यार्ड सर्कल में गेंद को रोका जाएगा। तब तक दोनों ही खिलाड़ियों के पास एक रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर मूव्स ऑन टू 21, 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पारी का 5वां ओवर यहां पर चलता हुआ, धीरे धीरे रन गति को बढ़ाने का प्रयास, धीरे धीरे अब यहां से रनों का जो ग्राफ है उसको बढ़ाने का प्रयास यहां पर होता हुआ। एक और वाइड गेंद, देखिए इस ओवर की ये शायद चौथी वाइड गेंद यहां से आती हुई। इन 4 वाइड के साथ अगर देखा जाए तो इस ओवर में बाकी बची लीगल डिलीवरीज अगर होती है तो 10 गेंदों का ये ओवर होगा, लेकिन अभी भी 4 गेंदें बाकी है। स्पिन को इंट्रोड्यूस किया था राजेश, जो कि स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और ब्रेक गेंदबाजी करते हैं यहां पर, और शायद बल्ला बदलने का निर्णय यहां पर लिया है बल्लेबाज ने। थोड़ा सा नाखुश थे अपने बल्ले से, तो शायद बल्ले बदलने का यहां पर निर्णय लेते हुए। देखिए खिलाड़ी अपनी गेंदबाज को भी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देते हुए, क्योंकि गेंद जब भी आउटफील्ड में जाती है तभी थोड़ा सा ड्यू फैक्टर एक्टिवेट होता है, तो गेंद को सुखाने का प्रयास वहां पर हो रहा था साथी खिलाड़ी के माध्यम से, और ये बेहद जरूरी होता है। अब देखिए हर गेंदबाज के पास एक आप स्कार्फ देखेंगे जिससे उस गेंद को लगातार पहुंचने का काम करेंगे, और जब भी गेंद आउटफील्ड में जाती है तो थोड़ा सा गीला वो गेंद होती है, सिम भी जल्दी वहां से निकल जाती है, तो शायद ऐसे में गेंदबाजी करने में थोड़ी सी तकलीफ जरूर हो सकती है। डे नाइट के मुकाबले में अक्सर हम ये बात देखते हैं, इस बात को हम काफी बार देख चुके हैं। ड्यू फैक्टर एक्टिव होता है जब भी डे नाइट के मुकाबले होते हैं, और सेकंड सेशन में जब भी बल्लेबाजी होती है तभी ड्यू फैक्टर काफी महत्वपूर्ण, काफी अहम होता है। इस बार देखिए नॉन स्ट्राइकिंग एंड को टारगेट करने का प्रयास था, रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी। इस सिंगल के साथ टीम की टोटल की बात करें तो 5वां ओवर पारी का चलता हुआ 24 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बार अच्छी गेंद, पिच होने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली, डॉट गेंद की समाप्ति। तो 5 ओवर यहां पर पारी के खत्म हो चुके हैं, 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए 5 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है, और रनों की बात करें तो 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हालांकि जीत के लिए अभी भी 8.33 की औसत से आपको रन बनाने, यानी आने वाली 90 गेंदें, और अभी भी जीत के लिए 125 रनों की जरूरत। जिनेश वसा सलामी बल्लेबाज अभी भी मैदान के अंदर डटे हुए। राजीव शाह 14 गेंदों का उन्होंने भी सामना किया, 10 रनों का योगदान दिया है। तो ये 2 खिलाड़ी जितना ज्यादा समय विकेट के ऊपर बिताएंगे उतने रन यहाँ पर स्कोर कार्ड के ऊपर हम जरूर देखेंगे। पावर प्ले का अभी भी 1 ओवर बचा हुआ। पिछले मुकाबले में भी हमने कहा था कि 5 पावर प्ले के आखिरी ओवर में या तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने मिलती है, या तो फिर विकेटें खोते हुए हमने कई दफा देखे हैं। पिछले मुकाबले में विकेटें खोई थी, क्योंकि 5 ओवर में 23 रन थे, 0 विकेट, और 6ठे ओवर में मिडन ओवर किया था रौनक ने, जिसमें कुल 3 विकेट अर्जित किए थे। तो क्या यहां पर गेंदबाज वापसी दिला पाएंगे अपने टीम को? भाविन मेहता आए हैं गेंदबाजी के लिए। एक और तब्दीली गेंदबाजी में चौथे गेंदबाज को इंट्रोड्यूस यहां पर किया गया है। आप देख रहे हैं नागदेवी स्पोर्ट्स ग्रुप प्रेजेंट्स जिनहर्ष टिमकिन एडोर कप 2023 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 4, और इसके टाइटल स्पॉन्सर है जिनहर्ष इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इनके माध्यम से चलता हुआ ये बेहतरीन शानदार क्रिकेट का
मंजर। फिर एक बार गेंदबाज आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, देखिए काफी अंदर आई गेंद, काफी ज्यादा टर्न मिला यहां पर। एक हल्की सी अपील जरूर हुई, लेकिन ये इतनी ऊंचाई पर थी, अंपायर्स ने भी बताया कि इट्स नॉट आउट। इस बार सीधी गेंद निकली। देखिए 2 गेंदों पर 2 वेरिएशन देखने मिले। पहली गेंद काफी ज्यादा टर्न हुई थी, अंदर की तरफ आई थी, और दूसरी गेंद पिच होने के बाद सीधा निकली। तो यहां पर संभलना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को, क्योंकि एक पार्टनरशिप बिल्डअप करनी होगी। अब ये जहम से निकाल दीजिए कि अब पावर प्ले में बड़े हिट लगाने का प्रयास, यहां पर देखिए विकेट आता हुआ, लेकिन फिर एक बार वही दिक्कत खिलाड़ी को होती हुई। लाइट्स और एक और मौका यहां पर मिलता हुआ खिलाड़ी को। कैच छूटा। देखिए बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, जानते थे कि ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है, छठा ओवर है। बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, लेकिन आखिरी समय पर गेंद को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाए, और एक और जीवन दान यहां से मिलता हुआ। तो मैं कहूंगा कि भाग्यशाली रहे दोनों ही खिलाड़ी। शायद दोनों ही कैचेस राजीव के छोड़े गए हैं, तो आज लक फैक्टर उनके साथ में है। एक बड़ी इनिंग क्या खेलकर अपनी टीम को जीत की और अग्रसर कर पाएंगे, क्योंकि नसीब का साथ रहा है। अब तक 2 कैचेस, 2 मौके बने थे इस खिलाड़ी को पेविलियन लौटाने के, लेकिन दोनों ही कैचेस छूट चुके हैं। अब यहां पर डिस्कशन होता हुआ दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में, क्योंकि भली बात ही जानते हैं ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है। यहां पे ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत शायद फिलहाल नहीं है, क्योंकि इसके बाद फील्ड खुल जाएगी तो काफी सारे गैप्स होंगे, और सिंगल डबल से भी इस मुकाबले को क्लोज एनकाउंटर में तब्दील जरूर किया जा सकता है, क्योंकि लक्ष्य देखा जाए तो 149 इतना बड़ा नहीं है, और देखा जाए तो इतना छोटा भी नहीं है। T20 क्रिकेट के हिसाब से ये एक एवरेज स्कोर है, और इसको की अचीव भी किया जा सकता है। इस बार देखिए गेंद कवर और मिड ऑफ के बीच में से बेहतरीन केडी कॉर्पोरेशन फैबुलस 4 यहां से आता हुआ। क्या बेहतरीन स्ट्राइक की थी। देखा था ये गेंद पाले में, हल्की सी हवा जरूर दी थी, और उसका पूरा फायदा उठाते हुए कवर और मिड ऑफ के बीच में से इस गेंद को खेला। दोनों ही खिलाड़ी केवल देखते रह गए इस गेंद को, और गेंद सीमा रेखा को चीरते हुए 4 रनों के लिए। तो पहला आत्मविश्वास भरा शॉट यहां पर आता हुआ, और जो कैच छूटा था अब उसके मायने क्या है शायद फील्डर्स को समझ में आएगा, क्योंकि जब भी आप कैचेस छोड़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, हमने देखा रोहित शर्मा का 4 रनों पर कैच छूटा था, और उस इनिंग में जाके 264 रन हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल बनाया था इंटरनेशनल का। तीसरा परेना ने वो कैच छूटा था, और शायद उस कैच की अहमियत तीसरा परारा ही जानते हैं कि 264 रनों की पारी खेली थी रोहित शर्मा ने, हिटमैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। लेकिन इस बार देखिए कैच छूटा, मौका मिला खिलाड़ियों को, और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त जिनेश और राजू मैदान के अंदर। फिर एक बार हवा दी थी गेंद को, लेकिन इस बार काफी कुछ कंट्रोल में नहीं रख पाए गेंद को, और अच्छा प्रयास था। और रन स्कोर कार्ड के ऊपर ऐड होते हुए रनों की अगर बात करें तो 6 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। 32 ऑन द स्कोर कार्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। वेलकम बैक टू द लाइव एक्शन। 6 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, फील्ड अब खुल चुकी है, क्योंकि पावर प्ले का रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर अब खुल चुका है। तो क्या यहाँ से इनिंग को बिल्ड करने के देखेंगे दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर होती हुई। 13 गेंदों का सामना किया है जिनेश ने, 7 रनों का योगदान रहा है, और 20 गेंदों में 18 रन। थोड़ा सा एग्रेशन जरूर दिखाया राजीव शाह ने, आक्रामक बल्लेबाजी उनके माध्यम से जरूर देखने मिली, लेकिन जिस खेल के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं बतौर स्पेशलिस्ट बैट्समैन इन एट नंबर 3, तीसरे नंबर पर यह बल्लेबाज आए। इस बार देखिए गेंद
राजेश के हाथ में अपने स्पेल का दूसरा ओवर यहां पर करते हुए, राजेश ने जिस तरह से अपने स्पेल की शुरुआत की थी, पहले गेंद वाइड, कुल उस ओवर में 4 वाइड गेंद की थी और दूसरे ओवर की शुरुआत भी वाइड गेंद के साथ। शायद लाइन और लेंथ को अभी भी पकड़ नहीं पाए हैं। यही समय है कि अपनी लाइन और लेंथ को आप सही कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में शायद बल्लेबाज जब आक्रामक होंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा माइंड चेंज कर लिया होगा दोनों ही बल्लेबाजों ने, अब थोड़ा सा डिफेंसिवली आने वाली 3 से 4 ओवरों में थोड़ा सा डिफेंसिव खेल, इनिंग को बिल्डअप करने की सोचेंगे। एक सिंगल डबल्स के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा दोनों ही बल्लेबाजों का। पहले सत्र में भी हमने देखा था कि जिस तरह से इनिंग खेली थी जिगर ने, तो यहां से पहली गेंद वाइड, दूसरी 2 गेंदों के ऊपर 2 सिंगल यहां से आते हुए। रनों की अगर बात करें तो 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 6.2 ओवरों का खेल यहां पर चलता हुआ। राजीव और जिनेश, इस बार देखिए उछाल लिया था गेंद ने, डीप पॉइंट की दिशा में इस गेंद को धकेला, सिंगल यहां से आता हुआ। देखिए हमने शुरू में ही कहा था कि जब 6 ओवर कंप्लीट होगी फील्ड थोड़ा सा खुल जाएगा, गैप्स आपको मिलेंगे और वही गैप्स में गेंदों को ढकेलने का प्रयास है दोनों ही खिलाड़ियों का। सिंगल डबल के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी। एक इनिंग बिल्डअप करने का प्रयास था, इस बार पीछे हटे, डीप कवर में इस गेंद को खेला और यहां से एक मौका जरूर बन सकता था, क्योंकि खिलाड़ी काफी दूर थे, शायद फ्रेम में भी नहीं थे, तो इस गेंद को शायद गैदर नहीं कर पाए थे। थोड़ा सा वाइड ये थ्रो आया था और इसी की बदौलत आज मैं कहूंगा कि दोनों ही खिलाड़ी बहुत भाग्यशाली है। 2 कैच छूटे हैं, एक रनआउट का भी मौका यहां पर बन सकता था। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, गेंद में उछाल लिया खिलाड़ी वहां पर। देखिए एक और काफी मैं कहूंगा कि बढ़िया प्रयास था, क्योंकि गेंद काफी देर हवा में जरूर थी लेकिन खिलाड़ी के पहुंच से बाहर थी। आखिरी समय पर डाइव लगाते हुए इस कैच को लेने का प्रयास किया था, तो एक शानदार प्रयास यहां पर होता हुआ। तो इसी बीच एक अच्छा प्रयास फील्डर का वहां पर डाइव लगाते हुए इस कैच को लेने का प्रयास किया था। इस तरह के हाफ हार्टेड चांस को आपको कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि विकेटें आपको मुकाबले में वापसी दिला सकते हैं। इस बार देखिए एक और वाइड गेंद, शायद कीपर के पहुंच से बाहर। प्रयास अच्छा था कीपर का, लेकिन थोड़ा सा दूर रह गए गेंद से। सिंगल वाइड +1, तो 42 स्कोर कार्ड के ऊपर 42 रन आ चुके हैं। अब देखिए धीरे धीरे रनों को जोड़ने का प्रयास यहां पर होता हुआ दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में। और दोनों ही बल्लेबाजों के अगर खेल को देखें तो थोड़ा सा डिफेंसिवली होते हुए, तो 7 ओवर का खेल यहां से समाप्त होता हुआ 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। सो जिनहर्श टिमकेन अडोर कप 2023 क्या जबरदस्त टूर्नामेंट रहा ये। लेकिन ये देखिए पहले 10 ओवर में 47 रन बने थे 4 विकेट के नुकसान पे। अगले 10 ओवर में रन बने थे बराबर 101। जैसे 101 एक शुभ अंक माना जाता है, 51 101 हिंदू मान्यता में माना जाता है। 101 रन की दक्षिणा बिल्कुल दी थी सामने वाली टीम के सामने उन्होंने, तो 101 रन
अगले वाले 10 ओवर में पहले ओवर में 47 पे 4। याद रखिए जब सचिन कपिल देव ने सबसे बेहतरीन इनिंग्स खेली थी वनडे में, उनके 175 सबसे अधिकतम स्कोर था, स्कोर कार्ड पे स्कोर था 17 पे 5। 17 वो एक ऐसा अंक मानते जो अशुभ माना जाता है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बदल गई थी। क्या बेहतरीन शॉट है, राजीव ने काफ़ी प्रभावित किया है। देखिए राजीव हमारे जो एनएसजी कमेटी है ना, उनके मेंबर भी है, तो ये बात आप ये ध्यान में रखिए कि ये सिर्फ खिलाड़ी यहाँ पे खेलने के लिए नहीं है, पूरे दिन भर सारे जो व्यवस्था है उनका आयोजन करना, उनका नियोजन करना, सारी चीज़ों का ठीक ठाक से देखभाल करने के बाद वो फिर खेलने आते हैं, तो उसमें उनकी सारी जो एनर्जी पहले ही निकल जाती है। उसके बावजूद ये बंदा एक 15-16 साल के लड़के का जितना उत्साह होता है क्रिकेट मैच के लिए उतना ही दिखाई देगा। वही आपको दिखाई देगा विपुल में, वही आपको दिखाई देगा भाविर में, वही आपको दिखाई देगा बाकी खिलाड़ियों में भी। जो है कमेटी के मेंबर्स, उनमें से लगभग 75% लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और इनके सारों की उम्र शायद ये 40 क्रॉस हो, कई लोग तो 45 क्रॉस भी होंगे, लेकिन उनका स्टैमिना देखिए, उनका जज्बा देखिए खेलने का, और ये गेम के प्रति उनका कमिटमेंट देखिए। क्या शॉट है, बैकफुट पे जाके बेहतरीन शॉट है, ये 4 रनों के लिए बिल्कुल जाना चाहिए और ये जाएगा। व्हाट अ शॉट दैट इज, बेहतरीन केडीसी चौका। ये जो केडीसी के चौके हैं हमें स्पॉन्सरशिप मिले केडी कॉर्पोरेशन से, और अपैरल स्पॉन्सर जो बहुत जो हमें ड्रेसेस दिखाई दे रहे हैं वो अपैरल स्पॉन्सर नवकर एंटरप्राइज मिस्टर प्रकाश बिलाकिया, सागर बिलाकिया। जो यूट्यूब से लाइव आपको पिक्चर दिखाई दे जा रहे हैं वो जेएफएससी ब्रॉडकास्टिंग टीम से हैं, ये हमें स्पॉन्सर किए हैं। भाभी मिस्टर चित्रेश उडानी, एनके ट्रेडिंग श्री राम इम्पैक्स मिस्टर अजय अग्रवाल, और मीडिया पार्टनर्स क्यूएल जो हमारे लास्ट ईयर की जो स्पॉन्सरशिप जिन्होंने जोड़ी थी, इस बार भी हमारे साथ बरकरार मिस्टर संजय शाह, कुंजल शाह, नरेश मेहता। ये टीम के स्पॉन्सर से विप्सा वॉरियर के दोषी ब्रदर्स, के स्मैशर्स के इंजीनियरिंग, एच वॉरियर्स के एसटी इंजीनियरिंग, 2 फाइनेंस के एनएक्स इम्पैक्स, एचएमएस हार्ड हिटर्स के एचएमएस बेयरिंग्स, सीएमई चंद्रमौली एंटरप्राइजेस, एक्सेल वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज, केडी कॉर्पोरेशन के मिस्टर किरण वोरा, और टीपीएक्स डायनामास, डीआई इंटरनेशनल के ये सारे ओनर्स। और सबसे बढ़िया बात, जो लास्ट ईयर का जो खाना था इतना बेहतरीन था, इस साल भी उन्होंने ही हमें स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप दी है। DYZB बेयरिंग्स इंडिया सॉल्यूशंस के मिस्टर राकेश वाघेला एंड निशांत शाह। और ग्राउंड पार्टनर्स जिनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा, बिकॉज ये काफ़ी महंगा ग्राउंड है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है खेलने के लिए। विकास एंटरप्राइज मिस्टर विकास गुप्ता, थैंक यू सो मच। और ये बहुत बड़ी विकेट, ये बहुत बड़ी विकेट, जिनेश काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, काफ़ी अच्छा साथ निभा रहे थे राजीव का। पहले ऐसे लग रहा कि जिनेश राजीव से भी तेज़ खेलेंगे, लेकिन राजीव ने दम पकड़ लिया था। लेकिन ये दूसरा विकेट जाएगा 49 के स्कोर पर। ये सारे जो स्पॉन्सर्स है, ये स्पॉन्सर्स नहीं कहूँगा मैं, ये एक बड़े परिवार का हिस्सा है। इनमें से कई सारे लोग होंगे जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ के आसपास भी जाता होगा, कोई 500 करोड़ के आसपास भी जाता होगा, लेकिन ये सब पैसों से इन्होंने नहीं जोड़ा। ये बस इन्होंने जो इंसानियत से जो दोस्त बनाए, अपने समाज के प्रति जो उनका लगाव है, खेल के प्रति जो लगाव है, इनको इससे कुछ लेना देना या कोई इससे एडवर्टाइजमेंट या कुछ वो बेस कवर करने के लिए नहीं, अपने जो समाज बांधव है उनको एक अच्छा अवसर देने के लिए सारे लोग जब एकत्रित आएंगे क्रिकेट के माध्यम से, जब एक दूसरे से मिलेंगे, नए दोस्त बनेंगे, चेहरे पे जो अंत में जो स्माइल होगी, जो मुस्कान होगी, उसी के लिए सारा जो हमने तामझाम लगाया हुआ है। ये सारे के सारे लोग, मिस्टर राकेश वाघेला, निशांत साहब, थैंक यू सो मच। आपका खाना बेहतरीन था, लोगों को जो आप सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो खाना, वो सबसे बेहतरीन था। और ये ग्राउंड जेएफएससी मुंबई में सबसे अच्छे ग्राउंड्स में से एक माना जाता है, एक बहुत ही बेहतरीन वेन्यू, सारे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, सारे की सारी चीज़ें हैं कि जिसके लिए वजह से ये ग्राउंड, ये वेन्यू काफ़ी ज़बरदस्त, ऑलमोस्ट आपको एक इंटरनेशनल स्टेडियम की तरह है। बेहतरीन लाइट्स हैं, बहुत लश आउटफील्ड है, 8 विकेट्स हैं और सबसे बेहतरीन एक वेन्यू में माना जाता है ये ग्राउंड। तो ऑलमोस्ट आपको इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलने का फीलिंग आ गया। नवकर एंटरप्राइजेस लास्ट ईयर भी बिलाकिया सर की वजह से ये बहुत बेहतरीन आपको अपैरल्स मिले हैं। ये सिर्फ टी शर्ट्स नहीं, टी शर्ट्स होंगे, ट्रैक्स होंगे, बाकी सारी चीज़ें भी हैं, कैप्स होंगे, ये सारे के सारे मिस्टर प्रकाश बिलाकिया एंड सागर बिलाकिया की तरफ थैंक यू सो मच सर, यू हैव बीन सो काइंड। यूट्यूब के जो लाइव स्पॉन्सर्स जो हमेशा देखिए बहुत ही कलरफुल, ये 2 ओनर्स हैं, मिस्टर चित्रेश उडानी और मिस्टर अजय अग्रवाल, श्री भावी इम्पैक्स और एनके ट्रेडिंग एंड श्री श्याम इम्पैक्स, इन दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। ऑल्सो लास्ट ईयर हमारे साथ जुड़े थे QLH ऑटोमेशन सोल्यूशन के मिस्टर संजय शाह, कुंजल शाह एंड हरीश मेहता। इस बार भी उन्होंने अपना जो हेल्पिंग हैंड है वो आगे किया है। और विप्सा, ये टीम स्पॉन्सर्स के बारे में हम बात करेंगे तो विप्सा वॉरियर्स के दोषी ब्रदर्स काफ़ी खुश होंगे, उनकी टीम काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है। के स्मैशर्स के इंजीनियरिंग, मिस्टर ललित खेतान एंड मिस्टर अंकित
खेतान, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त ओनर्स है। एच वॉरियर्स, ये ओनर ही खुद कैप्टन है मिस्टर नीरव शाह हस्ती इंजीनियरिंग के। टीवीएक्स स्टीफानी, इनकी टीम तो गत वर्ष की चैंपियन है, अभी के डिफेंडिंग चैंपियंस है। हेनिक्स इम्पैक्स, मिस्टर कौशिक एंड मिस्टर हेनिक गिलानी, और चैंपियन टीम है इस प्रतियोगिता की। टीम स्पॉन्सर्स एचएमएस हार्ड हिटर्स, एचएमएस बेयरिंग्स। उन्होंने आज देखा क्या परफॉर्मेंस दिया, क्या कमबैक उन्होंने किया था, और एक मैच जीते एक मैच हारे, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त टीम है ये भी। मिस्टर मयांक और मिस्टर हार्दिक और मिस्टर जिनय की ये टीम। बॉल एंड किट स्पॉन्सर सीएमई मिस्टर चंद्रमौली एंटरप्राइज, ये काफ़ी बड़ा योगदान, बिकॉज सीएमई हमेशा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और चौकों छक्कों की जो बरसात हो रही है उसके केडी कॉरपोरेशन के मिस्टर किरण वोरा, और हर विकेट जो जा रहा है वो स्पॉन्सर किया वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज, एक्सेल विकेट मिस्टर प्रतीक शाह एंड राहुल शाह। तो इन सारे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, और लगातार मैं ये नहीं कहूँगा कि ये लोग जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, हमारे स्पॉन्सर्स नहीं है, बल्कि ये हमारे परिवार के बड़े सदस्य हैं जिनको भगवान ने नवाजा है काफ़ी सक्सेस से, और हम चाहते हैं कि वो अपने क्षेत्र में भी आगे बढ़ते रहे, और इनका जो हमारे से जो लगाव लगाया वो बरकरार इसी तरह आगे रहे। लेकिन लगाव होना चाहिए अब राजीव शाह का, क्योंकि राजीव शाह की उपस्थिति वहाँ पर बहुत ज़रूरी होगी, और ज़्यादातर अभी इस खिलाड़ियों को इनके आसपास है। मिहिर इस टूर्नामेंट में जो स्थान आप नीरव शाह का देखेंगे, जो स्थान आप दर्शन का देखेंगे, जो स्थान आज नील शाह ने किया था, वही काम इस मिहिर इस खिलाड़ी का है। ऑलराउंडर खिलाड़ी है, हरफन मौला खिलाड़ी, और काफ़ी शांत स्वभाव के हैं, और ये बहुत बड़ी विकेट हो सकती थी अक्रॉस द लाइन। थोड़े वक्त के लिए तो जान अटक गई होगी सारे उनके प्लेयर्स की, जो उनकी टीम का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। आज आपने गेंदबाजी भी देखी, रौनक की, मयांक एक ज़बरदस्त खिलाड़ी, लेकिन मिहिर उनकी टीम का एक ऐसा खिलाड़ी है जो आपको बल्लेबाजी से भी मैच जिता सकता है और गेंदबाजी से भी। तो मिहिर का वहाँ पर रुके रहना बहुत ज़रूरी है। ये दो जोड़ी अगर अगले 7 ओवर रह जाती है तो इस मैच में भरपूर मजा आएगा। और ये देखो राजीव का फिटनेस देखिए आप, एक 15-16 साल के लड़के की तरह वो भाग रहे। देखिए फिर एक को तो 2 में तब्दील कर दिया, और राजीव क्या फिटनेस है। अगर राजीव सर की जो फैमिली अगर कोई देख रहे होंगे तो उन्होंने, उनकी मम्मी ने जो उनको बचपन में जो सारी चीज़ें खिलाई होंगी वो बिल्कुल काम आ रही है। क्या स्टैमिना है, 40 प्लस होंगे राजीव, और उनका स्टैमिना बिल्कुल एक 15-16 साल के स्टैमिना से ज़्यादा, फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा जीत का जो जज्बा है, अपनी टीम के लिए खेलने का जो जज्बा है, खेल के प्रति जो प्रेम है, वो वहाँ पर दिखता हुआ। क्या शॉट है, ब्यूटीफुल टच, दिस इज नाइसली डन, ये बहुत बेहतरीन शॉट है। अभी तक वो ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए थे गेंद को, लेकिन ये गेंद बीचों बीच लगी थी। अच्छी गेंदबाजी हो रही है नीलेश की, लेकिन विकेट के जाने के बाद अब पारी को संभालने का पहला रन था वो मिहिर का बैट से। स्ट्राइक करेंगे राजीव, जो इन्होंने हर दो पहले मैच में भी एक 30-32 रन बनाए थे, इस मैच में भी वो लगातार प्रहार कर रहे हैं, चांस ले रहे हैं, इंटेंट दिखा रहे हैं। पॉजिटिव इंटेंट दिखाना काफ़ी ज़रूरी है। अब अपना जो इरादे है वो स्पष्ट किए उन्होंने पहले गेंद से। एक ऐड आती थी, राजीव भाई क्या चल रहा है, फिलहाल तो राजीव भाई ही चल रहा है। क्या बल्लेबाजी की है राजीव ने, राजीव शाह, राजू टपारी, इन सारे जो खिलाड़ी है, बहुत सारे लोग काफ़ी सीनियर्स हैं, और इनमें से कई लोग, भाविन मेरे हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त खिलाड़ी है, जो अपने गेम को उतना उचित न्याय नहीं देते। वो सोचते हैं कि थोड़ी देर कुछ 1-2 शॉट्स खेल के आ जाए, लेकिन उनकी टेक्निक मैंने देखी है, जिस तरह से वो कवर ड्राइव लगाते हैं, शॉट को कट करते हैं। अगर वो थोड़ा सा सीरियसली ले राजीव की तरह अपने खेल को, तो भाविन अपनी टीम के लिए एक ज़बरदस्त एसेट हो सकते हैं। उनका सारा ध्यान इन सारी चीज़ों का आयोजन में रख जाते हैं। भाविन है, विपुल तो 100% कमिटमेंट वाला प्लेयर है, जो कल उन्होंने देखा, उनकी इनिंग्स भी थी एक 40 के आसपास की, और उनकी गेंदबाजी तो लाजवाब ही है। तो मुझे शायद वत्सल से ज़्यादा विपुल का खेल ज़्यादा पसंद आता है हर साल। 55 पे 2, ये काफ़ी ख़राब गेंद, इट्स अ नो बॉल। जब 2 बार गेंद पॉपिंग क्रीज तक पहुंचने तक 2 बार टिप्पे लेती है तो उसे नो करार दिया जाता है, इसीलिए गेंद को नो बॉल दिया गया है। गेंद हाथ से निकल गई थी जयेश के, अभी फ्री हिट रहेगी। ये फ्री हिट काफ़ी महत्वपूर्ण होनी चाहिए, लेकिन निकल गई गेंद। बहुत कम बार उन्होंने ऐसे मौकों को खोया है। राजीव शायद अब बड़ी हिट के लिए जाएगी। जब फ्री हिट सब आपसे निकल जाता है ना, तो काफ़ी गुस्से में होता है बैट्समैन। यस, राजीव काफ़ी ज़ोर से प्रहार करते हुए, कनेक्शन अच्छा हुआ है, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा, 57 पे जा पहुंचेगा। 57 for 2। हम 10वें ओवर में, आखिर के 4 ओवर्स, इस 4 गेंदे 10वें ओवर की। सो 57 for 2, बेहतरीन शॉट, अच्छी गेंदबाजी, काफ़ी
अच्छी तरह से संभाला है अपने आप को स्नो बॉल गिरने के बाद, और ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस चल रहा है गेंदबाजी में, बिकॉज जो अभी रन्स चाहिए वो कल लगभग 93 के आसपास है, 91 रन्स इन 63 बॉल्स, तो काफ़ी मुश्किल होने वाले हैं अनलेस 2 ओवर एक 10-15 रन के नहीं आएंगे उनको। 15-15 रन के कम से कम 2 ओवर्स आने चाहिए, तब ये टोटल जाकर चेस होने वाला है। याद रखिए 47 रन बनाए थे, 47 रन बनाए थे 10 ओवर में, उसके बाद 101 बनाए थे सामने वाले टीम ने, लेकिन उस वक्त नील की बल्लेबाजी ज़बरदस्त हुई थी, जिगर अच्छा खेल गए थे। ये फुल टॉस है, ये नो बॉल होगा, और ये भागते रहना ज़रूरी है। राजीव और मिहिर, 2 रन जोड़े जाएंगे, 61 पर स्कोर जाएगा, और 89 रन 10 ओवर के बाद अगर आप 80-85 रन आपके सामने तो आप सेफ सोचें, लेकिन 90 का अगर आंकड़ा हो तो मनोवैज्ञानिक तरीके से भी आप पीछे हट जाते हो। सो इस 2-3 गेंदों में जितने रन आएंगे वो उनके लिए साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 80-85 90 से अच्छा दिखाई देता है, और ये फ्री हिट था, भागते रहना जरूरी है। मिहिर या जबरदस्त, ये 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचेगा 63 पर। 86 रन की जरूरत है यहां पर, 61 गेंदों में 86 रन। सो यहां से अगर राजीव अच्छा खेल जाते, इनकी टीम में 1-2 हार्ड हिटर्स तो होंगे, और क्योंकि एक तो बैट्समैन ऐसा होना चाहिए कि जो एक छोटी सी इनिंग्स खेले, 20 गेंदों में 35 रन 32 रन, और क्या शॉट है ये, लेकिन खिलाड़ी वहां पे मौजूद है। इस गेम को बिल्कुल पलट दिया था नील की बल्लेबाजी ने, और नील शाह 53 ऑफ 33, जिगर उपाध्याय क्या बैटिंग की थी जैक ने, 47 ऑफ 53, और छोटी सी इनिंग्स थी 8 गेंदों में 12 रन की, पर इनकी वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पे 64 पे 2, जीत के लिए अब भी 85 रनों की दूरी 60 गेंदों में। जीत के लिए बॉल और गेंदें और रनों का अंतर है 25 का।
Yes, the next 10 overs are going to be exciting because they need 85 runs in the next 10 overs. The first 10 overs of the first innings they scored 47. In the next 10 they scored exactly 101. Same thing has to be replicated over. This has been a match of a wonderful. Cricket is, if you break it down, it is first 6 overs, then the next 10 overs, then the last 5 overs. But here, as football they say is a game of two halves, cricket is also a game of two halves. If you say the first 10 overs right now are in balance, the next 10 overs are going to decide. Most importantly, this man has just impressed everyone. The man on your screen, Rajiv Shah, he's got 37 or 34. He is one of the senior most members of NSG group. He is the committee member. He is the one who takes all that hard work. Oh, that's nicely bowled. Look at Rajiv, look at his energy. He can be a very good candidate for some energy drink or something. He has been like running around. Forget about his runs which he has got on his scoring card. Other than that, he has run so many runs for his partner, so many leg buys, and he has been the one who has shown positive intent. It said fortune favors the brave, and this man is really very, very brave. The fortuitous boundaries he has got few in between. This is beautifully played off the back foot. This is a classical cover drive. Will it go? No, there's fielder protection over there. There's Mihir with some classical shots, and we have Rajiv playing some authentic shots and playing some shots which are out of the book. He just goes and plays like a tennis cricketer and goes for his shots all over, and he has some authentic cat shots also. A good fat foot player. So that's what I was talking. He just swings his bat so hard. He's got a boundary like that in the previous effort in that first power play where he hit that ball just past the leg side in the fine leg region. The score is 67 for 2. We are into the 11th over. 82 runs needed in 57 balls. This is beautifully played. That's what I was talking. Towards his right, anything towards his right or left would fetch him 4. And this is beautifully played sweep shot. What a good shot that is. Sweep shots are not easy. You need to get on the top of the ball, get on the right on the top of the ball, and just use all your wrist to get that work done. And that was beautifully done. On the rise, got over it, right on the top of it, and got a wonderful KD Corporation boundary. KD Corporation boundaries we have seen so many in the next 10 overs, not on the first 10, the latter part of the innings, in the first innings and also in this innings. 71 for 2. This is going to be close. This is going to be interesting match. First match was a brilliant one where we saw 113 runs being defended. Here also we are on the track to chase this down. Beautiful combination this is of a mix of young and experience. I would say, I won't say old. Rajiv is not old at all. Age is just a number. If Salman Khan can act as a college goer at the age of 55, this guy can play as a youngster as well. 72 for 2. 10.5 overs. Last ball remaining. And Ali Asgar, he bowled the first few overs yesterday. Today is bowling in the 11th over. He came in as the opener today. No, last ball. The umpire is just moving his hands. Not that Shah Rukh Khan's post, but it's a wide. He just moves, just bends his shoulder and makes a post like Shah Rukh Khan at times. 77, 22 for 2. That's Rajiv Shah. I just would love to see him getting the half century. Only 2 half centuries have been. Oh, what a shot this is! Dancing down the ground. They might go for a second one. In fact, the ball is racing towards that boundary. 2 fielders converge, not before them getting a couple of runs. He moves into 40s. Not his age, but the runs which he has got. 40 runs of 37 balls. This is brilliant. But Rajiv, somebody has to put a stop to him. He's like just like that toy which runs on that key. जो बचपन में आपने देखा होगा ना खिलौना जो चाबी लेके जो चलता ही रहता वैसे हो गया राजीव अभी. राजीव बस भाग रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं. बट इसलिए नहीं कि उनमें बहुत ज़्यादा ताकत है उनके पैरों में, या वो बिल्कुल एक 15-16 साल के यंगस्टर से इसलिए वो भाग रहे हैं क्योंकि उनको अपनी टीम को जीत दिलानी है. जब आप अपनी टीम के लिए खेलते हो, अपने समाज के लिए खेलते हो, अपने दोस्तों के लिए खेलते हो, आपके परिवार के लिए खेलते हो, एक अलग सी ऊर्जा अपने आ जाती है. अभी तक अगर कोई दूसरा यंगस्टर होता तो 4 बार पानी तो मंगा लिया होता उन्होंने, लेकिन ये खिलाड़ी देखिए शायद थक भी गए हैं, थोड़े से नज़र लग गई है उनको. 11 ओवर की समाप्ति के बाद 75 पे 2 और 8.22 रन प्रति ओवर. 75 for 2. 75 पे 2. 9 ओवर बाकी है जिसमें 74 रन बना. 74. What a shot that is. बहुत ही बेहतरीन शॉट, बहुत तेजी से गेंद निकल रही है और दोनों ही बल्लेबाज अब मिडल ऑफ द बैट गेंदों को हिट कर रहे हैं.
75 पे 2, सर माफ कीजिए 76 फॉर 2। जिनहर्श टिमकेन अडोर कप 2023, और ये दूसरा दिन है, ये दूसरा मैच है। बहुत ही बेहतरीन इनसाइड आउट मारने का प्रयास था, गेंद ऊपर निकल जाएगी 1 रन के लिए। दोनों ही बल्लेबाज देखिए इक्का दुक्का रन निकल, और बीच में कोई चौके छक्के का अगर मौका बन रहा है, इस मौके को भुना भी रहे। तो ये 8 रन प्रति ओवर है, अगर इसमें 1-2 अच्छे ओवर भी पड़ जाते तो 9 और 10 तक वो रिक्वायर्ड रन रेट टच हो सकता है। तो उसके विपरीत अगर 15 और 16 रन की एक आध ओवर आ गई तो मैच बिल्कुल खुल जाएगा। डांसिंग डाउन द ग्राउंड, फिर एक बार कदमों का इस्तेमाल। राजीव की फिटनेस की दाद देनी होगी, लाइक वो अपने 40 पे पहुंच गए। मैं उनकी उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका स्कोर की बात कर रहा हूँ। 41 पे है वो, 41 ऑफ 38, लेकिन एक यंगस्टर की तरह ही ये बिल्कुल, मैं कहता हूँ उनसे भी ज़्यादा फिटनेस उन्होंने दिखाई है। अब ये 50 उनके पूरे होंगे कि नहीं। क्या शॉट है ऑन द राइस, क्या बेहतरीन शॉट है ये, शॉट ऑफ द डे फॉर मी, सुपरबली हिट। गेंद लेग स्टंप पे थी, गेंद हिटेबल थी, कहे थे कि वो मार सकते उस गेंद को, लेकिन उसको कनेक्ट करना जिस तरीके से एक प्रॉपर क्रिकेटर की तरह वो गेंद को शॉट मारा। स्वीप शॉट उतना आसान नहीं होता, हमें लगता है कि वो आसानी से खेला जा सकता है, लेकिन एनीथिंग ऑन द लेग साइड दिस इज एन इजी मीट, लेकिन हर बॉल को कनेक्ट करना भी जरूरी है। सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा रन फ्लिक मार कर ही मारे, और सबसे ज्यादा बार आउट भी उसी शॉट से हुए हैं, जो विप करते थे। ओ माय गॉड, नजर लग गई और आउट हो चुके हैं, बिल्कुल 50 के आसपास पहुंच रहे थे। कमेंटेटर्स का 45 पे आउट हो गए। रोहित शर्मा का नंबर, रोहित शर्मा 45 नंबर से खेलते हैं, उनकी माता ने उनको नंबर दिया था। 99 उनके नंबर पसंदीदा नंबर था, 9 उनका फेवरेट नंबर था, 99 से उन्होंने शुरू किया था। मम्मी ने उनके लिए सोचा कि 9 उन्हें नहीं मिलेगा, तो उन्होंने उसको तोड़ दिया, मम्मी ने उनके 4 और 5 करके 45 दे दिया, और 45 के स्कोर पे वो आउट हो गए। राजीव इस एनएसजी के सबसे महत्वपूर्ण घटक है, इस कमेटी मेंबर के, लेकिन इस मैच के लिए भी देखो उनका योगदान क्या है। 45 38 गेंदों में जबरदस्त इनिंग्स, जबरदस्त, सबसे बेहतरीन इनिंग्स में एक, जिन्होंने जो सीनियर खिलाड़ी है उनमें से ये क्या बैटिंग की है, जबरदस्त, और अपनी टीम को जीत की कगार पे लाके पहुंचा है। यहाँ से उनकी टीम को अच्छा खेलना पड़ेगा अगर जीतना है तो, बट ही हैज केप्ट देम इन द हंट। राजीव अगर घर जाके देखेंगे और ये परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफी खुश होंगे, और किसी अवसर में अगर उनके बेटे या उन्होंने कहा कि पापा आप क्या कर सकते हैं, तो पापा उनको ये रील भी दिखा सकते हैं कि अगर इस उम्र में मैं इतने बड़े टूर्नामेंट में इतनी अच्छी तरह से बैटिंग कर सकता तो लाइफ में मैं कुछ भी कर सकता। 82 फॉर 3, 11.5 ओवर्स में। तो राजा चले गए हैं, लेकिन राजा के बाद आए हैं प्रिंस दोषी। राजकुमार इस टीम के, राजा तो आउट हो गए राजीव, लेकिन उनकी जगह आ रहे हैं अब प्रिंस दोषी और मिहिर। प्रिंस लास्ट ईयर फाइनलिस्ट थे, काफ़ी ज़बरदस्त उनका परफॉर्मेंस था। इस बार शायद दूसरी टीम से खेल रहे, DPX डायनामाइट्स, TVX तूफानी, शायद यही थी, हाँ ये इसी टीम से वो खेल रहे थे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर इस टीम की। चैंपियन टीम है TVX तूफानी पिछले साल की। तो देखते हैं जो चैंपियंस है वो अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखते हैं कि नहीं। बैकफुट पर जाके गेंद को स्टीयर करने का प्रयास था, थोड़ा सा क्लोज डिसीजन, पर उचित निर्णय यहाँ पर। 83 फॉर 3 आखिरी गेंद इस ओवर की। जयेश प्रिंस काफी तेजी से दौड़ के 1 रन पूरा करते हुए इस 1 रन के साथ स्कोर जहां पर जगह 84 पर 84 फॉर 3 एट द एंड ऑफ ओवर नंबर 12। आप थोड़ा से भी अगर आप गणित में अच्छे होंगे, आपको 12 का पहाड़ा आता रहेगा, तो 12 7 84। थोड़ा सा अचानक से हमको तो नहीं आएगा, थोड़ा देर उधर रुकना तो आएगा। $84 फॉर 3, 12 ओवर की समाप्ति पर 84, टारगेट 149 का है, तो जीत के लिए अब रन बनाने हैं 65, 65 रन टू विन। यस सर, ये तो 65 रन बनाने हैं 8.1 से, मतलब हर ओवर में 8 रन बनाने, तो ये मैच
दोनों ही टीम यहाँ से जीत सकते हैं। जैसे आपने देखा कि आखिरी के 6-7 ओवर में इवन 8 रन पर ओवर यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। काफ़ी बेहतरीन शॉट, लेकिन ये इंटेंट इन्होंने जो दिखाया, जो अप्रोच दिखाया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले मैच में 113 की लक्ष्य था तो सब आराम से खेल रहे थे, तो जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो 5 से 6 पे पहुंच गया, 6 से 7 पे पहुंच गया। और आखिर के जब 5 ओवर्स होते हैं ना, अगर उसमें आप थोड़ा सा भी एक आध ओवर आप ठीक से नहीं खेलते तो 7 से 8 से 8 से 12 कब पहुंच जाता है पता नहीं चलता। 38 रन चाहिए थे पिछले मैच में 5 ओवर्स में, फिर लास्ट 2 ओवर में 25 रन रह गए। मतलब वो 3 जो पहले ओवर्स उसमें मात्र 13 रन आए थे। तो कुछ भी हो सकता है अगर आप ज़्यादा हल्के में ले लेते हो मैच को। बहुत ही बेहतरीन गेम। जैसे देखो ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के विरुद्ध जो मैच थी वर्ल्ड कप मैच में 122 23 रन चाहिए थे, दोनों ही बल्लेबाजों ने, एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू एडन ने आके धाड़ 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 मैच खत्म कर दी थी। तो वो अप्रोच सही था। छोटे टारगेट्स को आपको ज़्यादा आक्रामक होना कभी कभी अच्छा होता है। और बहुत ही बेहतरीन शॉट, ये खिलाड़ी इनफैक्ट बच गए बाल बाल। प्रिंस ये वैल्यू ऐड करता है इस टीम को। ये जोर से भागेंगे, तेजी से भागेंगे, 1 को 2 में परिवर्तित करेंगे। तो इक्वेशन 62 रन इन द नेक्स्ट 45 बॉल्स। सो 8 सवा 8 के आसपास ये रिक्वायर्ड रन रेट अभी मंडरा रहा है। इस वंडरफुल जो ज़बरदस्त वेन्यू है, इसके स्पॉन्सर हमारे श्री विकास इंटरप्राइज के मिस्टर विकास गुप्ता, विकास भाई। पिछले साल भी इन्होंने ये योगदान दिया था। जो लज्जतदार हम खाना खा रहे वो मिस्टर राकेश वाघेला और निशांत शाह, DYZB बेरिंग्स इंडिया सॉल्यूशंस के। क्या बेहतरीन ओवर है। देखो मैं कह रहा हूँ ना, एक ओवर में सारे समीकरण बदल जाए। तो 8 रन प्रति ओवर है, आसानी से लग रहा है, तो कब 9 में पहुंच जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और देखते ही देखते कब 10 में पहुंच जाएगा वो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको हिट लगातार करने पड़ेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन शॉट। ये दोनों बल्लेबाज अगर रुक जाते हैं अगले 2-3 ओवर्स तक तो शायद ये मैच वो जिता सकते हैं। तो हमारे सारे जो स्पॉन्सर्स हैं, मिस्टर राकेश वाघेला, निशांत शाह, प्रकाश बिलाखिया, सागर बिलाखिया, चित्रेश उड़ाने, मिस्टर अजय अग्रवाल, संजय शाह, कुंजल शाह, हरीश मेहता, मिस्टर प्रदीप, मिस्टर वीरल और संजय दोषी, जिसको हमको कहते हैं कि विप्सा, वीरल, प्रदीप और संजय। और ये बहुत 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 बड़ी विकेट। प्रिंस, पहले राजा आउट हो गए, अब प्रिंस आउट हो गए। राजा और राजकुमार दोनों ही वापस। उसी के साथ के इंजीनियर के मिस्टर ललित खेतान, अंकित खेतान, नीरव शाह, सर HA वॉरियर्स की, हस्ती इंजीनियर की, ये जबरदस्त वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज स्पॉन्सर्ड एक्सेल विकेट। HE वॉरियर्स के हस्ती इंजीनियरिंग को के मिस्टर नीरव शाह, मिस्टर कौशिक एंड मिस्टर खैनिक गिलानी। वैसे हमारे टीम स्पॉन्सर HMS हार्ड हिटर्स के मिस्टर मयांक, मिस्टर हार्दिक और मिस्टर जिनय, ये तीनों ही। उसी के साथ जो हमारे बॉल एंड किट स्पॉन्सर्स है, चंद्रमौली एंटरप्राइजेस, CME एंटरप्राइजेस, मिस्टर रोहित झटाकिया, मिस्टर प्रतीक शाह, मिस्टर राहुल शाह, एक्सेल वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज के, केडी कॉर्पोरेशन के मिस्टर किरण वोरा, और टीम स्पॉन्सर है DPX डायनामाइट्स के मिस्टर परीन और मिस्टर दीपक। इन सारों का तहे दिल से शुक्रिया। हाँ 88 फॉर 4, 8.71 पे रन रेट पहुंच गया। देखिए जो 8 रन प्रति ओवर था वो अब 8.9 पे जाके पहुंच गया। तो 61 इन 42 अब आसान नहीं होगा। अब किसी एक बल्लेबाज को मैच विनिंग पारी खेलनी पड़ेगी और शायद 2 की ज़रूरत पड़ जाए। मिहिर वो ऐसा खिलाड़ी है जो इस टीम को जीत दिला सकता है। मिहिर का वहाँ पर 20 ओवर तक खड़े रहना काफ़ी ज़रूरी है। मिहिर वहाँ पे रुक जाते हैं तो उनकी आशा ही रही। ये नहीं है कि कोई गारंटी नहीं है कि अगर वो रुक गए तो मैच जीत जाएंगे, लेकिन आपकी जीतने की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, आपके जो जीतने का जो अंक गणित है वो तुम्हारे आपके हिसाब से बेटर हो जाता है। तो 88 फॉर 4, 89 फॉर 4 वाइड काफ़ी हेल्प करेगा, मदद देगा। ये बेहतरीन गेंद, ये प्रॉपर लेफ्ट आर्मर का जो बॉल है, अक्षर पटेल की जैसी गेंदबाजी है, क्विक आर्म एक्शन। अक्षर पटेल ज़्यादा गेंद को टर्न नहीं करते, लेकिन वो विकेटों में ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर गेंद को रखते हैं और कभी कभी क्रैम्प भी करना जानते हैं। ये फ्लाइट दी है
बेहतरीन कवर ड्राइव, इनसाइड आउट, 2 रन तो बिल्कुल मिलेंगे। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। भाग भाग कर रन निकालने पड़ेंगे। काफी अच्छा ग्राउंड है, सामने की दिशा में 55 मीटर के आसपास की बाउंड्रीज है, और जो आप स्क्वायर ऑफ द विकेट बाउंड्रीज है वो 60-65 के आसपास है। तो ये इस ग्राउंड में आप 2 रन 3 रन भी निकाल सकते हैं, और तेजी से अगर आप हिट करते हैं तो जो जबरदस्त लाइटनिंग क्विक आउटफील्ड है उसमें आप चौके भी मिल सकते हैं। हाँ, ये गेंद अच्छा निर्णय अंपायर का, बिकॉज चेस किया था, थोड़े से शफल हुए थे आउट स्टंप के बाहर। जब जितनी बार आप जितने ज्यादा शफल होते ऑफ स्टंप के बाहर, उतना ही जो वाइड का जो विस्तार है, जो नियंत्रण रेखा है, वो अपने आप बढ़ जाती है। वो एक अदृश्य रेखा है, वो कोई लाइन नहीं कि फिक्स इसके उस पार या उस पार वाइड हो जाए। खिलाड़ी उस कहाँ पर है उस जगह खड़े रहता है, उससे निर्धारित होता है वो वाइड हो या ना हो। तो स्कोर 91 पे पहुंच गया, 91 फॉर 4। ये मैच काफी रोचक होने वाला है। हाँ, ये बहुत बड़ा वाइड है। इस वाइड के साथ स्कोर जाएगा 92 पर। मंशा उनकी एक ही है, उनका प्रयास एक ही है, गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर रखे। लेग स्टंप पे बिल्कुल मौका नहीं दिया बैट को स्विंग करने का। तो उनकी जो प्लान है वो बिल्कुल सही है, उसका एग्जीक्यूशन उतना ठीक से नहीं हो रहा है। ये धीमी गेंद, अच्छा गेंदबाजी जब बहुत ही स्लो होती है ना, तो आप सारी ताकत बल्लेबाज को लगानी पड़ती है। उस टाइप की बल्लेबाजी खेलना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, इसलिए आपको कभी कभी रुक कर खेलना पड़ता है। स्पिनर्स अगर वो आम बॉल बीच में डाल दे तो वो रुकने वाली गेंद फट से अंदर भी आ जाए तो आपको एलबीडब्ल्यू और बोल्ड भी हो जाते हो। तो ये एक विशेष कला है कि जिसमें आपको गति में परिवर्तन लाना पड़ता है, आपकी फ्लाइट में परिवर्तन लाना पड़ता है, आपकी लाइन को आगे पीछे बदलना पड़ता है, लेंथ को आगे पीछे करना पड़ता है। तो देखिए ये गेंद स्टंप्स के बिल्कुल ऊपर थी, पहली वाली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रखी थी, और ये आमर थी, ये आम से फेंकी हुई थोड़ी सी क्विक गेंद थी, और काफ़ी अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं जयेश। उन्होंने 22 रन खर्च ज़रूर किए हैं, लेकिन बीच में उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदें भी फेंकी है, और अपनी टीम के लिए एक मैच विनिंग ओवर डाल रहे हैं जिसमें काफ़ी अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की है। सिर्फ 4 रन खर्च किए। क्या गेंदबाजी है, देखिए उन्होंने बहुत बड़ा विकेट ले लिया है। सेलिब्रेशन तो देखिए उनका, जैसे हसन अली आ गया हो। एक्सेल विकेट, वाइपर ड्राइव इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड। हसन अली सीधा पाकिस्तान से फातिमा के ग्राउंड पे, सेलिब्रेशन काफी जबरदस्त था। तो थैंक यू संतोष सर। और तो थैंक यू संतोष सर। आखिरी 6 ओवरों का खेल अब यहाँ से बचा हुआ। 92 फॉर 5, 92 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 विकेटें ज़रूर खोई है। आखिरी गेंद के ऊपर विकेट आया था, और 2 सेलिब्रेशन हमने देखा था यहाँ पर। बेहतरीन गेंदबाजी, उतनी ही अच्छी विकेट कीपिंग, और दोनों ही खिलाड़ियों ने मानो जश्न मनाया था मैदान के अंदर। लेकिन अब यहाँ से जिम्मेदारी भरी पारी खेलनी होगी। पुनीत आए हैं नए बल्लेबाज गौरव। सेकंड एंड पर इस बार लॉफ्टेड ड्राइव किया है, हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद। 1 बाउंस पर इस गेंद को गैदर किया गया। भाविन मेहता, फिगर अगर देखा जाए तो 3.1 ओवर 20 रन और 2 विकेट अर्जित किए हैं। काफी कुछ निर्भर करता है इस ओवर के ऊपर, क्योंकि विकेटों की तलाश होगी। लगातार विकेट अगर अर्जित करेंगे, क्योंकि जीत की अगर बात करें तो अभी भी आने वाली 35 गेंदें और लगभग 56 रनों की जरूरत। 35 बॉल्स 56 रन रिक्वायर्ड टू विन। इस बार अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद थी। भाविन मेहता यहाँ पर बदलाव लाते हुए गेंदबाजी में। पहली गेंद तेजी से की थी, दूसरी गेंद में गति परिवर्तन देखने मिला। 93 फॉर 5, 34 गेंदें
अभी भी 56 रनों की जरूरत इस मुकाबले में, कुछ भी हो सकता है, इक्वली बैलेंस है ये मुकाबला अभी भी। हालांकि आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है, 5 विकेटें खोई है और इस वक्त तो 2 नए बल्लेबाज इस मैदान के अंदर, दोनों ही खिलाड़ी इनिंग को बिल्ड करने का प्रयास जरूर यहां से करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा एग्रेशन भी दिखाना होगा क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट जो है अब 10 के ऊपर आ चुका है, यानी 10.18 की औसत से अब आपको रनों का पीछा करना होगा। तो ऐसे समय पर आपको लगातार आक्रमण, एक बल्लेबाज को यहां से आक्रामक बल्लेबाजी जरूर करनी होगी। इस बार अच्छी गेंद लॉफ्ट किया है, गेंदबाज के सर के ऊपर से इस गेंद को खेला, हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद जब तक आए गेंद को उठाए, शायद शोल्डर पे लगी है गेंद। यस, काफी तेजी से थ्रो किया था, जैसे ही गेंद हाथ में आई लाइटनिंग फास्ट स्पीड से उस गेंद को रिटर्न किया था और एक बैट बाउंस शोल्डर पर लगती हुई, और गेंदबाज के शोल्डर को अगर आप वहां पर कुछ चोट लगती है तो शायद ये उनकी गेंदबाजी में भी कुछ बदलाव जरूर आ सकता है। लेकिन भाविन कुछ एक फाइटर जेट माने जाते हैं, लगातार आक्रमण करते हुए गेंदबाजी के माध्यम से बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की है। 2 विकेटें अर्जित कर चुके हैं अब तक अपने स्पेल का, ये आखिरी ओवर यहां पर करते हुए 22 रन इस स्पेल में अब तक 3.5 ओवर का ये स्पेल रहा है, यानी ये अपनी स्पेल की आखिरी गेंद करेंगे। 31 गेंदें और जीत के लिए 54 रनों की जरूरत। इस बार अच्छी गेंद थी, पूरे सम्मान के साथ में खेला, लिमिट ऑफ रीजन में इस गेंद को धकेला, खिलाड़ी आए गेंद को उठाए, आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल आता हुआ। तो ये यहां से अब स्पेल खत्म हो चुका है भाविन का भी। और जीत की अगर बात करें तो 15 ओवरों का खेल यहां पर हो चुका है समाप्त, और जीत के लिए अभी भी 10.60 की औसत से रन बनाने होंगे। 53 आखिरी 30 गेंदें, 53 रन जीत के लिए। हालांकि देखा जाए तो गेंदों और रनों में उतना अंतर नहीं है, ये 2 खिलाड़ी अगर आक्रामक बल्लेबाजी मैदान के ऊपर करते हैं, क्योंकि आखिरी 2 ओवरों में 20, 22 या 25 रन भी बनाए जा सकते हैं। तो सोच यही होगी आने वाले 18 गेंदों में कम से कम 20 से 25 रन अगर स्कोर कार्ड के ऊपर आते हैं तो आखिरी 2 ओवरों में इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। हालांकि 148 बनाए थे, 148 रन बनाए थे पहले सत्र में, जीत के लिए 149 रनों का टारगेट था, और पीछा करते हुए इस वक्त अगर देखा जाए तो 96 ऑन स्कोर कार्ड। 1 मोर एडेड टू द टोटल, 97 अब टोटल पहुंच चुका है 97, जस्ट 3 शॉर्ट ऑफ 100। जब एक वो 100 का आंकड़ा यहां पर छू लेंगे तो एक आत्मविश्वास जरूर उनके अंदर जागृत होगा। लेकिन गेंदबाजी की भी सराहना करनी होगी, एक और गेंदबाज जो कि अपने स्पेल का आखिरी ओवर करते हुए 3.1 ओवर 23 रन 2 विकेटें। इससे पहले हमने भाविन को देखा था जिनके खाते में 2 विकेटें आई थी, 2 विकेटें आई है गेंदबाज जयेश के खाते में। इस बार कदमों का इस्तेमाल, फ्लाइट किया था गेंद को, ललचाने का प्रयास, डीप में खिलाड़ी वहां पर खड़े हैं और महज सिंगल यहां पर स्कोर कार्ड पर आता हुआ। इस सिंगल के साथ विद इस सिंगल स्कोर मूव्स ऑन टू 98 फॉर 5। वो घूमना चाहिए तो 98 फॉर 5। अभी भी देखिए गेंदबाज लगातार फ्लाइटेड गेंदें करते हुए इस बार लॉफ्टेड ड्राइव किया है, इनफील्ड को क्लियर करने का प्रयास जरूर यहां पर होता हुआ, लेकिन बाउंड्री लाइन पर प्रोटेक्ट करते हुए, बाउंड्री लाइन को प्रोटेक्ट करते हुए ऑन साइड की दिशा में 4, ऑफ साइड में 5। सो स्कोर मूव्स ऑन टू 99, जस्ट 1 शॉट ऑफ 100। देखिए एक बार 100 का आंकड़ा छू ले, ट्रिपल फिगर में चले जाए तो शायद वो आत्मविश्वास जरूर पालेंगे। इस बार कदमों का इस्तेमाल, गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला, लगातार आक्रमण यहां पर होता हुआ। अब हर एक गेंद के ऊपर रनों की भूख बल्लेबाजों की दिखती हुई, क्योंकि जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि आखिरी 5 ओवरों में यदि आप रनों को चेस करते हैं तो किसी एक खिलाड़ी को आक्रामक रूप अपनाना होगा, और वही करते हुए इस वक्त मैदान के अंदर दोनों ही खिलाड़ी हालांकि प्रयास कर रहे हैं, प्रयास होना जरूरी है। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, मिस कर गए गेंद को, विकेट कीपर को भी चकमा देती हुई ये गेंद, हालांकि विकेट कीपर भी समझ नहीं पाए थे इस गेंद को। अंपायर का बाई का इशारा आता हुआ, यानी किसी भी तरह का बल्ला इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ये बाई के माध्यम से 100 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए, इनफैक्ट 101 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
इस बार फिर हवा दी है खिलाड़ी, वहां पर अच्छा प्रयास था। देखिए काफी दूर से आए थे खिलाड़ी, इस कैच को लपकने का प्रयास था। और एक और अतिरिक्त रन ओवर थ्रो के माध्यम से यहां पर स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। तो देखिए 100 के बाद अब रन आना शुरू हुए। यहां पर ओवर की समाप्ति होते हुए 16 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का टोटल 104। सो वेलकम बैक टू द लाइव एक्शन। आपने देखा हमारे सारे स्पॉन्सर्स, हमारे सारे ऑर्गेनाइजर्स, और जिनके माध्यम से इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में काफ़ी बड़ा और अहम योगदान इन सभी का रहा है। तो चलते हैं आखिरी फेज में, यानी आखिरी 24 गेंदे शेष। जीत के लिए अभी भी 45 रनों की जरूरत, और गेंदबाजी में गेंदबाज जिगर, देखिए जिन्होंने पहले ही ओवर में विकेट अर्जित किया था, पहले सत्र में बल्लेबाजी बेहतरीन की थी, 47 रनों का योगदान उनके बल्ले से रहा था। और उसके बाद अगर देखा जाए तो गेंदबाजी में भी अपना योगदान यहां पर देते हुए कि खिलाड़ी बरजोर कोशिश करते हुए एक तरफ से आक्रमण जरूर करना चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाज। और आखिरी समय में अब ये महत्वपूर्ण फेज, देखिए कदमों का इस्तेमाल ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेला, हालांकि सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। विद दिस सिंगल स्कोर मूव्स ऑन टू 106 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट। अभी भी आने वाली 22 गेंदे और 43 रन, 22 गेंदे 43 रनों की जरूरत। और जरूर यहां पर मैं कहूंगा कि इस मुकाबले में दोनों ही टीमें इक्वली बराबर खड़ी है। दोनों ही टीमों के और 50-50% ये मुकाबला झुका हुआ। इस बार कदमों का इस्तेमाल, गेंदबाज के सर के ऊपर से खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर आए, गेंद को उठाए, दोनों बल्लेबाजों ने एक रन दौड़कर पूरा किया। देखिए सिंगल्स में ही रन आ रहे, लगातार कोशिशें हो रही है बड़े हिट लगाने की, लेकिन अभी भी सफलता इस बार बड़ा हिट यहां पर स्वीट पार्ट ऑफ द बैट हिट करते हुए, और ये आता हुआ बेहतरीन केडी क्रिएशन सुपर सिक्सर, केडी कॉर्पोरेशन सुपर सिक्सर यहां पर आता हुआ। मच नीडेड बाउंड्री, यहां पर परिंदों को मंजिलों की मिलेगी यकीनन। ये फैले हुए पंख उन्हें बोलते हैं। देखिए ये जो सिक्सर यहां पर आता हुआ तो यकीनन तो 6 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल 113 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब यहां से मुकाबले में क्या वापसी दिला पाएंगे अपनी टीम को। बेहतरीन शॉट पिछले गेंद के ऊपर, मैं कहूंगा काफी देर से कोशिशें हो रही थी एक बड़ा हिट लगाने का, प्रयास जरूर यहां पर था। फिर एक बार कदमों का इस्तेमाल किया है, हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। इससे पहले वाली गेंद के ऊपर एग्रेशन दिखाया था, छक्का लगाया था बल्लेबाज ने।
114 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी जीत की बात करें तो 11.05 के औसत से रन बनाने हैं आने वाली 19 गेंदों में, 35 रन। तो इसीलिए लगातार कोशिशें यहाँ पर हो रही है। इस बार डीप में प्रोटेक्शन जरूर है, दूसरे रन के लिए आना चाहते हैं दोनों ही खिलाड़ी। 2 रन यहाँ से मुकम्मल होते हुए, तो इन 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल 17 ओवर की हो चुके हैं समाप्त 116 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सो वेलकम बैक। आखिरी 3 ओवरों का खेल यहाँ पर बचा हुआ, और रनों की अगर बात करें तो 116 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास, 139 रनों का टारगेट यहाँ पर। और पहली गेंद के ऊपर नील अपनी स्पेल का तीसरा ओवर यहाँ पर करते हुए। देखिए दोनों ही खिलाड़ियों से लगातार कोशिशें हो रही है, लगातार दोनों ही खिलाड़ी यहाँ पर ज़रूर अपने काबिलियत को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। पुनीत जो कि खेल रहे हैं अपने निजी 11 रनों पर, और गौरव जो खेल रहे हैं अपने निजी 12 रनों पर। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, कट करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन गेंदबाजी की भी सराहना करनी होगी। देखिए काफी अच्छा कमबैक रहा है। आखिरी 3 ओवर अभी भी खेल आना बाकी है, और रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें तो अब एग्जैक्टली 12 रन पर ओवर, यानी आखिरी 16 गेंदे, और अभी भी जीत की बात करें तो 32 रनों की जरूरत। गेंदबाज नील फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी है, अपने ऊंचाई का काफी अच्छा इस्तेमाल करते हुए गेंदबाजी में। ठीक है, बतौर मीडियम पेसर गेंदबाज है। और रिलीज पॉइंट अगर आप देखें तो ऊंचाई, अपनी लंबाई का सही इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज। अब मुकाबले में दिलचस्पी बढ़ती हुई, क्योंकि आज के सत्र का ये दूसरा मुकाबला यहां पर चलता हुआ। शाम का समय, खुशनुमा माहौल, ठंडा मौसम यहां पर चलता हुआ। इस बार अच्छी गेंद, फिर एक बार ड्राइव लगाना चाहते थे, लेकिन कहीं गेंद उनकी अपेक्षा से थोड़ी तेज आती हुई है गेंद। हालांकि मीडियम पेसर गेंदबाज है, लेकिन कभी कभी अपने कंधे का इस्तेमाल करते हैं तो गेंद में वो गति पा ही लेते हैं जहां से बल्लेबाज को बीट कर सके। कुल रनों की बात करें तो 17.4 ओवर हो चुके हैं 117 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, और 5 विकेटें खोई है। शायद यही एडवांटेज होगा गेंदबाजी के लिए। इस बार अच्छी गेंद, अंदर की तरफ आती हुई ये गेंद, और हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, सिंगल बटोरते हुए। अब फील्डिंग करने वाली टीम भी जानती है, डीप एक डायनामाइट बनाम TUVX तूफान, इन दोनों टीमों के बीच चलता हुआ ये आज के दिन का दूसरा मुकाबला। तो सिंगल से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये अब खिलाड़ी भी जान चुके हैं। DPX डायनामाइट जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 148 रन बनाए थे, 149 रनों का लक्ष्य रखा था। गेंदबाज नील, इस बार बड़ा हिट, गेंदबाज के सर के ऊपर से इस गेंद को खेला। हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जानते हैं कि ये इस खिलाड़ी का स्ट्रांग जोन है, लगातार इस जोन को टारगेट करने का प्रयास जरूर हो रहा है। तो 18 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है 119 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो आने वाली अभी भी 12 गेंदे और 30 रनों की जरूरत।
तो आखिरी 12 गेंदें बची हुई जीत के लिए अभी भी 30 रनों की ज़रूरत और ज़रूर यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। तो आखिरी 12 गेंदें यहाँ पर बची हुई, कोशिश जरूर होगी दोनों ही खिलाड़ियों की, लगातार आक्रमण यहां पर करते रहे। इस बार पहली गेंद के ऊपर बल्ला घुमाया, हालांकि गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी, लेकिन एक आत्मविश्वास जरूर देकर जाएगी कि हाँ, इन 12 गेंदों में ये 30 रन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। यही यहां से कोशिश होती हुई जिगर गेंदबाजी के लिए आए, अपने स्पेल का आखिरी ओवर यहां से करते हुए, एक महत्वपूर्ण ओवर, क्योंकि 20 ओवरों में 19वां ओवर हमेशा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार कदमों का इस्तेमाल उठाकर खेला है, हालांकि एलिवेशन नहीं है, फिर एक बार दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद ट्रैवल करती हुई, मौका बनता हुआ दोनों ही खिलाड़ियों के पास, और ये लगातार दूसरी गेंद के ऊपर 2 रन। तो पहली 2 गेंदों में आए। पार्टनरशिप की अगर बात करें तो 26 गेंदों में 31 रनों की पार्टनरशिप कर चुके हैं दोनों ही खिलाड़ी, तो एक मैच विनिंग पार्टनरशिप में तब्दील करना चाहेंगे यहां से। अभी भी आने वाली 10 गेंदें और 26 रन की जरूरत। क्या यहां से एक आध दो बड़े हिट आते? इस बार थ्रू द कवर खेलना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, किन गई डीप पॉइंट में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, तैनात थे, सिंगल आता हुआ। तो पहली 3 गेंदों के ऊपर 5 रन आए, थोड़ा सा थकान जरूर महसूस कर रहे हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर बल्लेबाज गौरव, लेकिन पुनीत शाह, देखिए इनके अंदर भी वो काबिलियत है, वो बल्लेबाजी है। कहते हैं ना कि हुनर सबके पास होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। तो यहां से अपने हुनर को हवा देनी होगी। इस बार बॉलर्स बैक ड्राइव, गेंदबाज के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन ये क्या कर बैठे, अपनी महत्वपूर्ण पूर्ण विकेट यहां पर गवाई। एक और विकेट मैदान से बाहर आता हुआ। वाइपर ड्राइव, इंडस्ट्रीज प्रेजेंट्स एक्सल विकेट। ये एक और विकेट यहां से खोते हुए अब 124 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 6 विकेट के नुकसान पर।
ये कभी कभी काम कर जाता है। अलग लगता है। सो वेलकम बैक टू द लाइव एक्शन। आखिरी 6 गेंदे 20 रन की जरूरत। यहाँ पर देखिए अपने ऊपर विश्वास दर्शाते हुए डाउन द विकेट आए थे बल्लेबाज, बड़ा हिट लगाना चाहते थे और ये लगातार कोशिशें यहाँ पर बल्लेबाजी से होती हुई। हालांकि पहली गेंद को मिस कर गए, लेकिन अभी भी जीत की अगर बात करें तो आने वाली 5 गेंदे और 20 रनों की जरूरत, ये इक्वेशन यहां से बनता हुआ। पहली 3 गेंदों में एक बड़ा हिट जरूर मुकाबले में वापसी दिला सकते हैं। इस बार सीधे बल्ले से खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के जो खिलाड़ी है आज काफी बिजी रहे इस खास करके आखिरी 5 ओवर में। इस बार दूसरा रन लेना चाहते थे, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, विकेट गवाया। एक और विकेट यहां से आता हुआ। वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज प्रेजेंट्स एक्सल विकेट नंबर 7। हमारे विकेट स्पॉन्सर वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज एक्सल विकेट यहां से आता हुआ। महत्वपूर्ण विकेट, निर्णायक समय पर अपनी टीम का साथ यहां पर छूटता हुआ। देखिए सराहना करते हुए खिलाड़ियों की भी। अभी भी जीत की बात करें तो आने वाली 4 गेंदे, अब शायद पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट। हालांकि सिंगल जरूर आया था, दूसरा रन लेना चाहते थे। देखिए 149 रनों को भी यहां पर डिफेंड किया गया है। पहले मैच में हमने देखा 113 रन को डिफेंड किया था, बेहतरीन गेंदबाजी की थी। और अब अगर देखा जाए तो नए बल्लेबाज रौनक, इस बार अच्छी गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला इस गेंद को, लेकिन सिंगल से खासा फर्क नहीं पड़ेगा, ये खिलाड़ी भी जानते हैं। फील्डिंग टीम यानी कि डीपीएक्स डायनामाइट्स। देखिए इससे शुरू में लगा था, जिस तरह से पहले ओवर में विकेट आया था तो वहीं से शुरुआत हुई थी मुकाबले में। थोड़ा सा दबाव बना लिया था शुरुआती पहले 6 ओवरों में, सीमित रन आए थे स्कोर कार्ड के ऊपर और वहीं से जो दबाव है लगातार बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर। लेकिन मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ। आखिरी क्षणों में मुकाबले को पलटते हुए हमने काफी दफा देखा। इस बार अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इस बार 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए। तो आने वाली आखिरी 2 गेंदे और 16 रन। यदि गेंदबाज गलती करते हैं तो एक आउटसाइड चांस जरूर बन सकता है बल्लेबाजी करने वाली टीम को, क्योंकि एक हाथ बड़ा हिट इस बार की सीधे बल्ले से गेंदबाज के सर के ऊपर से खिलाड़ी वहां पर आते हुए एक और विकेट यहां से मिलता हुआ। अब दबाव पूरी तरह से बनता हुआ। देखिए सीधे बल्ले से खेला लेकिन खिलाड़ी वहां पर थे, तो एक और विकेट यहां से आता हुआ। वाइपर ड्राइव इंडस्ट्रीज प्रेजेंट्स एक्सल विकेट नंबर 8 मैदान से बाहर। कि अब मुकाबले को पूरी तरह से आगोश में कर लिया है। यकीनन मैं कहूंगा कि बेहतरीन गेंदबाजी की, नियंत्रित गेंदबाजी की, लगातार इंटरवल पर विकेट चटकाए और लगातार दबाव बनाए रखा। और यही कारण था कि 148 रन, महज 148 रन स्कोर कार्ड के ऊपर थे, लेकिन 148 रनों को भी डिफेंड करते हुए अब मुकाबले को पूरी तरह से आगोश में लेते हुए बेहतरीन गेंदबाजी सभी गेंदबाजों के माध्यम से, खास करके नील जिन्होंने 53 रनों की पारी खेली थी अपनी टीम के जीत में, वह एक अहम योगदान उन्होंने बल्ले के माध्यम से दिया था। और कहते हैं ना कि यहाँ पर
अब मुकाबले को पूरी तरह से अपने आगोश में करते हुए और आखिरी गेंद के ऊपर महज सिंगल यहां से आता हुआ तो जीत मुकम्मल हो चुकी है और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे जिगर उपाध्याय जैक, जिन्होंने 47 रनों की नायाब पारी खेली और गेंदबाजी में क्या बेहतरीन आंकड़े हैं। 4 ओवर 28 रन 1 विकेट, ऑलराउंड परफॉर्मर जिगर रह चुके हैं इस मैच के मैन ऑफ द मैच। लेकिन टीयूवीएक्स टीम के लिए मैं जरूर कहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, समझो और स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन के त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्रयास अच्छा था लेकिन आखिरी समय में यह मुकाबला हाथ से निकलता हुआ। तो जीत दर्ज कर चुके हैं डीपीएक्स डायनामाइट्स। डिफेंडिंग चैंपियन को हराने के बाद बुलंद हौसलों के साथ ये टीम, देखे टीम आइडल एक दूसरे का यहां पर उत्साह बढ़ाते हुए जिगर उपाध्याय जैक रह चुके इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच फॉर द टीम डीपीएक्स डायनामाइट। बहुत ही शानदार मुकाबला यहां पर रहा और जीत का जश्न यहां पर मनाते हुए डीपीएक्स डायनामाइट। और आज के शाम के आखिरी मुकाबले की ओर हम जरूर चलेंगे। ये देखिए शेक हैंड्स होते हुए, तो ये काफ़ी सुंदर दृश्य मैदान के अंदर हम देख रहे हैं। एक राइवलरी हमने देखी मैदान के अंदर, जीत के लिए दोनों ही टीमों को लड़ते हुए हमने टीम डीपीएक्स डायनामाइट्स और टीयूएक्स तूफानी को देखा। लेकिन आखिर में जहां पर मुकाबला खत्म हुआ फिर एक बार सेकंड्स होते हुए, तो ये काफ़ी शानदार मंजर इस वक्त स्क्रीन के ऊपर दिखता हुआ। और यही होना चाहिए, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन्स और आपकी जो भी राइवलरी है वो मैदान के अंदर होनी चाहिए। और यही दिखाते हुए शानदार मंजर आप देख रहे हैं। नागदेवी स्पोर्ट्स ग्रुप प्रेजेंट्स जिनहर्ष टिमकिन एडोर कप 2023 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 4 और इसके टाइटल स्पॉन्सर्स है जिनहर्ष इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। एक बेहतरीन लेदर बॉल टूर्नामेंट यहां पर आयोजित की गई है। तो सभी दर्शकों का यहां से फिर एक बार स्वागत है। आज के दिन का आखिरी मुकाबला अब कुछ ही समय में आपके सामने, जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। आज के दिन का आखिरी मुकाबला जैसे ही शुरू होगा हमारे साथ जुड़ जाएंगे संतोष जी मितबावकर सर, अंग्रेजी और हिंदी के मशहूर कमेंटेटर, और मैं प्रवीण अर्जुने कलम बोली पनवेल आप सभी से विदा लेता हूं। और ओवर टू द संतोष जी मितबावकर सर।
So very important match for both these teams, KKE Smashers and HE Warriors. Nirav Shah, the owner of this team, the owner of Hasi Engineering Company. Nikunj and Rajiv Taparia and Nikunj Shah. Oh, that's beautifully bowled and nicely pouched. What a good catch that is. Running towards his left, he takes a very good catch. Extremely good catch. That's a fantastic excel wicket powered by Viper Industries. It's Pratik Shah and Rahul Shah. What a good catch that was. That was an excel wicket from an excellent slower delivery. Well, 12 is what the score is, on which the first wicket falls. Nikunj, that slower delivery doing in Nikunj's wicket just stopped a bit and hit the top of the bat and easily taken. In fact, that was a very good catch taken by the fielder at mid-off. 12 for 1. We are into the second over. The scoring is great, but the problem is that they have lost the opening batter, Nikunj. We saw Rajiv Shah in the previous match. Now it's Raju Taparia, another of our committee members of NSG. These guys have been the pillars of support for this tournament. Actually, their tournament only happens when people of common interest come together and work together. You can never achieve something if you are surrounded by people who have different ideas. You need to think in sync if you want to achieve something. And these guys have been, their sole aim is the passion for this game. You can say a little more than that. It's not passion, it's almost madness about the game, and which brings them together. So it's a media to bring your committee members, your community members in fact, and people from different walks of life, different cultures together, so that you know each other and you play with each other, play against each other, and at the end of it have a smile on your face and you get to know a few more friends, make new friends and create some stories. That's what life is all about. All the small little stories which we have, we play together, we win together, we enjoy together, we cry together at times, and that's what life is. And these guys have done a great job of getting people together, because that's what actually has not been happening lately, because most of us are divided by that social media, and when you physically come into each other, bump into each other, you actually know what kind of a person he or she actually is. So that mirage of that social media is covered by this actual one-to-one conversation between people, and the big valley which has been created by the social media is broken by tournaments like this. So more of such events where families come together is needed, and Rajiv also has done a big part in it. I don't know if this, we saw Vipul yesterday, we saw Rajiv Shah today, and it's going to be Raju Taparia again. We will see Bhavin also in this match. There are so many of them in this team, and Bhavin for me actually he takes it very lightly, but he has a fantastic technique. He just fools around when he comes to bat, but actually for me he can be a very good batsman because his technique is good. And if you want to talk about the most valuable player, he is one such, but he has very little luck on this side this year. Nirav Shah, he was out on a very 50-50 close decision against bowling of Ronak yesterday, day before in fact, and his wicket was a crucial blow and they lost that very important first encounter. This is a do or die match for both these teams. They need to win this one in order to stay in the contest. So KK Smashers versus HE Warriors. Today we saw two matches of two contrasting stories, where we saw both the matches overturned. The score is 13 for 1. We are into the third over. Oh, that's beautifully done off soft hands. The score moves on to 14 now. 14 for 1. The scoring is fine. And Nirav has given away 8 runs. Nirav is a pretty good bowler, but in tournaments like this where you have most of the players who are amateurs, who are not the ones who play the cricket regularly, most of them have played the cricket in their childhood, maybe college days, but not all of them are playing regular cricket. Some of they may be playing some amateur matches, some community matches, but not all of them are the ones who are regulars. So in matches like this, if you use a lot of pace, there are going to be some edges which are going to fly through. So you need to change your pace. Not always quick paces are. That's what is problem of Nirav, and he has got something in his favor. In fact, he hasn't.
his relationship with the umpires has not been romantic this year. He hasn't got anything in his favor. In fact, this was very high, and going down leg clearly would have missed another set of stumps, and it was quite high on the knee as well. But he will bowl that quicker one. Take my word, this is going to be a quick Yorker. Oh, he almost got his man. Today he is looking very sharp. The other day he was like bowling with more of anger as some of the balls were flying away. He has that natural away going delivery. He is a natural away going bowler, which is a very difficult art. Bowling the in swingers is easy, but if you bowl and the balls which go out, that is special actually. The new ball is talking for Nirav. He might get it still fuller, and that's the problem. Every time you bowl quickly, the ball just flies away off your bat, and that's going to help the opposition. So good bowling by Ronak today. Also we saw some good all-round display by Neil today. For me, Neil today has been the star. He won that match single-handedly with his batting and bowling. Remember, when the team was 47 for 4, he got 53 of just 31 balls, and when he came back, he bowled those crucial 17th and the 19th over, in which he almost won. In fact, 18th and the 20th over, in which he won the match. Let's come back live now. Rajiv Taparia. That's very wide. That was a big slash, and it's always good when you have width on offer in the first few overs. You have to go for it. If you connect it, if you slash it, it flies away for a boundary. If you connect it well, it will go in covers. Even if you don't connect, you get a wide. So if there is width on offer, go for it. That's a very good ball. In fact, oh, that is very close. In fact, could have been a wide, could not have been a wide, because just inside that ram line. No, it was just outside. That is a good call. But the way the batsman had shuffled across the crease, this can happen to the best of the bowlers. He has taken a wicket. He's given away 9 runs, but he should remember the ball with which he got the wicket was a slower one. So at times you should be rolling the fingers even, because the ball just holds on into the pitch at times. Played so many matches on these wickets this year. That's the reason we haven't been seeing those kind of batting performance, because the wickets in the last year, they were flat decks because COVID period had helped to maintain the ground, and it has been a very busy track over here for the last few months. There have been a lot of matches played. Even the pitches may get tired, but this is an ideal pitch for tournaments like this, because the ball does not bounce much awkwardly, so there are less chances of people getting injured, and that's what we want. We want your safety. That's what another over pitch delivery, and one Rajiv was successful. Another Rajiv has to go back. He played very well in the other day, but today he gets out. He is the skipper of the team. That's an XL wicket powered by Viper Drive Industries. Mr. Prateek Shah, Mr. Rahul Shah would be very proud of what they have seen. We have seen some very good wickets being picked. KK Smashers, they have lost 2 wickets. Their scoring is alright, but 2 wickets too many. Back live here, score is 19 for 1. Nalin is the new man in. Nalin Makwana. This is going to be crucial for HE Enterprises, because both these teams have not got success in their first encounters. So it's a very important match for both these teams. Nero especially, he is one of the premier all-rounders of this tournament, and perhaps the best owner, I would say, who is playing as a captain.
So he was scintillating last year by batting, bowling, everything. This year, the fortune wasn't on his side, I would say, and the decisions were not going his way. But his other partner has done well. He has picked up 2 wickets. That's beautifully played. What a good shot! That is cut late, but there is protection over there. There is third man. Nicely done, using soft hand, deft touches. So once you get those balls of the middle of the ball, it's not always those big booming drives that can give you confidence. Anything of the middle of the bat can get you into a good position. The scoring is fine, absolutely fine, but 2 wickets is a concern. So 21 for 2. Nagdevi Sports Groups presents Jinharsh Timken Ador Cup 2023. This has been a tournament where we have seen the bowlers being a little more stronger over the batters this year. The other year it was the batters who were ruling the roost. That's beautifully bowled. Again, the lesser pace, it is difficult to hit the balls. But that has been the mantra at times. The only bowlers who were able to trouble batsmen with pace were the bowler in the previous match. We saw Neil, we also saw Ronak, and one bowler who has made a mark in this tournament is again Vatsal Doshi. Vatsal last year was a young bowler. He was bowling some wayward deliveries. This year he has been lethal, bowling with more accuracy and more discipline, and that becomes dangerous. And he has got the third. Dhawal has got the mid-arc touch. Dhawal means something which is in black and white, but this man is proving to be something very colourful with his wonderful bowling action. He gets out. Another XL wicket sponsored by Viper Drive Industries. विपुल नहीं आउट हुआ. विपुल आ रहे हैं क्या? आपको पता है विपुल आ रहे हैं? हाँ विपुल आए. आपको कैसे बता रहे हैं? अच्छा उधर डाल दिया क्या? देखा तुमने? डाल दो, ऐड डाल दो. Yes, back live by VR. The score is 22 for 3. KK Smash is in deep trouble, and the skipper comes in with his quicker deliveries. And every time you see him not picking wickets, live 22 for 3. Oh, that's beautifully bowled. In swinging ball. The previous ball went out. This one came in. He has a lot of potential, and every time you try very hard and you don't get success, there are chances of you getting irritated. That can happen in life. That can happen in cricket. At times you work very hard, you don't get rewarded. There are people who just don't do any work and they get rewarded. So your time's going to come. You don't have to be impatient. You need to wait, and you need to keep performing the small little things again. See, that's what happens with him. He has bowled 3 balls. The first one went out. The second one he bowled the incoming ball. The third one he bowled the yorker, and he's put all his best deliveries. He's not getting a wicket. That can happen so many times in life, that you put your best thing and you still don't get wickets. And the other bowler who has not bowled some good deliveries, has bowled in fact a lot of wides, he'll get 3 wickets. That can happen to you, but you have to understand that the team score is good. That has been precisely seen in Nirav. He is the one who prides on his self performance. Even he was fantastic last year. He's a great leader, but he prides his game a lot. Those 2 doctors, Kenil and Darshan, they were superb last year. And even this man on your screen, Nirav Shah, he was fantastic. We saw Prince, who was very good last year, but this year the youngster Neil has been very impressive. Also Vatsal, he showed his glimpses last year. I think he was another series in one of the tennis tournaments, and this year he's just unplayable at times. Meanwhile, more than Vatsal, I have been very impressed with this man's attitude. He may be looking young, just like Anil Kapoor, but he's not that young. Take my word, he's maybe 40 plus, and but he's very, very fit and agile. Oh, what a good shot! Getting on the top of it, straight to the fielder, and takes that run easily.
Yesterday I said Vatsal has very strong legs, he can run very fast, he can bowl very quickly. But more than Vatsal, Vipul's heart, his heart is very big. That makes him run around, that makes him score those 40 runs, that makes him get those 2-3 wickets, and still he does not show any kind of fatigue. And that can only happen when you are completely mad or completely passionate. These guys are passionate about the game. These guys, when they were young, maybe in their teens or maybe very young, Sachin Tendulkar was the one who may have made them completely mad in this game. It started with the 1983 World Cup when the Indians won, but it was Sachin who has spoiled actually so many careers. People like me, even when we were doing our engineering, we were still interested in cricket, and many careers were spoiled by this man's game, and many were actually interested in other things. Wanted to contribute. So 25 for 4, and Dhawan, someone has to go and touch him. They say Paris or they say Midas touch. So, whatever he's touching is turning out to be gold now. And he has not got 1, not 2, not 3, but 4 wickets. It's not exceptional or super special balls. This is a super wicket, excel wicket sponsored by Viper Industries, but his bowling has been quite normal. He's just putting the ball in the right areas, and rest the wickets are falling around. ये ना ऐसे 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 जाओगे इधर हो गए ना, इधर वाले कब जाएंगे, फिर इनको पैसा नहीं देंगे. This is where the score is very different. 25 for 4. Remember, 12 wickets we can go around. Yeah, he's a good choice. He's being dropped. But I would love this. Such kind of players who will find it difficult to have running it in the wicket. I would dearly love to have him in that power play. And Bhavin has a fantastic cover drive. That's what I was talking. He should not take his game lightly. If I am the captain of such a player like Bhavin, I would just encourage him to go for his shots, and he can get you those boundaries because he has got a strong, decent technique. Look at the poise where he stands, and he can hit those nice cover drives. So Bhavin just trying to study the ship, and this guys do a lot of hard work. Last 2 months, these guys have been hunting me. They are just sending me and asking me for the dates. Even Vipul bhai and Bhavin bhai, they just are so very much involved in this. They want the tournament to be a successful one. They take care of all the small nitty-gritties. He was into a spot of bother, and to take care of all things, all the necessities of the YouTube broadcasting, the umpires, the ground facilities, and all other things. And then again to come out and play, it takes a lot out of you. And it was Vipul who used to do a lot of things last year. It has Bhavin and the whole team has divided their work in between. To those 10-12 guys,
cricket passionate people have come together and they have put together a strong team, and this is the 4th season I feel. And I've seen some older videos of this team. They have been in different venues, but the passion is still there. They have come to a more professional place, almost like a stadium, where they can experience as good as an experience of playing at a Wankhede or a Brabant, that kind of ambience. A day will come when they will play in places like DY Patil, even the finals. That can come. Yes. "25 for 4." We are into the 6th over. These are going to help. Now Vipul and Bhavin, these guys have been making all the arrangements. Let's see whether they sort out that issue over there. These are the troubleshooters whenever something wrong happens. But let's see whether these troubleshooters get them out of this trouble. And Sandeep Walicha, he is a very good all-rounder. What a good shot off the back foot, beautifully played. He gets it off the middle of the bat. He has a very strong, decent technique, and he's a very street smart player. Vipul, he's almost like a mix of a leather cricketer and a tennis ball cricketer. He has a street smart attitude of getting those singles, and also he can get to those authentic cricketing shots of leather cricket as well. And these two guys are the backbone of this NSG group. And let's see, Bhavin, he's still not off the mark, but he can be effective. Let's see, anything in his arc, and if he decides to go big, hitting into covers requires a lot of strength in your forearms. It's not an easy shot to execute, and it's a pretty long boundary over there. If he hits down the ground, Bhavin still not off the mark, but Bhavin understands staying there is more important. I just want him to show some intent actually to get those bigger shots in. 27 for 4. We are into the 7th over. Bhavin Vora and Vipul Doshi. Sandeep Walicha, he bowled really well in the first match. He batted also very well. In fact, he was the only performer who did well in both the departments in their first encounter. This is what I was talking about, Bhavin. He is pretty strong with his technique. See, just like squatting a fly, he hit that ball, it raced towards long off. So he should take his cricket seriously actually, and this situation is ideal for him. Get those singles, walk those singles, and when the time comes, he can smash a few boundaries. He may not give you sixes, but he can give you those nice boundaries because his technique is pretty strong. He can play very well down the ground, and another smart player who can play some cross-batted shots as well, that is Vipul. That's his area, that point region. How did that miss the off stump? The ball kept low. That's what Sandeep is wondering. Vipul, he played really well in the previous match. He got some 38 or 39 runs, which were crucial for his team's hopes. But unfortunately, they lost very, very miserably. But this is the chance for them to make a comeback. This is where both the teams, it's a do-or-die match for them. Both the teams have lost their first encounters. You lose here, almost your chances become completely bleak to qualify for the semi-finals.
That's a wide that's going to help. 29 for 4. Very, very important match for these two teams. Bhavin and Vipul versus Nirav Shah of Hasti Engineering, HE Enterprises. Oh, that's in the slot. The score moves on to 30 now. 30 for 4. Yes, media partners QLH, they got associated with us last year. They are again with us. The Shahs, Sanjay Shah, Kunal Shah and Harish Mehta guys got in touch with us last year in terms of sponsorship, and they have stayed with us. In fact, the food which has been sponsored by Mr. Rakesh Waghela and Nishan Shah, they were the same sponsors and they have continued that support. Naukar Enterprises has been the one who has given us this fantastic apparel. You look smart and sleek in that. Also, the YouTube live sponsors which have been brought to you by JFSE broadcasting team, Bhavesh, Mr. Master and Sons, Bhavi Impex, Mr. Chitresh Udani and Mr. Ajay Agarwal of NK Trading and Sri Sham Impex. Media partners QLH, Sanjay Shah, Kunal Shah and Harish Mehta. Also our ball and kit sponsors CME Chandramouli Enterprises. So thank you all of these guys. Of course, this wonderful venue, the ground sponsors Mr. Vikas Gupta. He has been a good hand. 7.1 overs, 30 for 4, and it's Vipul Doshi who is on strike. Vipul and Bhavin have tried together to put up a partnership, but the scoring has been slightly slow. Krunal, he bowled really well in the first match. That's going to be a wide. He starts off with a couple of wides. In fact, it's a leg by. I beg your pardon. I'm extremely sorry. Didn't see that the ball brushing off the pads. The score moves on to 31 now. He hasn't conceded a run then. Krunal has bowled 2 balls and just that was a leg by. So that wasn't that a great ball because that was sliding down the leg side. He bowled really well in the first match. Wasn't that successful. Let's see whether he can view the same magic over here in this match. They lost a match against TUX Tufani. They lost a lot of wickets when they were chasing down the score. 163 or something which they had to chase down. And they fell miserably short because they lost a lot of wickets in the first part. That's beautifully played. Off the back foot, glided for a single. The score is 32 now, 32 for 4. Nagdevi Sports Groups presents Jinharsh Timken Cup. Title sponsors Jinharsh Industrial Solutions Private Limited, Mr. Jai Prakash Vasa and Mr. Girish Vasa. That's a big wide and good collection by the wicket keeper. These guys have been playing cricket with each other for last 25-30 years. Rajiv Taparia, Rajiv Shah, Vipul, also Bhavin. Cricket is in their blood. In the last 4 years they have formalized into this NSG tournament. This is the 4th edition. Both leather ball cricket and tennis cricket. They are in some fantastic, fabulous matches. After this there would be tennis cricket matches in the next week. That's beautifully hit down the ground. There is more viewership when it comes to tennis ball cricket because lot many people are involved in it, and we have some colorful festival of cricket in those 2 days. This is more traditional. This is more where you can display your skills. This is some real cricket. And Bhavin has got a couple. Let's see whether he will take this scoring somewhere around 130, 140 because that's what they would be thinking of after losing 4 wickets in the first 3 overs. That's a wide. That's going to help.
That's another wide. The score moves on to 36 now. Krunal is such a good bowler, just losing his line against the left armer. Again, the right handers he bowls well, and just getting his line awry against the left hander. Two wides in succession. That's beautifully bowled. The score at the end of this over is 36 for the loss of 4 wickets. This wonderful team. Shot that's just popped out of the hand at the last moment. They need to get a move on now. They will try and go for the shots. They hit it very hard down the ground. There was an opportunity, the ball just popping out of the hands. "37 for 4. We might just see Bhavin going for his shots now. He's got 2 of 10. He stayed there and tried to steady the ship. He hits it back to the bowler. Sandeep is a handy bowler. Very, very economically was in the first match. He also took a few wickets. And he has got Bhavin. That's a beautiful ball. And missed the outside half of the bat and hit the off stump. Rolling his fingers on the ball. He has got his man. Bhavin gets out. That's the Excel wicket powered by Viper Drive Industries. चार्जर था यहाँ पे. That's good bowling. That's keeping it tight. Parag Sarvaiya is the new man in. Vipul Doshi is 5 of 10. KK Smashers, who played the first match, even if they lost, they played really well. And this match, they are just capitulating. They're not performing as per their potential. Their important players are out. The opening batters are out. And the skipper of the team, he got out early, Raju Tuparia. And his team is in spot of bother now. 37 for 5.
11.1 overs remaining. Again he rolls his fingers, and that's a nice shot of the back foot. The ball is racing. What a good shot that is. That's a fantastic KD Corporation boundary. That's beautifully done. See, that's nicely carved, finding the gap between the two fielders at point and cover, and getting a very, very important KD Corporation boundary. That's a crucial blow. They wanted it. The scoring was just halted. They needed some runs. So the score is 41 for 5. That's nicely bowled. That's again very well bowled by Krunal. He's bowled well. He has just given 5 runs. People need to stay there along with Parag there. Parag has got a boundary, nicely hit boundary of the back foot. Yeah, that was a good attempt. That's a wide. In fact, they get 2 runs, 2 wides. The ball was drifting down the leg side. Vipul's idea was right. Even if he doesn't connect, that's going to be a wide. If he connects well, he's going to get 4 runs. But that's a right idea, right approach for a ball which is down the leg side. And if you want to hit it hard. Don't tickle it. So that's what he tried to do. That's good thinking by Vipul Doshi. That's again a very good shot. Has it gone on the winnow? They get a couple. In fact, that was a wide. So 3 wides. (46 for 5). We are into the 10th over. These wides have helped the scoring. Kunal, who bowled a really good first over, giving away a freebies in the second over. Hey, you're there. Box man. 46 for 5. We are into the 10th over. It's been a very pretty long over. Couple of wides. In fact, 5 wides given away in this over. He wanted to play with soft hands. A lot of confusion. Finally, they decide what is best for them, not to go for it. The 2 balls to go. They have got 5 wides in this over. Parag. He's playing off the back foot, which is dangerous, of the balls which are pitched up. The score moves on to 47 for 5. Almost the same score which we had in the previous match, where they were 47 for 4. They went on to make 148. And it was Neil and Jigar who played very well in that previous match. You won't get a 148. You can get 120, 130. You can fight with that on this ground. If you field well, you can fight with that. Under lights, it won't be that easy. The score at the end of over number 10 is 47 for the loss of 5 wickets. 10 overs remaining. Let's see what this guys do in the last 10 overs.
Yes, back live. We are 47 for 5. Last 10 overs remaining. आखिर की 10 overs और इस 10 overs में ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने का उनका प्रयास होगा, लेकिन इसके विपरीत के स्मैशर्स को कम से कम रनों में सीमित रखने का प्रयास होगा एचई वॉरियर्स का। एचई वॉरियर्स के लिए और के स्मैशर्स के लिए, दोनों के लिए मस्ट विन मैच है। यहाँ से भी अगर कोई भी टीम हार जाती है तो लगभग उनके चांसेस के क्वालिफिकेशन के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही टीम एक एक मैच हार चुकी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीम्स के लिए, डू और डाई सिचुएशन। एक तरफ पराग है, एक तरफ है विपुल। दोनों ही 5-5 रन बना चुके हैं और गेंदबाजी के लिए आए संदीप, जिन्होंने 2 काफ़ी बेहतरीन ओवर्स डाले और भाविन का विकेट भी उन्होंने चटकाया था। 47 पे 5। पिछले ओवर्स में काफ़ी वाइड्स की मदद से स्कोर थोड़ा सा आगे ज़रूर बढ़ा था और चीज़ें बदल सकती है ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। इसके पहले वाले मैच में आपने देखा था कि जैसे ड्रिंक ब्रेक्स ख़त्म हो उसके बाद उन्होंने हर ओवर में 10-12 रन मारना शुरू किया था, लेकिन शायद 7-8 रन भी हर ओवर आए तो भी ठीक है। पराग सरवैया, and that's outside the off stump. That has to be a wide. It is a wide. That's a right call. Sandeep is not happy, but that's a right call. The ball was already outside the off stump of a long way, and then it kept on going away. Though the batsman had shuffled, but that was the right call. And Nalin has failed twice in a row. Nalin is a pretty important player for their team, and he did not do well. That's a very good ball. And his back foot did not move to his advantage. नलीन की विकेट जो जल्दी चले गए थे दोनों मैचेस में, बहुत बड़ा प्लेयर है लेकिन आज नहीं परफॉर्म कर पाए आज भी। सो 2 बड़ी विकेट्स, 48 पे 5, 48 फॉर 5। संदीप फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बेहतरीन कवर ड्राइव 1 रन के लिए। अब उस सिंगल्स को भी चीयर कर रहे हैं, सिंगल्स भी नहीं आ रहे। 49 पर स्कोर जा पहुंचा है, 49 फॉर 5। 11वीं ओवर में है, अभी भी 57 बॉल्स हैं। 57 बॉल्स में अगर वो 70 के आसपास भी रन ले जाते तो 120 प्लस एक फाइटिंग टोटल हो सकेगी। आज 113 रन भी डिफेंड हुए हैं। शायद उन्हीं की तरह अगर उनको गेंदबाजी की, सामने वाली टीम ने उनको ज़्यादा हल्के में ले लिया तो चीज़ें बदल सकती है। ये विपुल का गेम नहीं है कि जहाँ पर वो रुक के खेले और अपनी विकेट बचा के खेले। विपुल बिल्कुल विपरीत खेलते। मैंने जब तक विपुल को खेलते हुए देखा है, वो बिजी प्लेयर है, इक्का दुक्का रन निकालते, बीच में चौके के लिए प्रयास करते, लेकिन परिस्थितियां ऐसी कि उनको अपना गेम बदलना पड़ रहा है। ये विपुल का गेम है, रन्स चुराना, रिस्की रन्स लेना, स्कोरबोर्ड को चलता रखना, ये विपुल का गेम है। 50 रन पूरे हो गए 11वें ओवर में। हालांकि अगर वो 6ठे ओवर में या 7वें ओवर में 50 रन होता तो उत्साह अलग होता। ये 10वां ओवर 11 ओवर बड़ी देर हो गई है। लेकिन नलीन का आउट होना, जो बड़े 2-3 प्लेयर्स हैं उनका जल्दी आउट होना इस टीम के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो चुका है। लगातार 2 मैचेस में उनका जो बिग प्लेयर है नलीन, वो परफॉर्म नहीं कर पाए। ग्यारह ओवर के बाद 50 पे 5।
That's a very good ball. कुछ भी बोलो। ओ ये मौका बन सकता है। ये ऐसे कैचेस नहीं आप ड्रॉप कर सकते। इतनी अच्छी विकेट कीपिंग की है पूरे टू मैच में उन्होंने, सबसे आसान मौका उन्होंने गवा दिया। हो सकता है अच्छे से अच्छे खिलाड़ी भी आसान से आसान कैच छोड़ देते हैं। कई बार देखा है विश्व के सबसे अच्छे फील्डर्स भी इससे आसान कैचेस छोड़ देते हैं। और याद रखिए ये सारे लोग प्रोफेशनल्स नहीं है, ये कभी साल में 2-4 बार खेलने वाले क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं। अपने अपने क्षेत्र में ये काफ़ी सक्सेसफुल है, तो जो काम वो कर सकते वो हम नहीं कर सकते। लेकिन क्रिकेट के मामले में क्रिकेट उनका प्यार है, तो उतना उनका रोज़ का अभ्यास नहीं होगा, और अभ्यास के अभाव की वजह से ये कैचेस छूट सकते हैं। 51 फॉर 5 12वीं ओवर में हमें पराग और विपुल दोनों को ही जीवन दान मिला है। ये बैकफुट पर जाकर खेल रहे हैं आगे वाली गेंदों को, काफ़ी खतरनाक हो सकता है। जिस गेंद को आपको फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए उसको पीछे जाके बिल्कुल खेले स्टंप्स के करीब से। वो अगर तेज़ गेंद हो तो आप उसको पीछे जाके कट कर सकते हो, लेकिन इस गेंद में कोई गति ही नहीं है, तो आपको कट करके नहीं, आपको अपना जो गति आपको खुद बनानी पड़ेगी। आपको ड्राइव करनी पड़ेगी गेंदों को, या पंच करना पड़ेगा। कट का शॉट नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसे आगे आके ड्राइव कीजिए, या तो पंच कीजिए या टैप कीजिए, लेकिन आप उस गेंद को हल्के हाथों से नहीं खेल सकते, क्योंकि गति कुछ है ही होगी नहीं, तो गेंद वहीं पे रह जाएगी। बहुत देर के बाद रन आए हैं ये। कृणाल शाह तीसरे ओवर में, इसके पहले वाले ओवर में काफ़ी वाइड डाले थे, लेकिन फिर एक बार अपनी विशेष शैली में गेंदबाजी करते हुए फर्स्ट मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, फिर एक बार उसी तरह का प्रदर्शन करने का प्रयास उनका। ये गेंद लेग स्टंप की काफ़ी बार, विकेट कीपर देखिए ये डिफिकल्ट टेक है, उतना आसान नहीं होता लेग स्टंप के नीचे कलेक्ट करना, वो उन्होंने आसानी से कर लिया, और जो कैच एकदम ईजी थी वो उन्होंने अपने हाथ से छिटक दी। शुभमन गिल ही खेलेगा, वो भी आउट हो गया, ये ना बाप है ना। क्या बेहतरीन शॉट है, ब्यूटीफुल कवर ड्राइव, गेंद गोली की तेजी से निकल जाएगी। व्हाट बेहतरीन स्टॉप। कतार 22 में मानो जैसे लियोनेल मेसी और रोनाल्डो का मिक्सचर आ गया, वहां पर बड़ा सा पैर आ गया और उस गेंद को 4 रन आने से रोक लिया। क्या बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट है, लेकिन करारा शॉट था। ऐसे शॉट्स खेलना जरूरी है, जो बैकफुट पर जाके वो गेंद को ग्लाइड करने दिख रहे हैं, उससे ये अच्छा विकल्प है कि जहां पर वो गेंद को फ्रंट फुट पे मीट कर रहे हैं और चौका लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बल्लेबाज ने मिस किया, विकेटों ने मिस किया, और विकेट कीपर ने भी मिस कर दिया, और गेंद जाएगा केडी कॉर्पोरेशन एक बहुत ही लकी चौके के लिए। अंपायर के इशारे की राह देखेंगे, खिलाड़ी शायद गिर गए, वहां पे इंजर्ड हो गए।
Yes, 60 for 5. There was some injury scare, but I hope he's fine. Sandeep, nicely hit. The ball is racing towards that fine leg region, and just a single. They have studied the ship. See, that's what happens after the break. They were going along 4.5 runs per over. In the last 2 overs, they got 15. So after an interval, after a break, where there is some injection of happiness and hope and encouragement, things change. So 12.1, 61 for 5. Some run rate which was hovering around 4.5 has come to 5 runs per over. Now he is out of the popping crease. You just see in the replay that will confirm. Oh, that's an excel wicket sponsored by Viper Drive Industries. नहीं करना. 61 for 6. We are into the 13th over. Oh, that's very close. We'll wait for the umpire's signal. And it is off the bat. That's what the umpire says. Otherwise, it would have been very, very close. Sandeep is abused. But that was a good call by the umpire. It was bat first. Vipul is cleaned up. This was not Vipul's inning, normal innings. He was trying to study the ship, but that's not his game. His game is to go for his shots, and he just lost his rhythm today. Another excel wicket powered by Viper Drive Industries. That's an excel wicket, important one. Vipul is always a very good player, and his wicket is crucial. New man in is Nikunj Mehta. So 62 for 7, and we are into the 13th over. They have lost almost more than half the side. Remember, 12 batsmen are going to play, so it will be 12 wickets, not 10. So it's a different type where you are allowed to play those players. So that we can have 12 wickets, 13 can play, but 11 have to field, not more than 11. That's very well bowled. Sandeep Menon has picked 3 wickets. His figures look very good. 3.5 overs, 3 for 15. Very, very economical. In both the matches, he has bowled well. He did not try to do anything special, just does his simple things. Puts the ball in that area. And that was a leg spinner which he bowled on the back of the hand. The score at the end of this over is 63 for the loss of 7 wickets. ये ना पूरा चलने दो. नहीं वो अच्छा. हेलो.
7. That's nicely bowled. Krunal coming again to bowl his third over. Nikunj Mehta and Darshit. Nikunj. ये तो बवाल अरे लगेगा ये दोनों ब्लैक बॉल boundary. That's the boundary. The KD boundary this time. That's a very crucial, much needed KD Corporation boundary, and it has come after a long time. Darshit is the one who has got them that boundary, and that crucial KD Corporation boundary that will give them some hope. They need a lot of runs like this. Krunal, he is into his last over. He gets a couple. With that couple, the score moves on to 70 now. 70 for 7. Darshit, he has come in and he has got 7 runs of the first 3 balls which he has faced. He is looking positive. He is showing some intent. So the score is 70 for 7. KK smashers. After Darshit's arrival, things have changed. That's beautifully bowled. Will they go for the second? He's got 8 runs of 4 balls. A strike rate of 200 for him. So the score is 71 for 7. Surrounded hovering around 5 runs per over, touch over it, 5.07 to be precise. And projected score, there it shows 101. It may go beyond that. If they get 110, 120, they can still make a match of it. We saw that 113 runs being saved. It defended quite well, in fact. Now Nirav is coming for the kill now. He wants to pick up a few wickets for his team. He's bowled economically today. He hasn't got those wickets. Last year he used to get in heaps. This year he has been deprived of it. He is in his 4th over. No, that's a slower delivery, and that's dispatched for a couple of runs. That's fine. That's fine by Nirav. He need to make change in pace, because that created an opportunity. His quick bowlings, many edges fly from all directions. Some slower balls also are helpful. So the score is 73 for 7.
Darshit has come with a clear mindset, a clear intent, and he's played really well for his team. 10 of 8 balls. He wants to go for a big one, misses it completely. He's swinging it, and swinging it very hard. And that's well bowled by Nirav. He's not trying to bowl express. That's smart bowling by him. He's into his last over. Couple of balls remaining. Nirav might just pick a wicket in the next 2 balls. Would love to see Darshit still there. Again that away going delivery. Oh, Darshit, is he fine? He's in some spot of bother. We need to have a physiotherapist at least for the last 2-3 days, because there have been a lot of injury scares. There's somebody who gets a muscle strain or maybe a dislocated shoulder or something. We need to have a physiotherapist now. Everything they have done got perfect. They got one of the best possible venues. They got international umpires. They got MCA panel umpires. They got good scorers. They have got a good broadcasting team. They got fantastic food, good nice clothes. Everything is right in place. Only one thing falls short. They need to have a physiotherapist, just in case there is some issue with the injury that can be taken care of. So back live we are 74 for 7. There was some injury square to Darshit. He is fine, and he is putting all his might to get this team to a respectable total. 5 overs remaining. They would like somewhere around 110 at least, maybe 36 runs or to 40 runs in the next 5 overs. Oh, that's a very good shot. The ball is going towards the extra cover region. They get a brace. That's some good intent being shown. That's what is accentuating the fact that if you have some positive instinct and you have some good intent, you can get your runs. That intent has to be there. That belief has to be there. Unless you try, you won't know how much you can get. Darshit is trying, and he's been fairly successful in getting those runs. That's a big wide. Yes, 2 wides. Abhishek Shah.
Oh, that's a no ball that just slipped out of his hands. That's a no ball, and that would be a free hit. Score moves on to 77 now. 77 for 7. He went for the big one. The free hit is being wasted. That's a good call by the umpire. So 80 for 7 is what the score is. We are into the 16th over. Abhishek Shah bowling that 16th over. That's down the leg side. That has to be a wide. 81 for 7. A lot of wides being offered to the opposition. These are freebies, and you never know. Even the first match they thought 113. You can't go beyond it. So they were like taking it complacent that they won't cross 100. It went on to 113. Again 47 for 4. The other opposition took it lightly, and both the teams lost then. That's outside the off stump, way too outside the off stump. $82 for 7. That's beautifully played, tapped for a single. The score is 83 for the loss of 7 wickets. Done. The ball is racing towards the fence. In fact, that will just go and stop over there. This is nicely. Oh, this is good running. Brilliant running by Darshit. He is putting his everything for the team. The third run was completely belonging to Darshit. Look at him. He's holding his back. That has taken a lot out of him. Some of these guys are coming close to 40, 45. Some of them even close to 50. Shah, he said he was 52. And that was unbelievable running and batting from that man. Supreme fitness. 86 for 7. That's a big appeal. We are into the 17th over. Darshit and Nikunj are the two batters who are there. That's a big wicket. That's an XL wicket powered by Viper Drive Industries, and that was a crucial blow because he was playing so well. He was injured, but he batted so very well for his team. Darshit, he got that much needed influx of some aggressiveness into the team. Ankit Khitan is a new man in.
होतो का तुम्हाला? नाही. नाही ना. So the score is 86 for 8. Last 3.3 overs remaining. That's beautifully bowled. That's a good call by the umpire. We are into the 17th over. Dhaval, he has not picked 1, not picked 2, not picked 3. 5 wickets to Dhaval. He picked all those 4 wickets in the first overs which he bowled, and in the last over he has picked 1 more. So Dhaval is touching everything, and it's turning out to be gold dust. Has he got the 6th one? Yes, that's a very, very good decision. Yes. It's a fabulous decision. Yes. And he well left the ball, but the ball was going to hit the leg stump. That's the 6th wicket for him. That's the best figures for any bowler. Dhaval, it has been his day today. That's a good call. That's a good call. Nikunj isn't happy, but I think that's a very good call. आप बोलो ना सर. बोलो. हाँ, एक मिनट. That's wide outside off stump. That's going to help. Every run is going to be crucial now. Abhishek Shah bowling his second over. Nikunj on strike. ठीक है. Okay. And that's down the leg side. That's going to help again. 88 for 9. Oh, they get a couple of runs over there. But they don't come. So we are into the 18th over. The score is 90 for 9. 17 balls remaining. Oh, what a shot that is! Nikunj Shah, fantastic hit. That's a very, very good. New batsman सौम्य. हाँ, एक मिनट. SOM भाई. उनको बोलना पड़ेगा ऐसा. Very good shot. That's a KD Corporation boundary. Good shot that is. Soumya is the new man in. Nikunj has hit a very good boundary. Nikunj Shah, he is providing with some entertainment, showing some good fighting spirit, and he has some good batting skills to back it also. Abhishek being greeted with some runs over here. He's given away 15. He's into his second over. And that is sliding down the leg side. Another leg by it would be.
Oh, that's confusion. Finally, they get 2 runs. Two leg byes. Another leg by. Yes, so many leg byes. Oh, there was some trouble. Soumya is the new man in. It's Soumya, not Soumya. So there is some error in his spelling maybe. Soumya is on strike. That was hit on offer, very nicely hit, hit very hard. And they go for the second one. That's very, very good running. They take a chance, they get a couple. And Nikunj is tired. It came a long way down. And they get 100 on the scorecard now. The score at the end of 18 overs in fact is 99 for 9. 12 balls remaining. Wanted to go big on the leg side, instead it is wide down the leg side. Those would be 5 wides. This all are going to help them. These 5 wides will take the scoring from 99 to 104. The ball may have just slipped out of his hands. There is some dew over there. KK Smashers would be very happy with this bonus runs which they are getting. A small glimmer of hope for them to come back into the contest and be into the reckoning of qualifying into the last 4. Another leg by, lots of extras. Score moves on to 105, 105 for 9. Every ball is being taken care now. On this last couple of pairs which remain, they bring some additional spice to the game. Oh, that's a very good shot. What a good shot that is. That would be KD Corporation boundary. Fantastic hit. Getting them that important boundary. KD Corporation boundary. They need a lot of it. They need at least a couple of more boundaries just to be in reckoning, because both these teams need a win over here
will have them into contention to reach the final four. Loss over here would mean curtains for them into this campaign over to qualify for the Jinharsh Timken Ador Cup 2023. And this last pair, in fact, the 10th wicket pair, is providing with all that entertainment. He wanted to go for it again, this time not able to connect Nikunj. He has come with a mission this time, Nikunj, wanting to score some runs. Last match he played well, but he wasn't that enterprising and that adventurous. This match he's tried to be a little more adventurous, trying those all Surya Kumar Yadav shots even. That's beautifully bowled, yorked him, and that would be a couple of runs. Those half-hearted shots, not mistimed shots, are in fact better for them, as the ball is falling between the fielders and they get a chance to get those couples. The score is 112 for 9, 7 balls remaining. One shot again, so that would be 111. Nelson, 111 for 9. Last ball of Mihir's over. He goes for it. What a good shot that is. Has it gone all the way? Yes, it is. What a shot. KD Corporation sixer coming in from the bat of Soumya. What a good shot. That's what it just proves. You show intent, you swing your bat, you never know what difference you can make to your team. 117 for 9. Some late entertainment coming via Nikunj and Soumya. What a good shot that was from Nikunj. 18 balls, 23. He has hit a couple of boundaries and a sixer. Let's come back live now. Again 117 for 9. Last 6 balls of pure entertainment remaining, and Soumya would like to give strike back to Nikunj now, because he's got 23 of just 18, and he's the one who has added spice to this match now. That's what he does. He was off before even the ball was there towards the batter. So 118 for 9. The score might just touch 130 if Nikunj goes mad in the last 5 balls, which he has in the last couple of overs. He has been just very, very adventurous and enterprising, and he has shown some good positive intent to win this crucial encounter. Oh, this is again up and over. Will it race away for a boundary? No, a couple of runs. We get a couple, and the score moves on to 120 now. 120 for 9. Four balls remaining. Nikunj hits it well, and Nikunj is running for almost everything. He's got a couple. He moves on to 122. The score, in fact, Nikunj has moved on to 27. He has been their best scorer now. Last 3 balls, Nikunj. He might get another KDC sixer or a boundary. KD Corporation sixer or a boundary. 1 boundary needed. That's good bowling by Abhishek. Oh, he has gone for it. Has it gone all the way? Yes, it has. What a good shot. It is a KDC maximum. KD Corporation sixer. These guys are providing us with some late
Order Entertainment. Fantastic. He has got 33 of 22, a strike rate of almost 150. That is super stuff. KD Corporation sixer. And that's a very respectable score. Remember, 113 was defended and 48 was defended, so even 128 is defendable. Last ball. And he's cleaned him up. He's out. If the ball hits the stump directly, he's out. There are no two ways about it. So they get 128 for 10, 129 is the target. A very good innings from Nikunj. A very entertaining one.
KK Smashes. They need 129 runs in 20 overs. So they were hovering around 100 or 110. They managed to get a score which is there for them to fight now. But these two are good batters. The opening pair. It's Sandeep Valecha and Sumit. Sumit is also one of our committee members. He puts in a lot of effort, this man, and he did a good job behind the stuff. Let's see what he does with the bat in his hand. It's Sandeep and Sumit's opening pair. 129 in 120 balls. It's not a difficult target, and I think the approach should be to be a little positive from the beginning, so that they don't get themselves into a spot of bother. Kaushik! So 120, 129. So it's today 113 were defended, 148 were defeated, and let's see. Wide down the leg side, that's going to help. That's going to open the account. It's Nikunj Mehta who's bowling that first over. They need to bowl well if they want to defend the score. They need to bowl well. Vipul Doshi bowled really well in the previous match, and so did some of his other bowlers. There is Nalin who can bowl some good overs. So Nalin, their all-rounder, did not come good with the bat in hand in both the matches. Here they have to win this one with some good bowling. And Nirav did not come good in the previous match. And Nirav, if he plays half of what Nirav is capable of, you might see a very good match. Oh, that was so close to being the first wicket. The score is 2. So the score is 5-5. We are into the first over. Sandeep Valecha is 2, Sumit is on 1. They got a couple of wides in this over, but that has helped them. Main camera नहीं आ रहा. Oh, that's beautifully played. The ball is racing towards the boundary. It is KD Corporation boundary. मेन सामने वाला चलना चाहिए तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा.
सामने वाले बंदे तो फिर इशू हो जाएगा. Score is 9. Technical glitch. The score moves on to 10. तीन पैसे की मैं So the score is 10-10 without loss at the end of first over. That's a fantastic start. The boundary of the second last ball helping that score. 10. So 10 runs have been wiped off. They are making Nalin is their important player. Oh, that would be another KD Corporation boundary. इसको 2000 डाल के 50,000 कमाने हैं. So the score is 15 now. They have got off to a rollicking start. They've got a 2 KDC boundaries. Well, that's going to help. The score is 15 without loss. Sandeep Walecha is 12 of 7. Sumit is 1 of 2. Sandeep Walecha has got to a brilliant start. And HE Warriors, they are off and running. KK Smashers 129 is Dr. Kagides. Oh, that's beautifully bowled. Good comeback. Nalin Makwana. ये 5 में 70 बनते हैं. That's a very good shot. Another KD Corporation boundary. KDC boundary. They are dealing in boundaries now. Sandeep, this is the third boundary for him. इसने फोन किया था हाँ ये कैमरा भी चल रहा है इधर से कौन सा पुराना देखो अब तूने वो ये किया है ना भाई क्या किया है The score is 20 now, 20 in 2.2 overs.
Oh, this is fabulous. This is another KD Corporation boundary. So the score is 25-25 without loss. Vignesh, That is another KD Corporation boundary. सीधा बने नहीं आया One पे the one up. नहीं आया प्ले लिस्ट में फिर से देखो दबाए लाल आया लाल नहीं होना चाहिए लेकिन लाल नहीं है लेकिन Oh, that's an excellent wicket. That's a very important breakthrough. नहीं आया They needed that. So the score is 32. So 32 for 1. So we are back live. 32 for 1.
क्या हुआ? ज़्यादा भी स्विच ऑफ मत कर ला, उन सेम मेन कैमरा ही दिखा, खाली ये दिखा ज़्यादा वही दिखा, वो नहीं स्विच मत करते हुए ये दिखा। हाँ, अगर प्रॉब्लम हो रही तो 3-2 for 1 is what the score is. Almost, he almost did it right. Was it Darshit? He is trying his heart out over there. Kumar Bagadia and Sandeep Valecha. Sandeep Valecha is on the non-striking end. That was a very, very crucial chance. He made a lot of ground to get closer to it. Lot many friends have come late in night. Even the Gogari group is here. Everyone is here. They're enjoying, having a good time. Deep and his friends. And this is a time where they come together. That's down the leg side. That has to be a wide. That score moves on to 34 now. कितना चाहिए 60 28 बॉल में 47 पैसे भी आ गया ये मैच. So the score is 34 for 1. कभी कभी हारते हैं. So 35 for 1. That's down the leg side. That has to be a wide. The score moves on to 36 now. They are motoring along well. They have learned from the first match that if you are too complacent, you are going to get into trouble. So this is a right approach by Sandeep Alecha. Is it 3 boundaries? That's beautifully done. Off the back foot. That's an opportunity. So with that single, the score moves on to 37 now. 37 at the end of over number 4 in pursuit of 129 runs. They're going along well, motoring along well. So back live we are, and it's Sandeep who's facing Deepak. Surya. कोई भी नहीं है नीचे में, कोई भी नहीं है, अकेला मक्षर को खेलना पड़ेगा. So the score is 37 for 1. That's nicely bowled. Sandeep stealing that single. So the score is 38 for 1. We are into the 5th over. Required 100 is just 5.75. 129 is the target. That's a good shot straight to the fielder. That's an opportunity.
And as it gone, they get 2 runs. They need just 94 runs now to win this one. In fact, 89 runs to win this one. 89 in 94 balls. So 40 for 1 is what the score is. Yes, ball down the leg side. The score moves on to 41 now. So the score at the end of 5 overs is 42 for the loss of 1 wicket. So 42 for 1 is what the score is in pursuit of 129 runs. They need 87 runs to win this one. Pushed off the back foot, the ball's going into the point region. They move on to 43 now. This is good going, and that's a nice way to approach the target. Sandeep is trying to be aggressive, whereas Kumar is giving him good company. Also some wides are there which are helping them out. So 43 for 1 is what the score is. They need 86 in the next 88 ball. That is beautifully guided. Sandeep is doing his bit. Ball straight to Harshit. He has been in action today for quite a lot of time. .85 runs in 87 balls. That's nicely hit. The ball is going straight down, and it has gone through him. Has it gone all the way? Yes, it will go for a KD Corporation boundary. That's a crucial ball, and it just went through him. KD Corporation boundary, sponsored by KD Corporation, Mr. Kiran Vora.
Sandeep Walecha comes back on strike now. He's 17 of 14. He wanted to go for the big shot, misses out. The power play done and dusted. 49 without for the loss of 1 wicket. That's a pretty good power play considering the dynamics of it. Has been one of the most productive ones of this. Back live here and Kumar Bagadia is giving him good company. He's 11 of 14. Sandeep Walecha is 17 of 15. That's nicely hit. The ball is racing towards the long on region. They get to the 50. इधर ही हट जाओ ना भाई हेलो इधर ही हो जाओ oh, that's a nice shot that will race away will it go for a boundary yes it does that's a KD Corporation boundary fantastic hit they are racing towards the victory now oh, they are going at a fair clip now they are going around 8 runs per over they need just 5.5 runs per over which is fairly good and both the batsmen getting into the groove that's the third boundary in fact the fourth boundary for Sandeep Walecha oh, that's straight to mid off for a single the score moves on to 55 now so 11:20 तक खत्म 15 ओवर को 1 घंटा तो लगता है नीरव भाई का तो खत्म हो जाएगा the score is 55 now 55 for 1 we are into the 7th over the last ball of the 7th over Kumar Bagadia and Sandeep Walecha both of them have stitched up a nice little partnership after dismissal of Sumit Kumar has given him some good company he's on strike he's on 12 of 15 and that's nicely bowled by Deepak there's an opportunity with that single the score will be 56 for 1 at the end of over number 7 they are going at 8 runs per over exactly hello
In pursuit of 129, they have gone on to 56. Eight runs per over. They need almost a run a ball, less than that, even 5.5 runs per over. 73 from 78. On strike is Kumar Bagadia. Oh, that will go. Yes, it goes for leg buys. In fact, that's fine. But KD Corporation for leg buys. That's going to help the scoring rate. That's going to take them closer to that very, very probable victory now. 60 for 1. Halfway they are already there. They need a furthermore 69 runs. And this near in the 7th over. And there is still Nirav Shah to come, who's the skipper of the team. 33 in 12. India meanwhile is struggling, but they are playing well. Akshar and Shivam Mavi stealing a good fight back. 12 balls, 33 runs to win. 60 for 1 is what the score is. कितना स्कोर चाहिए? अक्षर पटेल खेल रहे हैं. Hit down the ground for a single. With that single, the score moves on to 61 now. 61 for 1. They need 67 runs to win this one. 68 in fact in 75 balls. Oh, that's an underage. The ball is racing away. That's just a single. 62 for 1. They need 67 in the next 74 balls. Darshit has come into bowl. Darshit played really well, batted really well. For his team, he ran well. He hit some nice shots. And he's coming here to bowl his first over. Meanwhile, the Indians are fighting. They need 29 runs of 11 balls. In fact, he got a sixer. Ten balls and 28 for India to win. And here the equation is much simpler. They need 67 in 73. And we might just see Shivam Mavi winning it for us today. That is some commitment by this guy, Darshit. He has batted well, bowled well. They need 66 runs in the next 12 overs. So back live we are, and 62 for 1 is what the score is. They need 67 runs in the next 12 overs. Sandeep Walecha is on 23. Kumar Bagadia is 14 of 21. Nicely turned away for a single. Sandeep is running fast. They might get a couple. Yes, they do. With that couple, the score will be inching closer towards that victory. Half the runs are chopped off. They have, in pursuit of 129, they have chopped off 64 runs. The enterprises are going well, and they have some good players still in the bank. That's beautiful. That will race away for a fantastic KD
Corporation boundary. What a good shot that is. And India need 21 in the last 6 balls. You might just see Shivam Mami becoming a hero today. Here the equation is simpler, 61 in 70 balls. Akshar Patel has played well, Surya Kumar played well. It would be Shivam Mavi's day today, I think. That's a wide. They are inching towards a very crucial victory, but that would be closing doors on KK Smashers. They played so well in the latter part with Darshit Nikunj Mehta playing well, but things have changed. That's another wide. That's helping the opposition. 70 runs in the scorecard now. They need exactly 59 runs to win this one. और भाई कैसे हो? अरे थोड़ी देर पहले नहीं आया क्या थोड़ी देर पहले 71 for 1, 8.3 overs. Kumar Bagadi and Sandeep Valecha. They have stitched up a nice little partnership. "58 runs needed in the next 68 balls." That's an under. The ball has gone just under his bat. India needs Akshar Patel to hit 3 sixes now. Here they're inching in close. The score at the end of over number 9 is 72. So the score is 72 for 1. The target is 129 now. They need almost 5 runs per over from here on, so 56 runs. इसका ये अडेप्टर देखा क्या रे कहीं पे? मेरे फोन का अडेप्टर? अडेप्टर नहीं ठीक है, नुकसान कर रहा है। ध्यान दे, अडेप्टर मेरा किधर गया? "76 for 1." मेरा है ना, अपना है तो किसको देने का क्यों? Oh, he's cleaned him up. Oh, that's the second wicket. 76 for 2 now. That's an XL wicket powered by Viper Drive Industries. Mr. Prateek Shah and Rahul Shah. XL wicket coming in at a crucial time for them. They need a lot of it now. 53 runs to defend only.
So that's going to help. The score is 76 now. In fact, 78 for 2 now. They are inching closer towards a very easy victory. 51 needed in the next 10.2 overs. But you never know. Cricket is a funny game. Stranger things have happened in cricket, and we might just see a series of wickets may are coming in. Samir Mehta is the new man, and he has got a couple of runs in the very first ball which he has faced. There is still Devansh. There is still the skipper of the team, Nirav Shah. So they have a lot of batsmen still in the tank. Darshit has bowled well. He has got the wicket. He got some runs today. He has got a wicket even. He might get a few more if he continues to bowl like that. Oh, that's an inside edge. The ball is travelling. A lemon cut. Will it go all the way? No, it just gets chopped over there with a couple of runs. The score moves on to 80. They need 49 runs to win this one now. The score is 80 for 2. So 49 runs needed in the next 10 overs. $80 for 2 in 10 overs. That's 8 runs per over, and the required run rate is just 4.9. 49 needed in the next 10. They might finish this quite early if Sandeep stays there. That's a fortuitous. That's a
So the score is 83, 85 for 2 in fact. In fact, it's a wide. They're inching closer. That's beautifully bowled. Oh, that has hurt him. "42 runs needed in the next 57 balls." I hope he's fine because that hurts. That must have hit his bone directly. So he must be in some spot of bother. So the score is 87 for 2, and Nikunj is back. It must have hurt him because it hit his shin bone directly. Oh, that's going down leg. Samir Mehta is 4 of 6. They need 42 runs in the next 55 balls. Last ball of the 11th over. And that's a leg by. The score moves on to 88 now. They need 51 runs to win this one. They are slowly and gradually reaching towards the goal. They need 41 in the next 54 balls. KK Smashers had opted to bat. They scored 128 runs, and in pursuit of 129 runs, they are already at 89 now. So they need just 40 runs to win this one. 40 runs in the remaining 8.5 overs. This is racing away. Yes, that's a KD Corporation boundary. They just need 36 runs to win this one now. 36 of the next 52 balls. They're closing in on a very comfortable victory now. He's 36 of 25. He might get his half century as well. That is pulled, and that is going racing away towards the square leg region. That's a KD Corporation
Boundary. एक जगह पे बैठता नहीं है कोच, खतरनाक है तेरा. The score is 97 for 2. They just need a few runs now. 32 needed in the next 51 balls. खत्म हो गया ना, अभी बैठो एक जगह पे. They need 32 runs to win in the next 51 balls. Two boundaries, two KD Corporation boundaries, which takes Sandeep Olecha to 40. 40 of just 26 balls, so which is strike rate of is almost 150, 160. He hits it very hard down the ground. They just need 31. Sandeep Olecha looks in a mood to finish this off early. Vipul Doshi hasn't bowled today, so he's just giving opportunity to his other members to bowl. 98 for 2. They just need 31 more. Samir comes on strike, and Samir goes for it. Yes, it does. It does go for a KD Corporation boundary. What a good shot that is. Pick up shot into the square leg region. Even he is getting into his groove now, Samir. So 3 KD Corporation boundaries in this over against Darshit. So they need 27 runs to win this one from here on. Jinharsh Timken Ador Cup 2023 has been a spectacle where we saw some low scores being defended, some bigger scores being chased down, but mostly the teams batting first have won their matches, and defending the total has been easy. The chasing hasn't been easy on this ground, so if you score well, you can get runs. This match they have chased it down. Inside half of the bat, the ball is racing towards the fine leg, long leg boundary for a couple of runs. With those couple, the score moves on to 104. They need exactly 25 runs to win this one now. The score is 104 now, 104 for 2, and they just need 25 runs to win this one. Sandeep Olecha, he will get his 50 or no? That's the question to be answered. Good shot of the back foot. The ball is racing for another KD Corporation boundary. There has been a series of KDC boundaries over here. In fact, 5 boundaries in space of 6 balls. So 108 for 2. They just need 21 now. Sandeep Olecha has got 45 of 28. We saw a couple of half centuries in this tournament. You might see the third one. And Sandeep Olecha is racing towards his half century. He just needs 5. He's got 45 of just 28 balls. Vipul Doshi has come into ball and he has been welcomed with a boundary. He might get a wicket also on this ball. In fact, he's been swept across. Sandeep was in a spot of bother. Sandeep cannot take chances against this man because this man might just pick your wicket. Don't take this man easily. He is a pretty handy bowler. Vipul Doshi. And he's in his 45 now. In his 40s, not an easy bowler to face. Vipul Doshi. And Fajri goes up and over into that point region for a couple of runs.
With that couple, it moves on to 47. The score moves on to 110. They need 19 runs of the remaining 7.3 overs. So 7.3 overs to get the remaining 19 runs, and Sandeep just needs 3, and he's motoring along. He's got a very good strike rate. And that's showing respect to a better ball. Two balls remaining in Vipul Doshi's first over. That's 8 straight to the fielder, and they have run for it. They need 18 more. He needs a couple more, Sandeep Palicha. Eighty needed now. It's Sandeep. If he gets his 50, he'll just race on to that score. Samir is going big, so he might even go for that big shot. He might. Yes, he does. That's a nicely hit shot. That will race away. Instead, it is stopped again. The score at the end of 13 overs is 112 across 2 wickets. So they need exactly 17 more runs to win. Vipul Doshi bowled his first over. It's going to be Nikunj Shah to bowl his last over against Sandeep and Samir. Samir is on 12, Sandeep is on 48. That's wide. They just need 16 more now. It has gone through his legs. They just need 16 in the remaining 42 balls. In fact, 41 balls. That kept low. Sixty needed now. 60 needed in 40 balls. He has cleaned him up. That's an excellent wicket powered by Viper Drive Industries. He went across. Let's see who comes in now. Will Devansh come in or will Nirav Shah come in? That's the question to be answered. And Sandeep is on 48. I think Nirav would come in. He's the captain. He needs to have some runs under his belt before the big matches come in. And it's Nirav who's coming in. A very good excel wicket powered by Viper Drive Industries. Yes, Nirav Shah, the opening batter, comes in. In fact, the skipper comes in. He is their main player. And the stats can be seen. He has a strike rate of 130. He has highest score of 67 in this match, kind of matches of the last year. He comes in and he might just go for his big shots. And Sandeep is on 48. As soon as he crosses that 50, he might go for getting this runs quickly. It's already too late into the night now.
That's it down the ground for a single. The score at the end of 14 overs, 114. So they need just 15 runs now. 15 runs in the remaining 30 balls. माझा अडॅप्टर आहे. आणि फक्त ॲडॅप्टर आहे. हां कॉर्ड आहे ते. हां कॉर्ड आहे ते. लगाव आहे का? They need 15 runs in the next 5-6 overs. Six overs and 15 runs to win. Nirav is on strike. He is 1 of 1. And if Nirav gets into mood, he will just finish this match early. Deepak comes into his third over. That's what Nirav can do. He did very hard. He might go for no. He just gives a chance to Sandeep to get his half century. They need just 14 more. 13. Thank you. 13 more to win this one. In fact, 14 more needed now. Sandeep might celebrate. He's on 48. He must be aware because there's a giant screen over there in the ground which displays the score. He might get his. Yes, that's a beautifully tucked away boundary. That is KD Corporation boundary. And they get closer and he gets his 50. 50 for Sandeep Alicha. 52 of just 33 balls. The third 50 of the tournament. And they just need 10 runs to win this one now. 10 runs to win in 34 balls. That was just delicate touch. Now you might just see him going for big shots. He's a good bowler, Deepak, but he's being hammered. That's a fair delivery. They just need 10, 2 big blows and they will be done and dusted. But it's not easy to hit Deepak. He might even pick Sandeep Alicha's wicket if he tries to go for an agricultural shot. That's nicely bowled. Now it has gone through. Will it be another KD Corporation boundary? Yes, it is. It is a KD Corporation boundary. They're just 6 runs away now. Just need 6 runs to win this one. Deepak bowling his third over. Will it be Sandeep to finish or will the captain finish it off? He tries to go for the big booming drive. 2 balls remaining in this over. In fact, 1 ball remaining. 6 to win.
That's beautifully tucked. What a good shot that is. That would be another intelligently played KD Corporation boundary. 2 to win now. And it would be the skipper, Nirav Shah, to get an opportunity to hit the winning runs. Nagdevi Sports Group. This is the team, the energy committee members. This team of wonderful 11 people. Rajiv Shah, Rajiv Taparia. Then we have Vipul Doshi, Asit Shah, he is seen all around. Kumar Bagadia is playing. Sumit Seth, he is there, Hideshi, Gaurav Bakhar, and Bhavin Vora, the big man. Rajesh Sarvaiya, Vipul Sangvi. We saw Vipul Sangvi in action today. He was on the winning side. They just need 2 runs to win this one now. It is Nirav who's on strike. Nirav might finish this off. Instead it goes for 5 wides. Has it gone? No, it has just gone and stopped over there. So just 1 run. Is it a wide? No, it is not. It has brushed off his pads. 2 to win now. Will he get a boundary to finish? Jinharsh Timken Ador Cup 2023. Day-2, match number 6. Two to win now. Jinharsh Timken. That is how you finish. That's the skipper. Finishes off in style. A KD Corporation maximum to finish the day. KD Corporation would be happy. This guy is Pratik Shah and Rahul Shah would be happy. Day ending with the KD Corporation sixer by Nirav Shah.